Your search for the most comprehensive CLAT preparation program ends now. BYJU'S Exam Prep brings to you over 300 recorded lectures, over 50 mocks across CLAT and non-CLAT exams, and this specifically curated by NLU alums and IM grads. So what's stopping you? Go register for the BYJU'S Exam Prep scholarship test now and get thousands of scholarships. चलिए जी, all right, so welcome everyone, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का. Good morning, hope all of you are doing well. Quickly let me know if you guys can see me, if you can hear me. जल्दी से बता दीजिए. Hi गरिमा, बहुत बहुत स्वागत आपका. गोपाल is here, नितिका welcome, सृष्टि, जागृति, मंगल, राहुल welcome, तंजिला, अमीशा, जिया welcome guys, welcome. बहुत बहुत स्वागत आप सभी का. All right guys, so today we will be covering lots of questions from starting from general awareness. Of course, we will be covering all sections in the span of 6 hours. So this is a non-stop marathon. If you guys are here for the very first time, please do not forget to hit the subscribe button, because whatever is needed to ace the exam, we here at BYJU'S Exam Prep, we make sure that we do everything for you guys, right? So jaldi se subscribe ka button daba do so that you do not miss on such important key sessions that we bring for you, right? और आ गए हो आप सब, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का. तो आते ही फटाफट से सबसे पहले क्या करना है आप मुझे बताइए. इट्स अ नो ब्रेनर. जैसे ही आ जाए फटाफट से लाइक का बटन दबा दो. रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन करना है, क्विकेस्ट फास्टेस्ट है ना, हाफ सेंचुरी मारनी आज हमें, राइट? तो जल्दी से एवरीवन वाचिंग, क्विकली प्रेस द लाइक बटन. जल्दी जल्दी एकदम आग लगा दो उस लाइक बटन पे फटाफट से. Alright, so today we will be starting off with general awareness section. Lots of questions we will be having. What I want from you guys is to keep a tab on your scores, right? Score कितना है आपका हर क्वेश्चन के बाद आप हिसाब रखिएगा. 90, 100 जितने भी क्वेश्चंस हैं, उस क्वेश्चंस के हर 20 क्वेश्चंस के बाद मैं आपसे आपका स्कोर पूछूंगा. You have to tell me your scores, right? चलिए, हाँ, अटेंडेंस मार्क करने का क्या तरीका है? बिल्कुल सही का खेमना आपने, बिल्कुल लाइक का बटन दबा के. चलिए, शाबाश. Alright, so let's start off with general awareness. करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस भी होंगे, बीच बीच में कुछ स्टैटिक क्वेश्चंस भी मैं पूछूंगा आपसे. ठीक है जी, चलिए लेट्स गो, लेट्स स्टार्ट. दोस्तों, सिर्फ 92 डेज रह गए हैं हमारे एग्जाम को. नाउ यू आर अवेयर दैट इन 92 डेज बहुत ज्यादा हम छुट्टी नहीं ले सकते, बहुत ज्यादा हम इधर उधर की बातें नहीं कर सकते. करना क्या है हमें? वी शुड हैव अ प्रॉपर क्लियर स्ट्रैटेजी फॉर द लास्ट 3 months ऑफ योर प्रिपरेशन. सबसे इजी तरीका क्या है मैं बताता हूं आपको. पहले जनरल अवेयरनेस पढ़ने का. जीके की जब हम बात कर रहे हैं तो जीके में स्टडी इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस, राइट? दैट्स द बेस्ट पार्ट अबाउट जनरल अवेयरनेस. देखिए, आपने सुना होगा रट्टा मारना जनरल अवेयरनेस में. देखिए, रट्टा मारना भी ठीक है जब हमें पता है कि पक्का यही चीजें आनी है एग्जाम में. हाँ, उन टॉपिक्स के लिए आप मार लीजिए, बट हर क्वेश्चन के लिए तो नहीं कर सकते ना, हर टॉपिक के लिए नहीं कर सकते हम ऐसा. तो क्या कर सकते हैं हम ऐसा? बिकॉज याद रखना भी बहुत मुश्किल है, इतनी सारी चीजें कैसे याद रखेंगे? सो बहुत ही आसान चीज है, राइट? कैसे याद रखना है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं आसानी से. बहुत आसान तरीका. जनरल अवेयरनेस कैन बी रिमेंबर्ड थ्रू क्वेश्चंस. व्हेन यू स्टार्ट डूइंग क्वेश्चंस, राइट, जैसे क्वेश्चन करोगे तो एग्जाम में भी सेम क्वेश्चन या उसके मिलता जुलता क्वेश्चन आया या ऑप्शन पे वो आ गया, आपको अपने आप एक रिकॉल वैल्यू रिकॉल जनरेट होगा. आराम से आपको वो आप आंसर कर पाओगे. आपको लग जाएगा कि हाँ, इस क्वेश्चन का आंसर सी है, इसका बी है, इसका ए है. यू कैन इजीली मेक दैट आउट, राइट? This is a very important tip for everyone preparing for general awareness. बहुत पूछते हैं कैसे याद रखें, कैसे क्लैट इग्नाइट याद नहीं हो रही है. देखो दोस्तों, एक तो अपने आप पे भरोसा रखना है, जो भी आपने पढ़ा है वही एग्जाम में आएगा, ये कॉन्फिडेंस रखो आप सबसे पहले. दूसरा, जब आप क्वेश्चंस कर रहे हो तब भी आप ये मत सोचो कि यार मेरी नॉलेज का टेस्ट हो रहा है और मेरे को आ नहीं रहा तो दिक्कत है बहुत ज्यादा. नहीं, ज्यादा दिक्कत नहीं है. What you have to understand is that if you do not find answers to the questions that are in front of you, be it in your practice test, quizzes, or YouTube sessions or mock tests, in that case, it's a good sign that if that question comes in the exam, if it had come in the exam, we were not able to answer. But now, if this question or related question comes in the exam, we will be able to answer. That's a good sign for us. So the number of questions that we cannot answer, it's a very, very good thing for us. Do not worry, but the only effort that is required from your end is to make sure that when you find out what questions are incorrect or what questions you have left,
प्लीज री अटेम्प्ट देम अगेन, राइट? उनको वापस से अटेम्प्ट जरूर कीजिएगा, ठीक है? दैट्स व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू, ठीक है? चलिए, All India Open Mock Test is live, guys. So lots of you, promised that, sir, we will be giving the All India Open Mock Test, in the last session that we conducted. How many of you have already given it? Please quickly write yo in the chat. Welcome everyone. बहुत बहुत स्वागत आप सभी का. चलिए, जैसे ही जुड़ जाए फटाफट से लाइक का बटन दबा दो. जैसे कि गौरी ने बताया, लाइक करना मतलब प्रेजेंट है. चलिए, गुड. 25th August से 3rd September के बीच में ये विंडो है. Very good. Garima has already given. Gauri has already given. What about the rest of you? Who are you waiting for? किसी का इंतजार नहीं करना है दोस्तों. कोई अच्छा मुहूर्त त्यागा. अगर आप वेट करोगे नहीं सर लास्ट दिन देंगे तो मजा आएगा. Don't worry about it, guys. सबसे पहले तो don't worry about your rank. मैं कॉन्फिडेंस मेरा कम हो जाएगा या ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा. कुछ नहीं होगा. Right? You have to believe that this is the most important thing that you can do. Very good, Gopal, Soumya, Pranjali, Ahana, Nandita. Good job, guys. सृष्टि, बहुत बढ़िया सृष्टि. देवी, नितिका, खेवना, आलोक, अनीशा, जागृति, जिया, सुष्मिता, देवतरु and मंगल राहुल have given the mock tests. What about the rest of you? दोस्तों सभी को देना है और अब भी देना है. ये मत सोचिए मेरा स्कोर कम आ जाएगा तो मेरी रेपुटेशन कम हो जाएगी, मेरे को क्या सोचेंगे सब. कोई किसी का कुछ सोचने का आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए. यू हैव टू ओनली थिंक अबाउट द एंड रिजल्ट, राइट? व्हेन वी गिव द क्लैट एग्जाम, व्हेन दैट रिजल्ट कम्स आउट, that's what matters right now. Even if you score a 40 or a 50, does not matter till the time you are ready to change that. हमें 40 से 80 कैसे पहुंचना है, ये ख्याल अगर आपके मन में है, you already are a champ. ठीक है? So do not worry at all. The best part about this All India Open Mock Test, guys, is that the video attempts by NLU experts, this is going to happen on our YouTube channel, right? So do not miss on that. जल्दी से फटाफट से आप लाइक का बोल रहा हूं, आप सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिएगा फटाफट से अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, क्योंकि इसका एनालिसिस आपको YouTube पे मिलेगा. आइडेंटिफाई योर D-Day strategy. This is the advantage that you get from this open mock. Video solution you will get for all the questions, of course, and you can see where you stand among thousands of peers who will be appearing for this exam. Chaliye, let's have a look at the current pattern quickly. You all know that the exam is offline. There are 24 national universities that take admission through CLAT. Right, the date of exam is 3rd December 2023. It will be a 2-hour exam, 120 marks maximum and 0.25 marks will be deducted for every incorrect answer. How to play this? ये मैंने आपको बता दिया है. 3rd September को रिजल्ट कब आएगा? मॉक का 5 September को आपकी रैंक्स आ जाएंगी बेटा. चलिए, इंग्लिश देख सकते हैं आप. दिस इज व्हाट द क्लैट कंसोर्शियम हैज शेयर्ड, राइट? उन्होंने अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ क्वेश्चंस बताए हैं और उन्होंने बताया है परसेंटेज वाइज कितना होता है. तो देख सकते हो आप 22 to 26 फॉर इंग्लिश, करंट अफेयर्स 28 to 32. सेम इज द केस विद लीगल एंड लॉजिकल, सेम एज दैट ऑफ इंग्लिश. एंड क्वांट की अगर हम बात करें तो 10 to 14 क्वेश्चंस, 10% पेपर. तो ये देख सकते हो आप. जीके जो है 25% ऑफ द पेपर है. बट अगर इंग्लिश की बात करें, सोर्सेस फॉर द पैसेजेस कहां से आते हैं? न्यूज़पेपर से आते हैं बहुत सारे, करंट अफेयर्स से आते हैं. सेम यही सेम चीज है लीगल में भी, यही सेम चीज है लॉजिकल में भी, और ऑफ कोर्स जीके में तो है ही. तो जीके आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बहुत तरीकों से, राइट? सो इसलिए it's important that we are reading newspapers regularly, guys. अभी भी मैं बोल रहा हूं, people who are just starting off 3 months, still you have good time, start building your reading habit. If we talk about last year's paper, look at this, guys. Let's talk about the general awareness section analysis for 2023. Level of difficulty was moderate to difficult. It was a tough paper, definitely, the last year. Is topics, if we talk about the topics that were discussed, so president election, this was discussed, this was already covered in the classes as well as in the CLAT Ignite magazine. All the topics here were covered in the CLAT Ignite magazine. First of all, this is a good news for all of us, right? So if you're doing CLAT Ignite magazine plus the classes, you are pretty much sorted, right? Classes plus the YouTube sessions plus the CLAT Ignite magazine. इसके साथ ही न्यूज़पेपर जोड़ दीजिए और क्या जोड़ना है हमें? मॉक्स जोड़ने हैं, राइट? अगर इतना कर लिया हमने, these 5 sources, you don't have to look even at the 6th source. ठीक है? चलिए, अब
नेशनल अफेयर्स देखिए प्रेसिडेंट इलेक्शन पे आया, इकोनॉमिक्स पे क्वेश्चन आया, दैट इज एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे क्वेश्चन आया था, इंटरनेशनल अफेयर्स पे क्वेश्चन आया, फीफा कंट्रोवर्सी पे देयर वाज अ क्वेश्चन, साइंस एंड टेक पे क्वेश्चन आया, टेक्नोलॉजी दैट इज क्रिप्टो डिजिटल करेंसी के ऊपर क्वेश्चन आया. दिस वाज आल्सो already shared with the students that for sure this will be there in the exam because RBI introduced India's digital currency approved, so that was very obvious that it would be there. अब देखिए इंपॉर्टेंट डेट्स ये शेयर भी किया गया था स्टूडेंट्स के साथ. आपको भी इस बार काफी सारा लीक्ड क्वेश्चंस मैंने बताया, लीक टॉपिक्स बताए, तो वो सारे वापस से हमें अच्छे से करना बहुत जरूरी है. रिवाइज देम वेल. ऑलराइट, नाउ important dates guys, notification has already been released, you are all aware. Registration is already there. Good news for us is that we can change our preferences even now. The edit option is open till 3rd of November. So if any one of you has missed out on the CLAT preference list session that we conducted, please check that out on our YouTube channel. Just go there, search for the same, just write CLAT preference 2023 and you will get the same. Registration will end on 3rd of November. The sample paper 2 is all set to be released tomorrow. Their tentative date can be postponed as well, but अभी तक जो शेयर किया गया कंसोर्शियम की तरफ से, लास्ट वीक में आपको आना चाहिए एडमिट कार्ड. आपका CLAT का जो एग्जाम है वो कब है? 3rd of December को. चलिए guys, important dates for 2024, you can see here we have already conducted a detailed sample paper 1 analysis discussion session on our YouTube channel. You can check that out. What to expect in your exam, तो सब चीजें बताई गई है इस सैंपल पेपर में, तो जरूर ये चेक कीजिएगा. डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मौजूद है. राइट, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन. चलिए, सेम थिंग विल हैपन फॉर द सैंपल पेपर 2 ऑफ कोर्स, if you guys want that, right? तो अगर आपको चाहिए कि हाँ सर सेशन कराना है तो जल्दी से चैट में लिखिएगा. Alright guys, let's start with the question and answers. The first question is here. चलिए मुहूर्त करते हैं हम शुरू. India invited which country's head as the chief guest for Republic Day 2023? चलिए, what is the answer? It is well done गौरी. यही स्पीड चाहिए. बाकी सबका क्या हुआ भाई? अब्दुल फतेह अल सीसी, इजिप्ट के प्रेसिडेंट. एब्सोल्युटली राइट. बी इज द राइट आंसर हियर. फर्स्ट क्वेश्चन, बी इज द राइट आंसर. गरिमा, सौम्या, गोपाल, अनीशा, जिया, आहाना, नितिका, नंदिता, गौर ने तो दिया ही था, मंगल, सैफी, एवरीवन विद द करेक्ट आंसर्स. गुड जॉब एवरीवन. बहुत बढ़िया. चलिए जी, Do keep a tab of your scores. After 20 I will ask कितना आया. ठीक है जी, तो हर 20 क्वेश्चंस के बाद मैं पूछूंगा, तैयार रहिएगा. ओके, PM has inaugurated मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट in which state of India? लगभग 2,870 crore rupees were the cost was. This is the state where we all want to go. The right answer. Very good Jagrati, Gauri, Garima. Absolutely right, Gopal, Anirudh and Rashi. It is Goa indeed. Good job, Seppi and Brahmtej. Well done, everyone. Tanzila, Sehajleen, well done, everyone. Shivaji, Gopal, Anisha, well done. Alright, guys, Goa is the right answer. This is how the airport is projected. In a year or two, this will be completely developed, right? 2 साल के अंदर ये पूरी तरह से डेवलप हो जाएगा. 2026 तक का वो लेके चल रहे हैं. ठीक है जी, चलिए. Alright, so second question done. Quickly, everyone watching, जल्दी से guys, the number of people watching us live and the number of people liked the session, the numbers do not add up. There are more than 53 people watching us live right now and the number of likes haven't reached even 50. How is that possible? Quickly, जो भी ये वीडियो देख रहा है, लाइक का बटन दबाना भूल गया, फटाफट से लाइक का बटन दबा दीजिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए, जल्दी. Alright, मजा आया देखकर? चलिए. Okay, the 8th edition of India International Science Festival was held in which city? अब ये बताइए दोस्तों. International Science Festival, January 2023. We have covered this previously in our quiz sessions on our YouTube channel, the Monday weekly quiz that we do. The right answer here is, it is Surat, Gujarat. Surat is the right answer. India International Science Festival in January. चलिए, बढ़ते आगे. Which of the following institution has received a fund of $1 million from Google to build India's first responsible artificial intelligence center? बताइए जरा.
AI सेंटर कौन से इंस्टीट्यूशन को मिला है $1 million फ्रॉम गूगल? नाउ दिस इज द इंस्टीट्यूशन जहां पे सबसे ज्यादा आप देखेंगे बच्चे जाना भी चाहते हैं, राइट? द मोस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट वांट टू गो। द राइट आंसर, मतलब IIT अगर जो दे रहे हैं वो उनका नंबर 1 ड्रीम कॉलेज है ये। द आंसर इज IIT मद्रास। एब्सोल्युटली राइट। बारिश हो गई यहाँ पे IIT मद्रास की। Everyone giving correct answers. Well done. Absolutely fantastic. Shabash. चलिए जी, let's move on to the next question quickly. According to the Minister of State for Civil Aviation, V.K. Singh, how many greenfield airports have been received in principle approval from Government of India? Greenfield मतलब क्या है? जहां जगह मिले वहां पे हरियाली डालो। तो बताइए जरा कितने? How much? How many? How many? Very good. 21 says Garima. Well done. Absolutely right. Sijan. Well done, guys. Absolutely correct. All of you. Gauri. सभी लोग सही जवाब दे रहे हैं. Well done, Nivedita. Anirudh, Jagrati. 21 is the right answer. So, greenfield airports. How many in principle? 21 is the right answer. चलिए, तो ये देख सकते हैं आप एक झलक कैसे होते हैं जी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स, राइट? ठीक है, ग्रीन एनर्जी से ऑपरेट होते हैं फुल्ली, जैसे कोची में है, पूरी तरह से सोलर रिलायंट है वो एयरपोर्ट। चलिए, ऑलराइट, जो भी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स है वो मीट होती है वहां पे। लुक सो गुड। चलिए, ओके, बताइए जरा किसने आर्टिफिशियल हार्ट बना दिया? आर्टिफिशियल हार्ट विच इंस्टीट्यूशन हैज डेवलप्ड? बताइए। इट्स अ ग्रेट हेल्प फॉर पीपल हु हैव cardiac problems. The answer is IIT कानपुर। B is the right answer। जैसे गौरी, गरिमा सभी ने बोला, सिजान, अनीशा, जागृति, नितिका, जिया, well done, सैफी एंड अनिरुद्ध, good job, शिवाजी, तंजिला, good job, अनिकेत, अंजलि सिंह राजपूत, well done, ब्रह्मतेज, निवेता, खेवना, राशि, अहाना, good job, संपदा, Gopal. All right, 7th. Which of the following scheme was launched by Ministry of Railways with an objective to modernize railway stations across the country? बताइए जरा। अब ये बताओगे तब मजा आएगा। इनमें से कौन सी स्कीम है? बताइए, रेलवे स्टेशंस को मॉडर्नाइज करने की। We have discussed this numerous times, that's why. चलिए, the right answer is very good, Garima, Nandita, well done, absolutely right, Saifi, Nitika, Ahana. It is the Amrit Bharat Station Scheme. अमृत भारत स्टेशन स्कीम, एब्सोल्युटली राइट, अमृत भारत स्टेशन स्कीम। गाइस, आगे बढ़ने से पहले क्विक रिमाइंडर, अगर आपने ऑल इंडिया ओपन मॉक टेस्ट नहीं दिया फटाफट से दे देना, क्योंकि आपके पास एक मौका है बेहतरीन। इफ यू वांट टू जॉइन आवर टॉपर्स बैच एंड इफ यू स्कोर रियली वेल इन द ऑल इंडिया ओपन मॉक टेस्ट, दैट इज वी हैव ऑलरेडी शेयर्ड द कट ऑफ इन द लास्ट सेशन, वो आप चेकआउट कर सकते हैं, जो 100 डेज टू क्लैट वाला सेशन था वहां पे। तो इफ यू क्रैक, if you want to join the toppers batch wherein you'll get lots of strategy sessions, preparatory sessions and what not, तो आपको करना क्या है? ये मॉक देना है। The student who does not give sufficient number of mocks is killing his or her chances, ये याद रखिएगा आप। तो बिल्कुल आपको इस पे ध्यान रखना है, ठीक है? ऑलराइट, तो टॉपर्स बैच ज्वाइन करने के बहुत फायदे हैं, आपको करना ही करना चाहिए। अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसने एक ही मॉक दिया होगा और उसमें अच्छा स्कोर किया होगा, तो फिर जो है आपके चांसेस नहीं है, आपको देने हैं, मॉक्स देने हैं। गाइस, अंडरस्टैंड दैट, ठीक है? चलिए, डेडलाइन कब तक है टॉपर्स बैच सर? बस यही है बेटा डेडलाइन, ये आपके पास लास्ट अपॉर्चुनिटी है, ये जो ऑल इंडिया ओपन मॉक टेस्ट है, इसमें अगर आपका अच्छा स्कोर आ जाता है तो यू विल बी कंसिडर्ड फॉर द टॉपर्स बैच। चलिए, व्हाट इज द थीम? बताइए जरा, ऑफ 108th इंडियन साइंस कांग्रेस। बताइए, जनवरी की न्यूज है, जस्ट एक महीना आफ्टर द क्लैट एग्जाम। राइट आंसर हियर इज वेरी गुड, सिजाना, कोपिंग विद नेचुरल डिजास्टर, इंटीग्रेटेड अप्रोच। चलिए, कोई बात नहीं, थोड़ा सा दिक्कतें हो रही है तो कोई बात नहीं। विच इज द फॉलोइंग मिनिस्ट्री लॉन्च द प्रज्वला चैलेंज? प्रज्वला चैलेंज किसने लॉन्च किया दोस्तों? दैट एम्स टू इनवाइट आइडियाज, सॉल्यूशंस एंड एक्शंस टू ट्रांसफॉर्म रूरल इकोनॉमी। बताइए जरा, रूरल इकोनॉमी, प्रज्वला चैलेंज, प्रज्वला चैलेंज कौन करेगा? इनवाइट आइडियाज, सॉल्यूशंस एंड एक्शंस टू ट्रांसफॉर्म रूरल इकोनॉमी।
द राइट आंसर द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, एब्सोल्युटली राइट, बी बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने, वेल डन एवरीवन, बी काफी आसान था यहां पे ये। चलिए बढ़ते हैं आगे। In January, how much amount has been approved by the government of India for natural green hydrogen mission that aims to make India a global hub for production, utilization and export of green hydrogen? The right answer, 10th question in front of us. It is option B, 13,842 crore rupees. अब ये देख सकते हैं आप। यार इसका ऑप्शन तो डी होना चाहिए शायद से। ठीक है, इट इज 19,744 करोड़, राइट। याद है हमने क्लास में भी डिस्कस किया था 20,000 करोड़ अप्रोक्सीमेटली, मैंने आपको बोला था याद रखने के लिए, तो वही आपको याद रखना है। ठीक है, इट इज ऑप्शन डी, तो ये आप याद रखिएगा। चलिए ऑलराइट, बढ़ते आगे। कैन दिस मैराथन बी जॉइन थ्रू द ऐप टू? नहीं बेटा, ऐप के थ्रू ज्वाइन नहीं होगा, ये सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब एक्सक्लूसिव है ना। चलिए बताइए जरा, व्हाट इज द आंसर यहां पे। इन विच द फॉलोइंग स्टेट यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह हैज इनॉग्रेटेड द 122 फीट हाई सगोल कांगजे स्टैचू? व्हाट इज द आंसर हियर, बताइए जरा जल्दी से। 11th क्वेश्चन, व्हाट इज द आंसर हियर? द राइट आंसर is very good, Garima. It is a Manipur indeed. Well done. A is the right answer. The Sagol Kangji statue. चलिए guys, we are just shy a couple of likes away from reaching half century. जल्दी से half century करो, फिर फटाफट से century भी करनी है हमें। All right. India's largest and first coal gasification based Ṭhaka fertilizer plant in Odisha will be operationalized by which year? Now this question has been covered in the CLAT Ignite sessions that we are doing. What is the answer here? 12th question in front of us. The right answer here is, you can see, very good Sampada, it is very good Garima, October 2024. Absolutely right, well done Gauri. Chaliye, all right. India's first, Jagriti, good job. India's first 3x platform wind turbine generators have been installed in which of the following states by Renew Power? By Renew Power. 13th question in front of us. The right answer, yes, it is Karnataka indeed. Good job Garima, absolutely right, Karnataka. Gauri also says Karnataka, well done Jagriti, Saifi. Okay. Around 250 Indian skimmers were sighted in the southern part of the Koringa Wildlife Sanctuary. It is located in which of the following state? अब देखो इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं हमारे पास। The right answer, चलिए, very good. Yes, it is Andhra Pradesh. Andhra Pradesh is absolutely the right answer. Very good everyone. Superb. Good job. चलिए ये रहा, अब मैं आपको थोड़ा टाइम दूंगा पढ़ने के लिए, पढ़िए और बताइए। We have discussed this in detail several times on our YouTube session, YouTube channel as well as on the app as well. क्लासेस में भी हमने डिस्कस किया है। बताइए क्या है जी सही जवाब? राइट आंसर क्विकली to this one. सिजान ने बोला है सर डी है जी जवाब। What about the rest of you? चलिए, well done ईशु, very good. It is both C and D which are actually correct. Absolutely right. अब ये देखिए आप, देखिए यहां पे वाराणसी से स्टार्ट होगा और आपको पता है ये कहां तक जाएगा? बांग्लादेश, राइट। अब देखिए the cruise would cover its journey in 51 days. Absolutely correct. The length of the Ganga-Vilas cruise is 62 meters in width and ये देख सकते हो आप, which makes option C and D both the correct ones. ठीक है जी, चलिए। All right, what is India's rank in current rank in cement production in the world? सीमेंट के मामले में हमारी रैंक क्या है? काफी अच्छी है ऑफ कोर्स। What is the rank?
क्या बात है, हाफ सेंचुरी पूरी हो चुकी है दोस्तों हमारी, आपको पता है क्या? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, द राइट आंसर सेकेंड बोल रहे हैं सारे के सारे, और आप लोग बिल्कुल सही हो। वी आर द सेकेंड लार्जेस्ट सीमेंट प्रोड्यूसर्स इन द वर्ल्ड। एब्सोल्युटली करेक्ट, वेल डन, गुड जॉब एवरीवन। चलिए जी, ऑलराइट, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एज पर द अनाउंसमेंट मेड बाय द अर्थ साइंस मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह, विच ईयर इंडिया विल बी कवर्ड बाय डॉपलर वेदर रडार नेटवर्क? व्हाट इज द आंसर हियर? द राइट आंसर, जल्दी जल्दी बताइए भाई। जो भी देख रहे हैं फटाफट से लाइक का बटन दबाओ। नेक्स्ट टारगेट हमारा है टू रीच 100 लाइक्स, राइट? बिफोर दिस सेशन एंड्स वी वांट टू टच द मैजिकल फिगर 100, ट्रिपल डिजिट में जाना है अपन को। फटाफट से जो भी ये वीडियो देख रहा है लाइक का बटन दबा दीजिए। चलिए, आंसर्स की बारिश होने लग गई है। वेरी गुड, द राइट आंसर हियर इज द ईयर 2025। एब्सोल्युटली फैंटास्टिक, गुड जॉब राहुल, बहुत बढ़िया, आते ही चौका मार दिया आपने तो। गुड जॉब अंजलि, एवरीवन गिविंग करेक्ट आंसर्स, वेरी गुड एवरीवन। विनायक, बहुत बढ़िया दोस्त। Okay, here we go. FCET stands for what? Asia's first hydrogen FCET. What does FCET stands for? जल्दी जल्दी बताइए, देखते हैं क्या है जी जवाब। The right answer, very good. चलिए, अनिकेत ने सबसे पहले जवाब दिया है। What about the rest of you? FCET stands for what? The right answer, it is fuel cell electric truck. फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक ट्रक। बेटा इलेक्ट्रॉनिक ट्रक कैसे होगा यार? इलेक्ट्रॉनिक ट्रक, इलेक्ट्रिक ट्रक, है ना? चलिए, और बी इज द राइट आंसर। हालांकि सोच सही थी हमारी, पढ़ावा भी सही था, इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिक में कंफ्यूज हो गए, होना नहीं चाहिए हमें वैसे। चलिए, कोई बात नहीं। विच एडिशन ऑफ द एरो इंडिया 2023 वॉज ऑर्गेनाइज्ड एट द एयरफोर्स स्टेशन बेंगलुरु फ्रॉम 13 to 17 February 2023? What is the answer here? बताइए जरा, देखते हैं आप में से कितनों को पता है। Let's see. चलिए, the right answer is सी लिखा हुआ है तो सी सही है, हैं? सी अगर सी लिखा हुआ है तो सी सही है क्या या बी है? अब बताओ, ड्यूअल कंफ्यूजन, बताइए व्हाट इज द करेक्ट आंसर। देखो, कई बार जो आंसर दिया हुआ है वो जरूरी नहीं है वो सही हो, राइट? तो व्हाट इज योर आंसर, दिस इज व्हाट आई वांट टू नो। चलिए बताइए, एयरफोर्स स्टेशन का, यस द राइट आंसर इट इज ऑप्शन सी। तो ये आपको याद रखना है, इट इज 14th, राइट? सो 14th एडिशन है ये आपको याद रखना है, ठीक है, ऑफ द एरो इंडिया शो दैट वाज कंडक्टेड इन विच प्लेस, ये भी पूछ सकते हैं हमसे। द आंसर इज बेंगलुरु, ठीक है? तो दिस हैज टू बी रिमेंबर्ड। चलिए बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये बताइए जरा, जनवरी 2023 की न्यूज है फिर से। Jammu and Kashmir Operations Private Limited developed an indigenous mobile operating system called 𝗲𝗏 to provide a secure environment for mobile users. This is an incubated firm of which Indian institution? What is the answer here? जल्दी से बताइए, कौन से आईआईटी की बात करी जा रही है? मद्रास, 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 बारिश कर दिया आपने मद्रास की, और मद्रास बिल्कुल सही जवाब है। वेरी गुड, चलिए वेल डन। बढ़ते हैं आगे। 20 क्वेश्चंस हो चुके हैं दोस्तों। अब आपको पता है क्या होगा। 20 क्वेश्चंस में से आपने कितने अटेम्प्ट किए और आपका स्कोर क्या है, उसमें फटाफट से मुझे लिख के भेजिए। व्हाट इज योर स्कोर आउट ऑफ 20? ईमानदारी से फटाफट से लिख के भेजिएगा अपना स्कोर। ओके, सो सिजान है स्कोर ऑफ 13। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जिसका भी स्कोर 8+ है, आई एम हैप्पी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 8+ खुश हो जाओ, ठीक है। अगर 8 से ज्यादा है आपका, 10+ है तो ज्यादा खुश हो जाओ, 12+ है तो बहुत बढ़िया, 14+ है तो गुड जॉब, 16+ है तो एक्सीलेंट, और 18+ है तो वाओ।
तो देख सकते हो आप, गोपाल वेरी गुड 17, खेवना 17, राहुल कोई बात नहीं बेटा 14 इज अ गुड स्कोर, गरिमा 18, सृष्टि 14, 18 ब्रह्मतेज 12, शिवाजी सैफी 17, अनीशा 17, जागृति के भी 17 है, क्या बात है। राशि इज एट 16, निवेता 17, अंजलि इज एट 14, मंगल राहुल इज एट 13। बेटा आपका नाम क्या है ये भी बताइएगा, मतलब व्हाट इज योर नेम। गरिमा 18, संपदा 13, अच्छा स्कोर है दोस्तों आपका। बाकी सब ने स्कोर ही नहीं भेजा, अरे गलत बात है, तो शर्माते क्या हो यार, स्कोर भेजने से नजर लग जाएगी क्या आपको, कमाल करते हो यार। भेज जल्दी से स्कोर भेजो फटाफट से, क्विकली। ऑलराइट, लेट्स गो नेक्स्ट। व्हाट इज द आंसर यार, जल्दी से बताइए। In the performance grading index for districts of India, identify the highest achievable grade. Highest achievable grade क्या है दोस्तों इनमें से? The right answer here is, it is very good. आप सबने कहा जी दक्ष, and दक्ष is absolutely correct. Sir, all these are covered in CLAT Ignite. Yes बेटा, CLAT Ignite में भी है, प्लस क्लासेस में से भी काफी सारा कंटेंट है, प्लस YouTube सेशन से भी काफी कंटेंट है। इट्स अ मिक्स बैग। चलिए, ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फटाफट से। ऑलराइट, ये बताइए जरा, व्हाट इज द आंसर। चलिए, तो हो गया दक्ष, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द आंसर हियर। द कैपेसिटी ऑफ नॉर्थ इंडियाज लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट, बताइए। हेलो सर, बिग फैन फ्रॉम 22 बैच, क्या बात है। मयूर, बहुत बहुत स्वागत है आपका बेटा, वेलकम। द राइट आंसर हियर इज ऑप्शन डी इंडीड। वेरी गुड गौरी, एब्सोल्युटली राइट, क्या बात है, मानना पड़ेगा यार, कमाल कर रहे हो आप लोग। चलिए, जो भी हमारा मित्र देख रहा है वीडियो, फटाफट से लाइक का बटन दबाओ यार, 100 पहुंचना है हमें, फटाफट से, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हमें 100 पे पहुंचना है। We are right now languishing at mid 60s. जल्दी से लाइक का बटन दबा दीजिए। Alright, बढ़ते हैं आगे। What is the capacity of North India's? अब ये तो हमने कर ही लिया है 22nd क्वेश्चन। बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ने से पहले क्विक अनाउंसमेंट गाइज, ऑल इंडिया ओपन मॉक टेस्ट लाइव है, आप सभी को पता है। जो भी आप में से अभी जस्ट हमारे साथ जुड़ा है, मैं वापस बता दूं आपको, वीडियो एनालिसिस, वीडियो सॉल्यूशन होने वाले हैं इन सभी क्वेश्चंस के। मौका है आपके पास टॉपर्स बैच ज्वाइन करने का इसके जरिए। सो इफ यू हैव नॉट गिवन द टेस्ट, प्लीज डू इट राइट नाउ टुडे। हाउ मेनी ऑफ यू विल गिव दिस टुडे, जल्दी से लिख के बताइएगा यो चैट में, ठीक है। जो आज देने, अभी तक नहीं दिया और आज देने वाले हैं, जल्दी से लिख दीजिएगा यो इन द चैट, और कल देने वाले हैं वो भी लिख दीजिएगा यो टुमारो, ठीक है। वैसे देना जरूरी है, अगर नहीं दिया तो बहुत बड़ा ब्लंडर है, ये सोच लेना आप, ठीक है जी। चलिए, 23rd क्वेश्चन बताइए, एलआरएस का फुल फॉर्म बताइए। चलिए, द राइट आंसर इज डी इंडीड, वेरी गुड, काफी आसान था ये, लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम, है ना, लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम। ऑप्शन इजीली एलिमिनेट भी कर सकते हैं हम। अब लॉ रेमिटेंस स्कीम तो होगा नहीं, लिबरल रेमिट स्कीम भी नहीं हो सकता, लिबरलाइज्ड रुपीज स्कीम भी नहीं हो सकता। द ओनली वायबल ऑप्शन या द ओनली ऑब्वियस वन इज डी इंडीड। चलिए, बताइए, वैक्सीन का नाम बताओ, इंट्रानेजल कोविड वैक्सीन का नाम बताइए। इंट्रानेजल कोविड वैक्सीन इंडिया ने डेवलप करी थी, पहली दुनिया की, डॉक्टर मनसुख मांडविया हेल्थ मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया। द आंसर इज ऑफ कोर्स इट इज इनकोवैक। इनकोवैक इज द राइट आंसर, सो वेल डन, शाबाश। तो ये हमें सबको याद रखनी है दोस्तों। चलिए जी, बहुत सारे सही आंसर आए हैं, मजा आ गया। इस तरह से सही आंसर्स देते रहो, वेरी गुड। 25th, which institution has launched the first electric formula racing car? Guys, जो भी अभी ज्वाइन किया है और अभी उनको पता नहीं, मैं बता दूं, आफ्टर एवरी सेट ऑफ 20 क्वेश्चंस आई एम आस्किंग यू योर स्कोर्स, सो मेक श्योर आप अपना स्कोर कैलकुलेट करते रहें, कितने सही आए क्वेश्चन, कितने गलत हुए।
सर क्लैट फॉर्म का लास्ट डेट 3 नवंबर है। बिल्कुल बेटा 3 नवंबर है। ऑलराइट, बताइए पहली इलेक्ट्रिक फॉर्मूला रेसिंग कार आईआईटी मद्रास ने करा है, पहली इलेक्ट्रिक फॉर्मूला रेसिंग कार बना दी है। बहुत अच्छी बात है जी। चलिए, अकॉर्डिंग टू द यूएस बेस्ड रिसर्च फर्म मरकॉम कैपिटल, India's solar module manufacturing capacity would reach approximately 95 gigawatts by the end of which year? बताइए, ये हमने क्लास में डिस्कस किया हुआ है। This has been discussed in the class. So people who are attending our classes, I'm sure you will be giving the correct answer. Very good, Garima. Absolutely right. It is the year 2025. By the year 2025, Jagrati, Anisha, well done. So that's the importance of classes also, guys. देखिए, very good. Gauri, Sijan, Rahul, Brahm, Tej, Anisha, Rashi, Nitika, Gopal, all giving correct answers. Pranjali, Ahana, Sefi, good job. Anisha, Tanzila, बहुत बढ़िया. निवेता, well done. Rahul, सभी ने बहुत बढ़िया आंसर किया. Good job. Quickly as well. Anita, well done. All right. Next, according to the data released by ISRO, the normalized nighttime light radiance in India has increased to what percentage in 2021 as compared to 2012? बताइए जरा. Now this has also been discussed. The right answer here is चलिए, very good. It is 43%. 43% is the right answer. बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने. शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. अब दोस्तों जो भी ये वीडियो देख रहा है भाई, लाइक का बटन दबाओ, फटाफट से 100 पे पहुंचना है हमें, जल्दी जल्दी. Okay, the next question, ये रहा. The Union Railway Minister 𝗟𝗲𝗴𝗹 has informed that India will get its first hydrogen train by dash. कब मिलेगी भाई हमारी पहली हाइड्रोजन ट्रेन हमें? बताइए जरा. By when we will get? The right answer is option B. Very good, Garima. Absolutely right. It is जागृति. वेरी गुड. इट इज द ईयर 2023 दिसंबर. तो आपके एग्जाम के महीने में ये होने वाला है. चलिए बढ़ते हैं आगे. अकॉर्डिंग टू द IEA report, the proper adoption of India's lifestyle for environment initiative could help to reduce the global carbon dioxide emissions by more than 2 billion tons or $440 billion in the year dash. बताइए कब की बात हो रही है, क्या है जी यहां पे सही जवाब? द ईयर 2030. एब्सोल्युटली फैंटास्टिक. तंजिला, वेल डन. अनीशा, गरिमा, गौरी, वेल डन. इट शुड हैव बीन श्योर बेटा, सही जवाब था आपका. निवेता, वेल डन. सिजान, गुड जॉब. राहुल, सैफी, एवरीवन गिविंग करेक्ट आंसर्स. प्रांजलि, बहुत बढ़िया. राशि, राहुल, अंजलि, गरिमा, मुन्ना, वेल डन भाई, वेल डन. बी फॉर बॉल. नाम भी बता दो अपना. अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ, अ कंप्लेंट इज रिक्वायर्ड टू बी डिस्पोज्ड ऑफ विद इन हाउ मेनी डेज ऑफ इट्स फाइलिंग? कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ में बताइए जरा क्या है जी जवाब यहां पे. व्हाट इज द सही आंसर? क्या है जी सही जवाब? 90 डेज कह रहे हो. शाबाश, वेरी गुड गरिमा. एब्सोल्युटली राइट अगेन. गुड जॉब. जागृति, राशि, वेल डन. गोपाल, अनीशा, अहाना, सैफी, अंजलि, गरिमा, गौरी, राहुल, प्रांजलि, सैफी, एवरीवन. गोपाल, वेल डन. नितिका, गुड जॉब. 30 questions done. 31st, rights to repair portal has been launched by which ministry? बताइए जरा. right to repair portal has been launched by which ministry? The right answer here is right to repair portal कौन करेगा भाई? Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution. Right, so this is the right answer. तो ये हमें याद रखना है दोस्तों. राइट आंसर ऑप्शन डी. चलिए, ऑलराइट, वेरी गुड एवरीवन गिविंग. कुछ लोगों ने डी बोला, कुछ लोगों ने सी बोला. द राइट आंसर बी इज डी. चलिए बढ़ते हैं आगे. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रीनेम्ड द आइकॉनिक मुगल गार्डन इन राष्ट्रपति भवन एज द डैश. बताइए जरा. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रीनेम्ड आइकॉनिक मुगल गार्डन इन राष्ट्रपति भवन एज व्हाट? हम सभी को पता है, हम सभी ने करा हुआ है पहले से भी बेटा. अमृत बगीचा नहीं, अमृत उद्यान.
देखिए आप अमृत देखते ही आपने मार्क कर दिया बी, ये गलती कर दी, जबकि ऑप्शन डी जो था अमृत उद्यान था, ठीक है, अमृत बगीचा है ऑप्शन बी। तो यहाँ पे आपका गलत आंसर हो गया बेटा, थोड़ा ध्यान दो, यहाँ पे अमृत उद्यान इज द राइट आंसर, ठीक है, इट इज अमृत उद्यान। ऑलराइट, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which of the following mineral was found for the first time in the country in the Salal Haimana, ये देख सकते हो, एरिया ऑफ रियासी डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, बताइए जरा, बाय द GSI। ये चीज मिली थी राजस्थान में भी। द राइट आंसर हियर इज लिथियम। हाँ, तो उद्यान मीन्स गार्डन, यस एब्सोल्युटली राइट, ठीक है, तो अमृत उद्यान, ठीक है। कई बार होता है हमारे साथ, हम जल्दी जल्दी में ना पूरा ऑप्शन पढ़ते नहीं है, तो वो भी नहीं होना चाहिए। ओके, द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ द शिंकुला टनल इन लद्दाख फॉर बेटर कनेक्टिविटी। In this context, the tunnel will be completed by which year, which month? Which year, which month? The right answer, 34th question in front of you. Right answer is, it is December 2025. Very good, Garima, absolutely right. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, गुड जॉब, शाबाश। चलिए 34th क्वेश्चन डन, बढ़ते हैं आगे। गौरी बहुत बढ़िया, राघव, सैफी, राशि, राहुल, प्रांजलि, नितिका, एवरीवन गिविंग करेक्ट आंसर्स, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, ऑलराइट, नेम द AI/ML, ये देख सकते हो, बेस्ड चैटबॉट which was launched by UIDAI to help people get an answer to the queries related to the Aadhaar card. Now this has also been discussed in the classes. चलिए बताइए, what is the right answer? 35th question in front of us. The right answer, it is Aadhaar Mitra. Aadhaar Mitra is the right answer. Good job, Vats Gandhi. Well done, buddy. Good job, Sijan. Very good, Gauri, Garima. Everyone giving correct answers. Now Shivaji, Rashi, Pranjali, Raghav, मंगल, गरिमा, नितिका, सभी लोग सही हैं भाई, गजब। चलिए जी, बढ़ते हैं आगे, बताइए, विच, गोपाल ये क्लास में किया हुआ है बेटा, गलत नहीं होना चाहिए था ये। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैज सक्सेसफुली क्रिएटेड हिस्ट्री बाय conducting its maiden 21 kilometer trail running event in sub-zero temperature at 13,862 feet high? What is the answer here? 36th question in front of us. The right answer, yes, it is Ladakh indeed. Good job. Absolutely right. B हमारा सही जवाब है। चलिए जी, बढ़ते हैं आगे। As per the information provided by the Union Minister of State Science and Technology, Jitendra Singh, North India's first nuclear power plant will be set up in which of the following places? The right answer, 37th question, is Gorakhpur, Haryana. Gorakhpur, Haryana is the right answer. D बिल्कुल हमें याद रखना। ये मैंने आपको बोला भी था कई बार कि ये पूछ सकते हैं हमसे, गोरखपुर उत्तर प्रदेश और गोरखपुर हरियाणा ऑप्शंस आ सकते हैं, तो उसमें आपको याद रखना है गोरखपुर हरियाणा। ये भी क्लास में हमने डिस्कस किया है। देखिए दोस्तों, जो भी आप में से बच्चा है जिसने अभी तक हमारी पेड बैचेस ज्वाइन नहीं करे, हमारे साथ नहीं पढ़ रहे हैं, और अब अगर आप तैयारी कर रहे हैं क्लैट की, तो guys make sure that you avail the free 3-day trial. Link is in the description. 3 दिन का फ्री ट्रायल अवेलेबल है बायजूस के कोर्सेज का, तो उसका फायदा उठाइए। चलिए, which of the following aims conducted a trial of Vertiplane X3 drone to test the feasibility of drones in supplying medicines to primary health centers or smaller hospitals? तो बताइए जरा, what is the answer here? कहां पे, किस एम्स ने ट्राई किया? ऋषिकेश। वेल डन, गरिमा, जागृति, गौरी, प्रांजलि, सृष्टि, आहाना, अनीशा, निवेता, गोपाल, जागृति, एक भी गलत आंसर नहीं दिखा। राघव, शिवाजी, सैफी, सभी ने सही जवाब दिया। बहुत बढ़िया। ऑलराइट, which of the following high court became the first in India to publish judgments to the regional language by using Suvash tool to translate the judgments? However, let me say this to you that in High Court the official language is English. याद रखिएगा, चाहे हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, ऑफिशियल लैंग्वेज वहां पे कम्युनिकेशन की क्या है? इंग्लिश है, ठीक है। ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन इज इंग्लिश। हालांकि इफ यू विल गो देयर प्रैक्टिकली, अगर आप देखोगे, सो देयर माइट बी इंस्टेंसेस वेयर पीपल विल बी स्पीकिंग इन हिंदी और रीजनल लैंग्वेजेस, बट दैट्स ओनली if the judge
knows that particular language. Otherwise it's very strictly English, because judges can be from any part of India, may or may not know certain language, right? So that's why English is the official language which is used to communicate and judgments and everything in High Court and Supreme Court. So if any document is there in any other language, it is translated in English and then presented in the front of the courts. तो ये भी आप याद रखिएगा. चलिए, how many judges are there in the Supreme Court meanwhile? ये भी बताइएगा फटाफट से. How many? What is the total approved sanctioned limit of the number of judges in the Supreme Court? Quickly बताइएगा मुझे. All right. वेरी गुड. सुवास का फुल फॉर्म बताया आपने, बिल्कुल सही है. सुप्रीम कोर्ट विधिक अनुवाद सॉफ्टवेयर. वेरी गुड गौरी. ओके, द यूनियन कैबिनेट बताइए, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ पीएम मोदी अप्रूव्ड एक्सटेंशन ऑफ 22nd लॉ कमीशन टू व्हाट डेट? वेरी गुड. 34 सेज वत्स गांधी. वेरी गुड गौरी, राहुल, गरिमा, प्रांजलि. दोस्तों ये बोनस क्वेश्चन था, गिव योरसेल्फ +1 अगर आपको ये आंसर आता था. ठीक है, 34, 33 जजेस +1 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सो 34 इन टोटल. ठीक है, बहुत बढ़िया. द राइट आंसर इज ऑप्शन बी. बारिश हो गई दोस्तों बी की यहां पे. गजब गजब. 31 अगस्त 2024 इज एब्सोल्युटली द करेक्ट आंसर. वेल डन टू ऑल ऑफ यू. आई कैन सी सो मेनी नेम्स हियर. दोस्तों 40 क्वेश्चंस हो चुके हैं. व्हाट इज योर स्कोर आफ्टर 40 क्वेश्चंस के बाद आपका स्कोर क्या है? जल्दी से शेयर कीजिए फटाफट मेरे साथ. जल्दी जल्दी. व्हाट इज योर स्कोर आफ्टर 40? इसके साथ ही दोस्तों जो भी ये वीडियो देख रहा है और अभी तक लाइक का बटन नहीं दबाया, भूल गया है किसी कारणवश, फटाफट से लाइक का बटन दबा दो दोस्तों. कोई इसमें कंजूसी नहीं करनी है हमें. हाँ, वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन का भी जोड़ के ही बोलना है आपको. वेरी गुड. 35, 30, 37, 26, 21. नाउ वेल डन, वेल डन. व्हाट अबाउट द रेस्ट ऑफ यू? अपने स्कोर गिनते रहना है दोस्तों, फिर तो मजा नहीं आएगा ना यार. तभी तो पता चलेगा वेयर डू वी स्टैंड, हमारा कंपटीशन कहां पे है. इसका मतलब ये नहीं कि हमें बुरा फील करना है, बट ये है कि थोड़ा आइडिया लगे कि कहां हमें पहुंचना है ना. तो थिंक ऑन द पॉजिटिव साइड. वेरी गुड सैफी. 36, क्या बात है. राशि वेरी गुड. 35, राहुल 31, गुड जॉब. अरे यार इतने सारे बच्चे आंसर देते हैं और स्कोर इतने कम. गलत बात, गलत बात. 36, 36, 30. थोड़ा तेज दोस्तों. चलिए. ऑलराइट सर, थोड़ा तेज करेंगे क्या? भाई तेज करते हैं, बिल्कुल तेज करते हैं. चलिए अब से थोड़ा स्पीड बढ़ा देते हैं, है ना. चलिए, ऑलराइट, लेट्स गो. ऑलराइट, ये रहा जी हमारे सामने 41st क्वेश्चन. विच द फॉलोइंग पेट्रोलियम रिफाइनरी is planning to set up green hydrogen plants at all the refineries by 2047 to achieve net zero emissions? What is the right answer? 41st question in front of us. The right answer here is yes. शिवाजी, अच्छा स्कोर है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है. It is the Indian Oil Corporation. Well done everyone. Absolutely right. You guys are. Good job. आगे बढ़ने से पहले वापस से रिमाइंडर है सभी के लिए, ऑल इंडिया ओपन मॉक टेस्ट दे देना भाई. कितनी बार रिमाइंड कराएं, याद रखना है. ठीक है, ऑल इंडिया ओपन मॉक टेस्ट 25 अगस्त, 3 सितंबर, वीडियो एनालिसिस सब कुछ मिलेगा. और सबसे जरूरी बात, टॉपर्स बैच ज्वाइन करने का मौका. ठीक है जी, डू नॉट मिस दिस ऑल इंडिया ओपन मॉक टेस्ट. ऑलराइट. CGI DY Chandrachud launched the neutral citations. In this context, which of the following statement is correct? बताइए जरा, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? न्यूट्रल साइटेशंस उन्होंने लॉन्च किए. The right answer here is to ensure a uniform pattern of citing the decisions of the Supreme Court. देखो दोस्तों, साइटेशन क्या होती है? जैसे कोई भी केस है, मान लो A वर्सेस B, ठीक है, तो A वर्सेस B है, तो उसमें मान लीजिए A वर्सेस B है, तो ये 1980 का केस है, तो 34 SC 1980 कुछ इस तरह से. आप ये जो है, ये क्या है जी? सुप्रीम कोर्ट को आसानी से रिकलेक्ट करने के लिए ये यहां पे दिस इज द वे सुप्रीम कोर्ट एक्चुअली साइट्स इट्स केसेस, है ना. तो ये रिकॉर्ड में रखने के लिए इस तरह से ऑपरेट करते हैं, इस तरह से ये साइटेशंस देते हैं. तो ये आपको याद रखना है. अब यहां पे देखिए, आप A वर्सेस B हो गया, वैसे मान लीजिए अगर B वर्सेस C है, तो उसमें कई जगह आप देखेंगे साइटेशन अलग सा भी दिया हुआ है, जरूरी नहीं है इस तरह का ही दिया हुआ हो.
तो उनका 3-5 या 3-4-5, फिर AC, फिर कुछ नंबर, फिर SC, फिर 1984, तो इस तरह से भी रैंडम कई बार अलग अलग साइटेशंस के वो हैं। तो टू मेक श्योर दैट देयर इज यूनिफॉर्मिटी, जो भी डिसीजन सुप्रीम कोर्ट के में पेश किए जाएं, तो उसके लिए ये लॉन्च किया है न्यूट्रल साइटेशंस, राइट। तो यूनिफॉर्म पैटर्न हो साइटेशन का, ऐसा नहीं कि कहीं पे 3-4 SC और ऐसे दिया हुआ है, कहीं पे दूसरा दिया हुआ है, तो यूनिफॉर्मिटी बनी रहे, है ना। चलिए, तो ये आपको याद रखना है, बी द करेक्ट आंसर। ऑलराइट, which of the following ministry has established the faceless dispute resolution mechanism grievance appellate committee to investigate users complaints about content and other issues? What is the right answer here? 43rd question in front of us. The right answer, Ministry of Electronics. और कौन होगी इसमें? मिलिट्री बोल रहा हूं बार बार, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। बी इज द राइट आंसर, सो वेल डन। 43rd क्वेश्चन, बी एब्सोल्युटली राइट। ऑलराइट, द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स प्रोहिबिटेड द सेल ऑफ हॉलमार्क्ड गोल्ड ज्वेलरी विदाउट द हाउ मेनी डिजिट अल्फान्यूमेरिक हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर आफ्टर March 31, 2023। ये तो आपके घर पे भी सबको पता होगा, आस्क योर मदर, आस्क योर सिस्टर्स, राइट, जो भी एल्डर सिस्टर, जो भी भाई सोना खरीदते हैं उनको पता है ये। राइट आंसर इज द 6 डिजिट। 6 डिजिट इज द राइट आंसर। 6 डिजिट का होता है जी हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी नंबर, ठीक है जी, याद रखना है अब आपको, ठीक है। 6 डिजिट का होता है, उसके बिना अगर आपने खरीदा बेचा तो दैट इज इलीगल। ओके, मूविंग ऑन quickly. What is the theme of the Catch the Rain campaign launched by 𝗟𝗏𝗴𝗹 𝗏, President of India, to turn conservation of water? बताइए जरा, मॉनसून में पानी बहता है, ऑब्वियसली उसको कलेक्ट करना चाहिए, तो what is the right answer here? 45th question in front of us. The right answer, the source sustainability for drinking water. So this is what is the theme. So do remember the right answer in front of us. Source of sustainability फॉर ड्रिंकिंग वाटर। दोस्तों कई बार होता है हम एक ऑप्शन देके या 2 ऑप्शन देके कंफ्यूज हो जाते हैं, दैट शुड नॉट बी द केस, ठीक है। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह हैज लॉन्च्ड द फर्स्ट फेज ऑफ द सेफ सिटी प्रोजेक्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया। बताइए, सेफ सिटी प्रोजेक्ट, सेफ सिटी प्रोजेक्ट, व्हाट इज द राइट आंसर हियर? द राइट आंसर to this, yes, Aditya L1 has successfully been launched. We'll be conducting a dedicated session also, beta. Bengaluru, Karnataka is the right answer. 46th question, D, Bengaluru, absolutely right. So good job, well done. All right, which of the following university became the first foreign university to open its campus in the gift city? बताइए जरा, गिफ्ट सिटी में आने वाली ऑस्ट्रेलिया की ये यूनिवर्सिटी है, नाम क्या है इसका? इट्स एन ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी, आई एम श्योर यू हैव हर्ड अबाउट इट। द नेम इज, इट इज द डीकिन यूनिवर्सिटी। यस, डीकिन यूनिवर्सिटी बहुत ही टॉप नॉच यूनिवर्सिटी है। ये अब आ गई है, इन्होंने गिफ्ट सिटी में अपना कैंपस खोलने का डिसीजन ले लिया है। ऑलराइट, इन मार्च एंथनी एल्बनीज अराइव्ड इन अहमदाबाद, गुजरात। इन्होंने, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच हो रहा था, तो वो भी देखा था प्राइम मिनिस्टर के साथ बैठ के, टेस्ट मैच। किन की बात हो रही है, कहां के होंगे ये प्राइम मिनिस्टर? द राइट आंसर ऑफ कोर्स इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, एब्सोल्युटली राइट। सो दिस हैज आल्सो बीन डिस्कस्ड प्रीवियसली। याद आ रहा है ना, यही है दोस्तों रिकॉल वैल्यू। आई एम श्योर कितने लोगों को आपको याद आया होगा कि सर ने हाँ ऐसा कुछ बताया था कि मैच हो रहा था तब वो देखे थे, तो वही चीज आपको जितनी भी हम रिलेटेड चीजें पढ़ते हैं वो बहुत काम आती है। Alright, according to the US Department of Energy's ये देख सकते हैं आप, Lawrence Berkeley National Laboratory report, India can achieve energy independence by which year? Energy independent हो जाएंगे by the 100th year of our independence, the year 2047. Good job, Garima, Gauri, Jagrati, everyone giving correct answers. Ahana, Nitika, Mangal, Anisha, very good, Gopal, Rashi, Jagrati, Tanzila, Gopal, Rahul, बहुत बढ़िया। चलिए, इन मार्च, ये बताइए, राघव बहुत बढ़िया दोस्त, किशिडा फूमियो, who was on a 2-day visit to India,
इज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? काफी आसान है, किशिडा फूमियो, नाम से पता चल रहा है कि नहीं? नहीं, it is Japan indeed. Absolutely right. 50th question, the right answer Japan, right? चलिए बढ़ते हैं आगे, थोड़ी सी स्पीड अप बढ़ाएंगे हम. In March, who among the following has launched a cricket focused fantasy app named as crickpay? इनमें से कौन है दोस्तों जिन्होंने फैंटेसी स्पोर्ट्स ऐप लॉन्च किया? द राइट आंसर इज अश्नीर ग्रोवर. अश्नीर ग्रोवर आपको पता है हैवी इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं इस जगह इस टाइम पे. तो द राइट आंसर ऑफ कोर्स इज ऑप्शन ए, क्रिकपे. फैंटेसी स्पोर्ट्स ऐप है ये, आपको पता है जैसे ड्रीम 11 है वैसा ही. थोड़ा ध्यान से खेलिएगा दोस्तों, बहुत जोखिम है. ट्राई टू स्टे अवे. ओके, MyGov platform is hosted and managed by whom? MyGov platform is hosted and managed by whom? The right answer, absolutely right. The right answer is NIC. यार युवराज देखता बहुत है यार, हैं? फॉलो कर रहा है अश्नीर ग्रोवर को. भाई क्या कर रहा है तू? ये सब दोगलापन है. चलिए, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. वेल डन. चलिए बढ़ते आगे. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू डिजी यात्रा? डिजी यात्रा, डिजी यात्रा को लेकर इनमें से क्या सही जवाब है? फटाफट से बताइए. चलिए बहुत बढ़िया, बहुत लोगों ने आंसर दे दिया. वेल डन. राइट, आहाना, मंगल, राहुल, अनीशा, जागृति, एवरीवन. द राइट आंसर इज A. It is biometric enabled seamless travel experience based on facial recognition technology. तो ये सही है जी डिजी यात्रा के संदर्भ में. Alright, let's move on. जिग्मे खेसर नागमेल वांगचुक arrived in India for a 2-day visit. Options आपके सामने है, बताइए किंग किस कंट्री के हैं ये? नाम से पता चल रहा है हमें, वांगचुक नाम है, जिग्मे खेसर नागमेल वांगचुक. भाई सऊदी अरेबिया के नाम हो सकता है क्या? ऑफ कोर्स नॉट. भूटान का हो सकता है, इंडोनेशिया नहीं हो सकता, जाम्बिया नहीं हो सकता. द राइट आंसर ऑफ कोर्स इज भूटान. बेटा भूटान इज ऑप्शन बी, आप सी क्यों बोल रहे हो? बी भूटान इज द राइट आंसर. गौरी मैं देखता हूं ये मिस्टेक आपको एग्जाम में तो नहीं होती, मॉक में. ये गलती कभी मत करना. कई बार हम होता है क्वेश्चन देखते हैं बी हम और वहां पे मार्क कर रहे होते हैं हम सी, तो ये गलती कभी नहीं करनी है हमें, याद रखना. चलिए, alright, 54th done. Let's move on to the next one. 55th. Which of the following country secured the title of FIFA Women's World Cup 2023? कौन जीता? अभी आप सभी को पता है. The right answer here is Spain. Spain were the winners for the FIFA Women's World Cup 2023. बिल्कुल, स्पेन के लेकर सभी को जवाब मालूम थे. गुड जॉब. यही होती है बात. चलिए 56th. Who among the following Indian javelin players won the gold medal in the men's javelin throw World Athletic Championship held in Hungary? दोस्तों इसमें तो आपको कोई डाउट ही होना चाहिए. The golden man. The right answer for the last Olympics for us, Neeraj Chopra. So Neeraj Chopra is the right answer. 56th question, A is the right one. चलिए शाबाश everyone, very good. All right. Who among the following has won the Chess World Cup 2023 title? The Chess World Cup फाइनल कौन जीता दोस्तों? दुनिया के बेस्ट चेस के खिलाड़ी. आप सबको डाउट ही नहीं होना चाहिए उनके नाम में. We are talking about none other than मैग्नस कार्लसन हिमसेल्फ. मैग्नस कार्लसन दोस्तों ये हैं जी वर्ल्ड के सबसे जबरदस्त खिलाड़ी, नंबर 1 रैंक खिलाड़ी भी है. तो इनका आपको याद रखना है. चलिए ऑलराइट, बढ़ते हैं आगे. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्विकली. सो बी आप सबने सही जवाब दिया. बढ़ते हैं आगे. इन ऑगस्ट हु अमंग द फॉलोइंग चेस प्लेयर बिकेम इंडियाज टॉप रैंक्ड चेस प्लेयर सरपासिंग विश्वनाथन आनंद? तो 9th पोजीशन पे ये आ गए हैं वर्ल्ड रैंकिंग्स में. विश्वनाथन आनंद को पीछे छोड़ने वाले पहले इंडियन बन गए. वी आर टॉकिंग अबाउट नन अदर. विश्वनाथन आनंद बाय द वे इज द फर्स्ट चेस ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया. द राइट आंसर इज गुकेश. डी गुकेश इज द राइट आंसर. बिल्कुल सही, शाबाश. चलिए ओके. इन 2023 हाउ मेनी टीम्स पार्टिसिपेटेड इन द IPL 2023? क्रिकेट टूर्नामेंट हुआ IPL, आप सभी को पता है. 2 न्यू टीम्स वर एडेड दिस ईयर. हाउ व्हाट इज द टोटल नंबर हियर? द टोटल नंबर हियर इज
is 10 now. 10 teams with the additions of Gujarat and Lucknow. All right, here we go. 60th question. Australia state of Victoria has withdrawn their hosting rights from Commonwealth Games, which were set to be conducted in which year? The year 2026. 2026 is the right answer. 60 questions done. Guys, quickly, you know the drill. 60 के बाद अपना स्कोर फटाफट से शेयर कर दीजिए. और जो भी ये बच्चा वीडियो देख रहा है और लाइक का बटन नहीं दबाया है किसी कारणवश, फटाफट से लाइक का बटन दबा दो. विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, क्विकली प्रेस द लाइक बटन. दोस्तों, कोई कंजूसी नहीं करनी है लाइक करने में हमें. ऑलराइट, लेट्स गो. चलिए, स्कोर्स तो बहुत अच्छे हैं यार. गरिमा 56, वेरी गुड. राहुल 45. व्हाट अबाउट द रेस्ट ऑफ यू? अभी ज्वाइन किया क्या? कोई बात नहीं. अनीशा, गोपाल, वेरी गुड. गरिमा, राशि, खेवना, वेल डन गाइस. एब्सोल्युटली फैंटास्टिक स्कोर्स. अबव 50. वेरी गुड. शिवाजी 43. लेट हो गया सर, इसरो के लॉन्च देख रहा था. बाद में देख लेता यार दोस्त. चल कोई नहीं. ऑलराइट, नेक्स्ट. वेरी गुड. 44, 54. वेरी गुड. वेल डन गाइस. 40s से नीचे तो कोई भी नहीं है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है. चलिए. ऑलराइट, इन जून नोवाक जोकोविच वन इज डैश नंबर ऑफ ग्रैंड स्लैम बाय क्लिंचिंग फ्रेंच ओपन टाइटल. कितनी बार जीत गए? 23 बार जीत गए दोस्तों. 23rd टाइटल नोवाक जोकोविच. खतरनाक खिलाड़ी है, जबरदस्त खिलाड़ी है. एब्सोल्युटली फैंटास्टिक. चलिए गाइस, वी आर वेरी क्लोज टू रीच 100 लाइक्स अगेन यार. हम है 74 लाइक्स पे, जैसा कि मैं देख पा रहा हूं. तो भाई फटाफट से जो भी ये वीडियो देख रहा है, लाइक का बटन दबाना भूल गया, फटाफट से लाइक का बटन दबा दो. वी हैव टू रीच 100 लाइक्स व्हाइल बिफोर वी रीच द क्वेश्चन नंबर 100, है ना. चलिए, तो क्विकली, ओके, लेट्स मूव ऑन. चलिए जी, बढ़ते हैं आगे फटाफट से. Just a second. Yeah. Okay. Who among the following, or rather, which among the following organization headquarter is not in New York, USA? So the right answer here is, बताइए कहां का नहीं है हेडक्वार्टर? यूनिसेफ का हेडक्वार्टर है. यूनेस्को का कहां है हेडक्वार्टर? जिनीवा में है. बिल्कुल सही. तो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी. दोस्तों, याद रखने हैं हमको सारे के सारे हेडक्वार्टर्स, हेड्स एंड हेडक्वार्टर ऑफ ऑल इंटरनेशनल एंड नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस. एंड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन दोनों का हमें हेड एंड हेडक्वार्टर दोनों हमें ध्यान रखने हैं. ठीक है, तो लिस्ट बनाइए और ये भी आप याद रखिए. ठीक है, चलिए. ऑलराइट, तो सारे के सारे आपको याद रखने हैं. चलिए, डन है दोस्तों. बढ़ते हैं आगे. हाँ, यूनेस्को हेडक्वार्टर पेरिस है. पेरिस, एब्सोल्युटली राइट. चलिए, आगे बढ़ने से पहले, पीपल हु हैव जस्ट जॉइंड अस, लेट मी रिमाइंड यू, ऑल इंडिया ओपन मॉक टेस्ट होने वाला है. क्लैट का चल रहा है अभी. दिस इज द फर्स्ट ऑल इंडिया ओपन मॉक टेस्ट दैट वी आर कंडक्टिंग फॉर यू गाइस. तो ये आपको बिल्कुल आप याद रखिएगा. ठीक है, कि अगर आपने नहीं दिया है तो फटाफट से दे दीजिए. 3rd September इज द लास्ट, दैट इज टुमारो इज द लास्ट डेट. तो ये आपको याद रखना है. वीडियो सोल्यूशंस मिलेंगे हर क्वेश्चन के, तो डू नॉट मिस ऑन दिस. चलिए, हाउ मेनी क्वेश्चंस लेफ्ट सर? अराउंड 25 के आसपास क्वेश्चंस बचे होंगे हमारे. चलिए, IMF was initially formed at the Bretton Woods conference in which year? तो IMF कब फॉर्म हुआ दोस्तों? सिंपल सवाल ये है. The right answer, static question, core static here. The right answer here is, it is the year, very good, it is the year 1944. Absolutely right, 1944 is the right answer. चलिए, 64th, which among the following is considered as
पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूएन एड्स। यूएन एड्स का पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन है इसमें से? तो दिमाग की बात है दोस्तों, काफी आसान है। द राइट आंसर इज, बताइए, यूएन एड्स का पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन दोस्तों, इसका मेरे को तो लगता है सी नहीं होना चाहिए, मेरे को लगता है इट शुड बी ए। तो मैं ये क्वेश्चन ना मार्क करके रख रहा हूं, ठीक है। आई विल गेट बैक टू यू, ठीक है, इन दिस सेशन इटसेल्फ। वंस वी आर डन, थोड़ा सा मैं रिसर्च करूंगा और आपको बता दूंगा फटाफट से, ठीक है। तो यहाँ पे तो सी दिया हुआ है, पर एक बार मैं भी इसको चेक जरूर करना चाहूंगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को मैं मार्क कर रहा हूं। आई विल शेयर द आंसर थोड़े टाइम बाद। ऑलराइट, जैसे अगला सेशन निवेदिता मैम का है, तो बीच में आके मैं आंसर दे जाऊंगा आपको 64th क्वेश्चन का। ऑलराइट, बढ़ते हैं आगे। हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? पहला, अब ये मैं अभी कुछ दिन पहले देख रहा था कौन बनेगा करोड़पति, तो उसमें भी ये क्वेश्चन आया था, पहला फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? द राइट आंसर, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। चलिए बढ़ते हैं आगे, कंफ्यूज नहीं होना है फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से, तो ये आप याद रखिएगा। द लार्जेस्ट इनहैबिटेड रिवराइन आइलैंड इन द वर्ल्ड इज डैश। व्हाट इज द आंसर हियर? 66th question, inhabited. The right answer is Majui. Very good, Ahana and Bhavishya. Well done, Gopal. Lots of you who have just joined us, let me remind you quickly, फटाफट से जो भी लाइक का बटन नहीं दबाया, फटाफट लाइक का बटन दबा दीजिए। Recently, who among the following is appointed as the first head of NASA's Moon to Mars program? NASA का मून से मार्स प्रोग्राम जो है, उसके पहले हेड कौन बनाए गए हैं? फर्स्ट हेड of this is General Lester Lyles। देख सकते हो, लाइल्स कह सकते हैं, ठीक है। 67th क्वेश्चन, बी इज द राइट आंसर। ऑलराइट, 68th, in front of us the theme for World Press Freedom Day. The right answer, it is option C, shaping a future of rights, freedom of expression as a driver for all other human rights. Absolutely right। चलिए, बहुत बढ़िया। बताइए जरा, इंडिया की रैंक बता दीजिए प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। अब इंडिया की रैंक बता दीजिए प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया की रैंक क्या है दोस्तों? द आंसर इज, हमारी रैंक थोड़ी सी नीचे गिर गई है दोस्तों, ये याद रखिएगा आप, काफी बुरी, ठीक है। वी आर नॉट डूइंग दैट गुड। चलिए, ऑलराइट, बढ़ते हैं आगे। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स पब्लिशेस द सेम। एट विच प्लेस इंडिया वाज पोजिशन्ड ऑन वर्ल्ड बैंक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स? लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में हमारी पोजीशन क्या थी? राइट आंसर 38th पोजीशन थी दोस्तों। 70 क्वेश्चंस डन। बढ़ते हैं आगे, कुछ स्टैटिक क्वेश्चंस। हु अमंग द फॉलोइंग कॉन्कर्ड माउंट किलिमंजारो इन अफ्रीका वेयरिंग लुआनचरी? इट्स एन इंडियन ट्रेडिशनल अटायर फ्रॉम हिमाचल। बताइए जरा क्या है जी सही जवाब? द राइट आंसर 71st क्वेश्चन इज, इट इज ऑप्शन बी, अंजलि शर्मा। अंजलि शर्मा इज द राइट आंसर। चलिए जी, याद रखना है हम सभी को। क्या बात है, स्मैश द लाइक बटन, बिल्कुल। Who has been elected as the 22nd president of बांग्लादेश? 22nd, बताइए जी, बांग्लादेश के प्रेसिडेंट का नाम क्या है? What is the answer? चलिए, वेरी गुड, मंगल राव गिविंग द करेक्ट आंसर्स here. It is, yes, it is option D, Shahabuddin. All right, Mohammad Shahabuddin. Very good, Pranjali. Absolutely right, Nitika, Nandita. Good job, everyone. Gauri, well done. Okay,
73rd ILO, बताइए एक्सटर्नल ऑडिटर किसको बनाया गया? हु इज द एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इन जिनीवा? बताइए जरा, व्हाट इज द राइट आंसर? द राइट आंसर इज GC मुर्मू. गिरीश चंद्र मुर्मू is the external auditor of ILO. very very important, right? ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर किसी को नहीं पता था तो ये लिख दीजिए फटाफट से. जिसने भी दिमाग किया बेटा फटाफट से लिख देना. गिरीश चंद्र मुर्मू एक्सटर्नल ऑडिटर हैं ILO के. ऑलराइट, RBI was set up on the basis of the recommendation of which commission? बताइए जरा क्या है जी सही जवाब यहां पे? RBI आप सभी को पता है हिल्टन कमीशन, राइट? हिल्टन कमीशन के बारे में आप सबने सुना भी होगा, राइट? तो ये आपको याद रखना है, ठीक है? स्विट्जरलैंड बेटा, जिनीवा स्विट्जरलैंड. ऑलराइट, RBI was set up on the basis of the recommendations of, याद रखना है, हिटलर यंग कमीशन. चलिए, Amnesty International works for the upliftment of dash. What is the answer here? The right answer अरे गौरी, जिनीवा स्विट्जरलैंड में है ना बेटा, ऐसे क्या कर रहे हो? चलिए, एमनेस्टी इंटरनेशनल वर्क्स फॉर ह्यूमन राइट्स. एब्सोल्युटली, काफी आसान क्वेश्चन था, एक भी गलत जवाब नहीं आया, बहुत बढ़िया. ओके, हेडक्वार्टर ऑफ आसियान कहां है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ आसियान? वेरी इंपॉर्टेंट दिस इज. द राइट आंसर इज जकार्ता, इंडोनेशिया. जकार्ता, इंडोनेशिया इज द राइट आंसर. एब्सोल्युटली राइट, शाबाश. चलिए जी, बढ़ते आगे नेक्स्ट की तरफ. टॉपर्स बैच ज्वाइन करने का मौका है जी गोल्डन हमारे पास. मौके को गवाइए मत. ऑल इंडिया ओपन मॉक टेस्ट जरूर दीजिए. कल लास्ट डेट है, वो मिस हो गई, बहुत गड़बड़. तो जल्दी से, अगर किसी ने भी नहीं दिया फटाफट से दे दीजिएगा. टॉपर्स बैच का लास्ट मौका है ज्वाइन करने का इफ यू स्कोर गुड इन द ऑल इंडिया ओपन मॉक टेस्ट. ऑलराइट, विच डेकेड was declared or is declared as the UN decade of the ocean science for sustainable development? दोस्तों 91 में कोई बात भी कर रहा था क्या इसकी? 2001 में, चलो 11 में शुरू हो गई थी, बट अभी सबसे ज्यादा बात कब हो रही है? इस डेकेड में बात हो रही है. द राइट आंसर हियर हैज टू बी ऑप्शन डी. इट इज द ईयर 2021-2030. 2021-2030. ओके, ये बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नॉट बीन गारंटीड एज अ जस्टिशिएबल राइट अंडर द पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? जस्टिशिएबल मतलब राइट टू गो टू द कोर्ट. राइट टू गो टू कोर्ट नहीं है ना? अगर जस्टिशिएबल राइट मतलब है कि आप जा सकते हो, राइट है आपके पास कोर्ट में जाने का. अगर जस्टिशिएबल राइट नहीं है तो इसका मतलब है आप कोर्ट में नहीं जा सकते. तो पार्ट 3 जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें तो डेफिनेटली अपन जा सकते हैं, है ना? तो बताइए, व्हाट इज द आंसर हियर? जस्टिशिएबल इनमें से कौन सी नहीं है? इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क. ये तो काफी आसान है दोस्तों, ये हमें पता ही है. इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क ही होना चाहिए यहां पे, क्योंकि ये तो गारंटी है नहीं, है ना? इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क तो गारंटी नहीं है. अपॉर्चुनिटी में तो, अरे यार ऐसे मत करो. इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ये तो है ही है हमारे यहाँ पे. ये तो अगर नहीं मिलती है तो आप डेफिनेटली जा सकते हो कोर्ट में. पर अगर आप बोल रहे हो कि एक्स और वाई दोनों एक ही काम कर रहे हैं, पर एक्स को कम पैसा मिल रहा है, वाई को ज्यादा मिल रहा है, ये इसके लिए आप कोर्ट में जा सकते हो क्या? आप खुद बताइए. तो काफी आसान क्वेश्चन था ये, दिमाग लगाइए, राइट? ये दिस इज नॉट अ टफ क्वेश्चन. Which of the following is a directive principle of state policy under the Indian Constitution? DPSP. When the Constitution was made, this was a wish list. So what is the answer here? कौन सी है भाई DPSP इनमें से? Developing the scientific temper. राइट, ये क्रिटिसाइज भी की जाती है कि भाई ये जो है थोड़ा सा एम्बिगुअस है, इसका मतलब ही क्लियर नहीं है. डेवलपिंग द साइंटिफिक टेम्पर. चलिए, ए और डी जो है वो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं. व्हाट इज रिच टैग? ये भाई पार्लियामेंट है, कहां का? बर्लिन में सिचुएटेड पार्लियामेंट है ये, कहां का? द आंसर इज, इट इज द जर्मन पार्लियामेंट. गाइस, लास्ट 10 क्वेश्चंस टू गो. ये देखिए आप, जर्मन पार्लियामेंट आपके सामने मौजूद है.
कैसा दिखता है आप देख सकते हैं, ठीक है जी। चलिए ऑलराइट, बढ़ते हैं आगे। द नेक्स्ट वन, हाँ क्वेश्चंस मैं पूछूंगा बाद में, ठीक है। क्वेश्चंस क्या मतलब, ये मार्क्स आपके मार्क्स जो है मैं पूछूंगा 90 क्वेश्चंस के बाद। चलिए, विच अमंग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट लेक? सॉल्ट लेक बताइए जरा, व्हाट इज द आंसर हियर? द राइट आंसर ऑप्शन ए, द सांबर लेक। द सांबर लेक। Do marks in other mock tests are considered for toppers batch? Yes बेटा, absolutely yes, बिल्कुल कंसिडर होंगे नंदिता, ठीक है। बट यहां के भी कंसिडर होंगे। अगर कोई बच्चा है जिसने पहले बहुत अच्छे मार्क्स लाए हुए हैं और उसने ऑल इंडिया ओपन मॉक टेस्ट नहीं दिया, आई विल पर्सनली मेक श्योर कि भाई आप एलिजिबिलिटी आपकी चेक की जाए वापस से, ठीक है। ठीक है, तो देख लो, ये मेरी वार्निंग है भाई, कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होना चाहिए जिसने ओपन मॉक टेस्ट नहीं दिया, वो टॉपर्स बैच में ज्वाइन अगर होता है तो आई विल हैव सीरियस ऑब्जेक्शंस। तो याद रखिएगा आप ये बात, ठीक है। हु इज ऑफन कंपेयर्ड एज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया? वी आर मेकिंग श्योर दैट वी डू एवरीथिंग इन आवर पावर टू मेक श्योर दैट यू क्रैक द एग्जाम। तो अगर आप एग्जाम क्रैक करना चाहते हो और आपने अगर मॉक टेस्ट ही नहीं दे रहे जब इतना बोलने के बाद, तब तो फिर दिक्कत है। अगर आप सुनोगे नहीं तो फिर आप यहां पे नहीं सुनोगे तो फिर टॉपर्स बैच में कैसे सुनोगे? तो ये आपको याद रखना है। टॉपर्स बैच इज ओनली फॉर एनरोल्ड स्टूडेंट्स ऑफ बायजूस एग्जाम प्रेप, ओनली फॉर द एनरोल्ड स्टूडेंट्स। ऑलराइट, द राइट आंसर हियर is option B, it is Kalidas, absolutely right। 82nd question, B is the right answer। The union government has launched Swanidhi scheme for providing affordable loan to whom? Swanidhi scheme, Swanidhi self-independent, it is the street vendors। स्ट्रीट वेंडर्स के लिए ये लॉन्च किया है। वी हैव कवर्ड दिस प्रीवियसली एज वेल, आई एम श्योर आप सभी को पता है ना जी। चलिए सर, व्हेन विल द टॉपर बैच स्टार्ट? बेटा इसके रिजल्ट्स आते ही, जैसे 5 सितंबर को रिजल्ट आ जाएगा, इसका रिजल्ट तो आ चुका है, आपके मार्क्स तो पता है आपको, रैंक आ जाएगी आपकी, उसके बाद कोलैबोरेट करा जाएगा सब कुछ और बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो जो भी आप में से अभी तक जिसने ज्वाइन नहीं किया टॉपर्स बैच, कर लीजिएगा। गाइस, वी आर जस्ट अ फ्यू लाइक्स अवे फ्रॉम रीचिंग द कमिटेड 100 लाइक्स। जल्दी से भाई, जो भी वीडियो देख रहा है, लाइक का बटन दबाना भूल गए, फटाफट दबा दीजिएगा। 100 लाइक्स पहुंचाओ फटाफट, तभी तो मजा आएगा। निवेदिता मैम के आते ही सेंचुरी पूरी। विच ऑफ दीज बैंक्स हैज बीन एस्टैब्लिश्ड बाय ब्रिक्स कंट्रीज? नाउ ब्रिक्स को लेकर आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट, अभी रिसेंटली ब्रिक्स समिट भी हुई है, साउथ अफ्रीका में हुई है, न्यू कंट्रीज आर ऑल सेट टू ज्वाइन, दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर अस। न्यू डेवलपमेंट बैंक, आप सभी ने सही जवाब दिया, एब्सोल्युटली राइट, शाबाश। चलिए सर, मेरा नेटवर्क उड़ गया था, अभी सारे क्वेश्चंस मिस हो गए, अरे यार ध्यान दो यार बेटा। चलिए कोई बात नहीं, ट्राई कीजिएगा वापस रिज्यूम होता है तो, नहीं तो यू कैन टॉक टू आवर हेल्पलाइन नंबर, एक बार बात कर लीजिएगा। ओके, विच ऑफ दीज बैंक्स हैज बीन एस्टैब्लिश्ड? तो ये अपन को पता है एनडीबी, दिस वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 2014। बीसीसीआई वाज फॉर्म्ड फॉर व्हाट रीजन? दिस इज द क्रिकेट कंट्रोलिंग बॉडी इन इंडिया। ये जो बॉडी है ये आप सभी को पता है क्रिकेट के अफेयर्स को रेगुलेट करती है। The right answer is option B, to terminate the monopoly of British cricket in India, BCCI was formed। BCCI आज की डेट में it is the richest cricket board in the entire world, right? पूरी दुनिया में सबसे बड़ा सबसे रिच बोर्ड अगर कोई है तो वो यही है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्विकली। ऑलराइट, 86th, which of the following country is not part of UN? The right answer, all of the above, all of the above। ताइवान आपको पता ही है, चाइना के साथ उसका इशू है, डिस्प्यूट है, और मेजॉरिटी कंट्रीज इन द वर्ल्ड दे आर एक्चुअली इन सपोर्ट ऑफ चाइना कि भाई ताइवान सेपरेट एंटिटी नहीं है। दैट्स व्हाई ताइवान तो है ही है, वेटिकन सिटी, कोसोवो, ऑल आर नॉट अ पार्ट ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। तो ये यूनाइटेड नेशंस के पार्ट नहीं है, ठीक है जी। चलिए, व्हाट वाज द थीम ऑफ ब्रिक्स समिट? अब मजा आएगा दोस्तों, देखिए बताइए जरा क्या है जी आंसर। यहां पे ब्रिक्स समिट 2023 की थीम, 2020 मैं बता दूं आपको 2022 और 2021 की जब इंडिया होस्ट थी, तो 21 में वो भी हमसे पूछी जा सकती है। तो दोस्तों ये भी आप याद रखिएगा, बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस एज वेल, राइट, कि ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। अभी तो आप सबने सही जवाब दिया है, वेल डन, शाबाश। ऑलराइट, बढ़ते 87वें क्वेश्चन की तरफ।
आप सबने बोला जी ऑप्शन सी, ब्रिक्स एंड अफ्रीका पार्टनरशिप फॉर म्यूचुअली एक्सेलरेटेड ग्रोथ, सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट एंड इंक्लूसिव मल्टीलैटरलिज्म। दोस्तों यहां पे बड़ी बात क्या है कि 6 नई कंट्री प्रपोज की है ब्रिक्स को ज्वाइन करने के लिए। 6 कंट्रीज जो ज्वाइन कर सकती है, 6 कंट्रीज जनवरी 2024 में ज्वाइन करने का प्रपोजल दिया साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट ने, राइट। उन्होंने बोला कि ये 6 कंट्रीज है जो ज्वाइन करेंगी। कौन सी है वो 6 कंट्रीज? जो ये क्वेश्चन का आंसर देगा उसको बोनस +2, राइट। ये बोनस +2 हैं जो 6 कंट्रीज का आंसर देगा चैट में। सबसे पहले देखते हैं कौन देता है, विच आर द 6 कंट्रीज। +2 जो पहले देगा उसको पहला एडवांटेज, जो थोड़ा देर बाद देगा उसको, चलो एडवांटेज सभी को, आंसर देना चाहिए सभी ने। 6 के 6 +2 है, अगर 3 दिए तो फिर +1, ठीक है। चलिए, वेरी गुड वेरी गुड। इजिप्ट है उसमें, बिल्कुल सही कहा आपने। यूएई भी है, ईरान है, सऊदी अरेबिया है, वेरी गुड प्रांजलि, वेल डन, एब्सोल्युटली राइट। अर्जेंटीना भी है, बिल्कुल सही कहा आपने, गुड जॉब। चलिए, गुड एवरीवन। कुछ 4 कंट्रीज ही याद है दोस्तों। यही है पॉइंट कि 4 कंट्री अगर आपको याद है तो भाई 6 क्यों नहीं, सारी कंट्रीज ही याद होनी चाहिए हमें। तो फटाफट से जिसको नहीं पता गूगल करिए और इसका आंसर भी ढूंढिए फटाफट। ऑलराइट, चलिए बढ़े आगे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री होस्टेड द 2023 ब्रिक्स समिट? आसान, एकदम लड्डू क्वेश्चन है आपके लिए, easy peasy lollipop question towards the end. What is the right answer here? लड्डू क्वेश्चन गाइस, कम ऑन, इजी है, बड़ा ज्यादा इजी है। चलिए, साउथ अफ्रीका सभी को पता है भाई। साउथ अफ्रीका ने ब्रिक्स को कब ज्वाइन किया, ये भी बता दीजिए फटाफट से। When did साउथ अफ्रीका ज्वाइन द ब्रिक्स समिट? कब ज्वाइन किया ये भी बता दीजिए फटाफट से। साउथ अफ्रीका ने कब ज्वाइन किया दोस्तों? The year 2010. BRICS was formed in the year 2009 और 2010 में, बिल्कुल सही कहा आपने, 2010 में साउथ अफ्रीका ने ज्वाइन कर लिया। चलिए दोस्तों, जल्दी से फटाफट से क्विकली प्रेस द लाइक बटन, फटाफट जल्दी, टाइम वेस्ट करे बिना। द अर्लियर, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलिए, व्हाट इज आवर टारगेट? आवर टारगेट इज टू रीच 100 लाइक्स बिफोर निवेदिता मैम ज्वाइंस इन। उसके बाद डबल सेंचुरी भी करेंगे हम। ठीक है, चलिए फटाफट से। नेक्स्ट सेशन होने वाला है आपका, उसके लिए भी आप तैयार रहिएगा, ठीक है। नेक्स्ट सेशन होने वाला है निवेदिता मैम का। चलिए, ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन क्विकली। साउथ अफ्रीका सही जवाब। थीम फॉर G20 2023, ये भी हमने किया, तो इस तरह से भी पूछ सकते हैं हमसे, ठीक है। द राइट आंसर आप सबने पहले ही मार्क कर दिया, 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर, एब्सोल्युटली राइट। 89th क्वेश्चन, ए इज द राइट आंसर। ऑलराइट, चलिए जी बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ क्विकली। ए बिल्कुल सही कहा आपने, एलोरा, गौरी, एवरीवन गिविंग करेक्ट आंसर्स या, शाबाश। चलिए, alright, 90th question in front of us. Name the countries that have been invited by South African President and BRICS current chair Cyril Ramaphosa to become full members of the BRICS bloc by which, ये भी पूछ सकते हैं कब तक, तो जनवरी 2024, ये भी याद रखिएगा। और अब मुझे 6 कंट्रीज के नाम बताओ फटाफट से। अब यहां पे अब भी हमने डिस्कस किया है ये, अगर अभी भी किसी ने गलत जवाब दे दिया तो सोचो कितनी बुरी बात है। तो कोई भी गलत जवाब मत दीजिएगा दोस्तों, इट विल ब्रेक माई हार्ट फॉर श्योर, राइट। तो चलिए, क्या है जी सही जवाब, जल्दी से बताइए। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, अर्जेंटीना, इजिप्ट, ये देखिए आप 1 2 3 4 5 एंड 6, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया एंड यूएई। टैटू करा लो हाथ पे, बिकॉज इज अ सुपर डुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सुपर इंपॉर्टेंट, राइट। मैं लिख रहा हूं यहां पे लीक्ड। ब्रिक्स के ऊपर डेफिनेटली एक्सपेक्ट कीजिए क्वेश्चंस इन योर एग्जाम फॉर श्योर। क्लैट नहीं तो एलेट नहीं तो कहीं ना कहीं एमएससीटी, कहीं ना कहीं डेफिनेटली आपको ये एग्जाम में आना ही आना है, ठीक है। सो बी रेडी। चलिए, डन है दोस्तों, ऑलराइट। चलिए जी, आगे बढ़ने से पहले क्विकली
मैं आपको बता दूं, आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है हमारी टेस्ट सीरीज को अवेल करने की। जैसे सिजान ने बोला है, सर जो बायजूस में एनरोल नहीं है वो ज्वाइन कर सकते हैं क्या टॉपर्स बैच? आप नहीं कर सकते बेटा, यू हैव टू एनरोल फॉर द सेम। बट अगर आप एनरोल नहीं है और आप मॉक टेस्ट अवेल करना चाहते हैं, दैट इज एन ऑप्शन अवेलेबल टू यू। 55 मॉक टेस्ट है दोस्तों हमारे पास यहाँ पे आपके लिए। डू नॉट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। करना क्या है, इस नंबर पे कॉल कीजिए, हैव अ वर्ड विद आवर काउंसलर्स, राइट, एंड avail mock test not just for CLAT but for NLU Delhi, for MHCET, for SLAT, for JAMIA, for and all entrance exams. इसके साथ ही अब मैं जो है बेटन पास करने वाला हूं निवेदिता मैम को। गाइस 97 लाइक्स पे हैं हम यार, अरे कमाल कर देते हो यार, 97 लाइक्स पे हैं, 3 लाइक्स अवे फ्रॉम रीचिंग 100। तो जल्दी से जिसने भी नहीं किया भाई फटाफट से लाइक का बटन दबा दीजिएगा, ठीक है। चलिए, ऑलराइट, सो पासिंग द बेटन टू निवेदिता मैम। थैंक यू सो मच गाइस। आपके स्कोर, हाँ स्कोर रह गए यार भाई, स्कोर बताओ फटाफट से, स्कोर क्या है आपके, जल्दी जल्दी स्कोर भी बताइएगा। व्हाट इज योर स्कोर राइट नाउ? आउट ऑफ 90 क्वेश्चंस हाउ मेनी हैव यू अटेम्प्टेड, हाउ मेनी हैव यू स्कोर्ड, ये भी आपको जरूर जरूर बताना है। चलिए, ऑलराइट, क्या बात है, 98 99 के ऊपर आ गए हैं हम, 100 हो गए लाइक्स। चलिए, बहुत बहुत बधाई। अरे सो गुड स्कोर्स, गरिमा, राहुल, खेवना, वेल डन गोपाल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शाबाश। दोस्तों जो जिसने भी ऑल इंडिया ओपन मॉक टेस्ट नहीं दिया है भाई फटाफट से ऑल इंडिया ओपन मॉक टेस्ट दे दो, बिल्कुल अपॉर्चुनिटी गंवानी नहीं है ये, इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर अस, सो मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट, ठीक है। चलिए, पासिंग ऑन द सेशन टू निवेदिता मैम, एंजॉय लीगल रीजनिंग। सेंचुरी मारने के लिए बहुत बहुत बधाई आप सभी को। चलिए, ऑलराइट, टेक केयर, बाय बाय। Am I audible, visible? Am I? Somebody tell me. Oh, great. Hi guys, how are you all? कैसा रहा तुम लोगों का GK session? I heard it was great, right? So let's start with legal without wasting any more time. If you want, you can have water or glucose or Gatorade, whatever it is that gets you, all pumped up. तुम Red Bull भी ले सकते हो, to give yourself some wings and then start for this amazing legal session. So there's an all India mock, everyone knows it. I have been emphasizing, pushing everyone to take the mocks. Now this mock is available to everyone, paid students, non-paid students, and it is imperative that you take the mock. Guys, if you take the mock, we're going to judge you on a certain criteria. Obviously, you're going to compete amongst students all over the country and you would be judged, obviously, right? And based on that, based on your performance, you would be shortlisted for a very special batch that BYJU'S has started. It's called a toppers batch, in which we deem that the toppers who need special attention, the only few things that they might be lacking in, and if that is given to them, they can actually get ranks, the top ranks. We're talking about top 20, top 30. Right, so if we think that you have the capability, the the energy and the everything that requires you to become a topper, this mock can identify that potential, and we can actually help a student with that potential. So even if you have not taken it, there is still time. It's only 2nd today, 3rd September tak ye mock chal raha hai. Do not miss this opportunity. Okay, so we have only 92 days to CLAT 24. Now everything should be kept aside. Whatever doubts you had about yourself, whatever dilemmas that you might be in, have to go now. You have to start
properly with your preparation. If you're not serious before, you have to become as serious as you can be now, क्योंकि अभी भी टाइम है, अभी भी गेम बन सकता है, पूरी तरह से बिगड़ सकता है. अभी भी अगर कोशिश करोगे तो भी क्लैट निकल सकता है, और इससे अगर 1 महीना भी और ऊपर चला जाता है, 20 दिन भी और ऊपर चले जाते हैं, तो शायद बहुत देर हो जाए. ओके, so let's have a look at legal section of CLAT 23. Actually, we have analyzed it before, but for students who did not join us in the last marathon and who did not really know what CLAT 23 was all about, this is for them. So the level of difficulty was moderate. Like, I won't judge it from my point of view, what my caliber is, obviously not, but from an average student's point of view, the section was not easy. But every student has a level, लेकिन एक wholesome picture अगर लेकर चले तो ये section बहुत easy नहीं था. The entire section revolved around the current happenings in India, recent 6-7 months में जो कुछ हुआ, जो बहुत बड़े major जो ब्रेक थ्रूज थे उनको कंसिडर किया गया. एवरीथिंग रिलेटेड टू दिस एक्सेप्ट इलेक्टोरल बॉन्ड. इलेक्टोरल बॉन्ड को मैंने बहुत पेरीफेरी में डिस्कस किया था, लेकिन बाकी सारे के सारे टॉपिक्स हमने पैसेज के थ्रू प्रैक्टिस किए थे. द पैसेज प्रैक्टिस क्लास दैट वी डू, ये सारे के सारे पैसेजेस उनमें करवाए गए थे, even during classroom programs. Electoral bond was something that I missed out on, but the passage was easy enough and students did not find it hard, right? तो हम ये मान सकते हैं कि CLAT never fails to surprise us. So the ideal mock score is not something that you can really fixate upon. The ideal mock score is anything that gets you through. That is the ideal mock score. Level of difficulty and a lot of other things determine what an ideal mock score would be. तो उससे पहले कहना बहुत मुश्किल है, right? So where was I? I was telling you about this 2023. Legal was easy in 2023. From an average student's point of view, it was a little bit difficult, moderate actually. The passages were taken from the current affairs, newspapers, Indian Express, etc. The passages themselves were not that difficult. They were very easy to read and comprehend. They were a little lengthy though, and that took students a little by surprise because the time that was taken by legal reasoning was a little too much, right? अब ये legal reasoning का यही खेल है. देखो, legal reasoning को समझना पढ़ना उतना मुश्किल नहीं होता. Law is actually a pretty fun subject. So you get to understand it and you feel like you have gained something really important. You become aware, you become legally empowered and what not. और ये सारी चीजें एक certain confidence देती हैं बच्चों में, तो वो इसलिए बहुत जल्दी पिक करते हैं इसे. लॉ को समझना उतना मुश्किल नहीं है, लीगल कंसेप्ट को रिटेन करना उतना मुश्किल नहीं है, लेकिन लीगल रीजनिंग उतनी आसान नहीं है. लीगल रीजनिंग इज नॉट जस्ट अबाउट व्हाट how much law you understand and how well you understand it. No, it's actually based on other strategies and skill set that you need to possess in order to crack this section, and one of them is good reading. If you're a good reader, an avid reader, if you have a good enough speed of reading and comprehending, then you would be able to understand and solve this section more efficiently. Another thing is the presence of mind, which is crucial in legal reasoning. It takes you by surprise, and that surprise lands you in a panic state, और ये panic state बहुत fatal हो जाती है एग्जाम में. तो जो भी करना है, मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा कहती हूँ कि जल्दीबाजी नहीं कर सकते, लेकिन बहुत धीरे भी नहीं कर सकते. बीच का कुछ हाइब्रिड मॉडल निकालना पड़ेगा. प्रैक्टिस करते करते वो मॉडल डेवलप हो जाता है. ओके, सो व्हाट डू यू हैव टू डू? यू विल बी एक्सपेक्टेड टू हैव a passage about 450 words each. It may relate to anything. Current affairs हो सकता है, static GK आ सकता है. 25 out of 13 legal mock is an excellent score. 60 to 70, देखो बहुत सीधी सी बात है. जो भी बच्चे अपने मॉक के स्कोर को लेकर यहाँ पे डाउटफुल हैं, मैं एक बात अभी क्लियर कर देती हूँ, and you remember this forever. If you are scoring somewhere around 60 and 70, okay, if you're scoring somewhere around 60 and 70, तो आप मान के चलिए कि आपका फाउंडेशन जो है वो एकदम सॉलिड है. Your foundation is completely built. That is why you are able to score this much. Okay, your foundation is pretty strong. All you need is to strategize now. You need a certain strategy to work more efficiently.
इस स्ट्रैटेजी को तुम डेवलप कर सकते हो क्लासेस के थ्रू, सेशंस के थ्रू, और ऑटोमेटिकली ये एनालाइज जो हम कर रहे हैं, बार बार जो हम एनालिसिस मैराथन्स वगैरह निकाल रहे हैं, ये इसलिए निकाल रहे हैं ताकि ये 60 और 70 का स्कोर ऑटोमेटिकली 10-15 मार्क्स बढ़ जाए। और अगर ये तुम इस एनालिसिस को प्रॉपरली यूटिलाइज करके, इफ यू कैन यूटिलाइज इट इन अ प्रॉपर वे लाइक वी इंटेंड यू टू, you can easily score or add 10 to 15 in your already 60-70. And if you do that, even if you manage to add 10 marks, you are through. You are qualifying the paper 100%. Right? So this is what the agenda of these analysis are. This is what the agenda of these open mocks are. To get you to that score, to make you capable to qualify this competition, right? So if you are at 60-70, you are about 90% there. 90% तुम्हारा एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा, 10% मेहनत तुम्हें करनी पड़ेगी, और वो इसी से होगा. This marathon exercises, the mocks that we are taking, the practice sessions that I'm bringing over to you every week, the passage practice and everything, right? So continue doing that, and you won't find it difficult to achieve that remaining 10%. Okay. So you understand the basic rules. The passages are followed by a series of questions. You need to identify the principle in the passage and then apply the principle in a given factual situation and solve. The basic idea is this only, whether it is a yes-no question or an application-based question or any other kind of critical reasoning question, like elimination, etc. Everything requires you to have an understanding of the passage through which you can infer what the passage is trying to say. If you can do that, you will be able to solve questions easily, right? So again, I'm emphasizing on the All India mock. Guys, if you really are serious about the qualification in this CLAT exam, which you are working so hard for, you need to do this. You need to take this so that you can really examine yourself on an all India or on a pan India basis. When you are sitting among so many students, there are thousands of students taking this mock, and if you sit among them, they would be your real competitors. You would be able to understand your performance, evaluate your performance actually in real sense through this. So make sure that you are taking the mock. Okay. Now moving on, let's start with the first passage. We have a lot of passages to go and 90 minutes seriously for analysis. I don't think it's a good enough time. Friday को legal actually nahi hua tha because it was starting of the month. Something was, I don't know what happened, but it is going to be every Friday from now on. So we have it next Friday, which is 8th, and then so on every Friday. Okay. Read the passage. I shall read it with you. It's about tort. You must have done it if you did the mock. Negligence is a form of tort which evolved because of some type of loss damage occurred between parties that have no contract between them, and therefore there is nothing for the party to sue another over. Okay. Right. So when there's no contractual relationship between parties, it doesn't mean that the parties cannot be sued. Obviously, there is a thing called legal duty, or duty, in simple words. So in a civilized world, in a society, you are supposed to act in a certain manner, and that is what the entire idea of duty is. The government or the system wants you to act in a certain way. That is a duty. You are supposed to do everything properly, right? So that other people do not get affected. If you're driving on road, you need to be careful. If you're doing anything, if you're doing your job, if you are treating a person, if you're teaching a person, if you're teaching, even singing or dancing to a person, you need to be careful so that the other person doesn't get hurt. So whatever it is that you are doing in any form, through a contractual obligation or through any utopian obligation, you are supposed to do it properly, and that is what a duty is. When law requires you to be careful, you have to be careful, and if you're not careful, you end up hurting somebody. Because you were not careful, we say that you have breached your duty, and the breach has resulted into some damage. That is what we call negligence. The tort of negligence in simple terms. BYJU'S versus Stevenson. BYJU'S was given, it was basically the case which interpreted or widened the scope of negligence, extended it
to people who are not directly involved. So Donahue was given a bottle of ginger beer by a friend. She consumed it. After drinking half the contents, she noticed that the beer contained a decomposing snail. She suffered nervous shock as a result. Under contract law, Donahue was unable to sue the manufacturer because the friend was party to the person who sold her the bottle, who was the retailer, the shopkeeper. There was an entire implied contract between the shopkeeper and the customer, but between the manufacturer and the customer, there is no contract, neither implied or express. And that was the problem. Ki bhai, how do you sue this person? Pitts versus Hunt is an entirely different thing. Now, House of Lords decided to take a new principle of law that stated everyone has a duty. This is the principle. We have to underline it. You see how I underline important stuff? Everyone has a duty of care to their neighbor, and this enabled Donahue to successfully sue the manufacturer for damages. So manufacturers is also legally duty bound to make sure that whatever he's creating is not harming anyone. That was the principle. Right, in order to prove negligence and claim damages, this needs to be proved. The defendant owed them a duty of care. This is a mock only we are discussing. They are not new passages. Right, students have done this mock, thus the analysis. So these are the three essentials to claim negligence. First, without a contract. Damages without contract. First, there has to be a duty which defendant owed. He breached the duty, which means he violated the duty. The claimant suffered a loss as a direct consequence of a breach. So directly because of the breach, only because of the breach, the plaintiff or the person who's claiming damages suffered a loss or suffered harm, injury, anything. So all these essentials need to be existing in order to claim damages. So the elements have been explained, also done, very good. Every person owes duty to their neighbor. Neighbor is not the person living next to you. It is everyone closely and directly affected by the act, that you reasonably have them in contemplation as being so affected. It's a very fancy language. Yeah, this explained. ठीक है, नेबर का मतलब वो नहीं जो घर के बगल में रह रहा है, not the person living next door. Neighbor is a person who you reasonably owe a duty of care to. That is what this explains. Breach is simple. Standard to determine whether the duty of care has been breached is whether a reasonable person would have acted the same in the same circumstances. I have discussed this concept numerous times in my classes, and I think students are now very well versed with it. So if a defendant failed to act reasonably given their duty of care, they'll be found to have breached it. So you're not, a person is not expected to be extremely careful. He cannot be on eggshells all the time. No. But a reasonable duty of care is expected out of him. So if you're driving on a road, you are expected to be reasonable. You're not reasonable if you're driving at the speed of 5. That is intensive care. That is not what is expected of you. But in a road which has people and other, everyone, it's a crowded road. You are expected to drive at a reasonable speed where you can control the car, people can see you coming, right? Can we focus on the session? Loss or damage as a result of breach. In this element, the claimant simply has to prove that the loss of damage was a direct consequence of the defendant's breach of duty of care. So when the defendant has to be directly liable to other person. I have explained this in the classes as well. So if my breach has affected you directly, like had it not been for my breach, the person would have gone uninjured, right? So it is only direct, सीधी line है. जैसे मैंने किसी I hit a person, or I hit a pedestrian, and he was walking a dog, and then his dog rushed to the road. The dog was run over by a truck. There was a video that was shot by someone. The video was uploaded on YouTube. Somebody somewhere in the world saw it and suffered a nervous breakdown, a cardiac arrest, and whatnot. Now I am not liable for the chain reaction that happened because of
me hitting a pedestrian. No, I am only liable to the pedestrian. That's it. That is where the story ends. That is what the element of negligence is. I am only directly liable to the person who suffered directly because of my act. Okay. Barnett versus Chelsea and Kennington HMC, casualty department doctor negligently sent a patient home and the patient died. Doctor was not found liable for damages because the patient was suffering from arsenic poisoning and he would have died no matter what the negligent doctor could have done. So if the death is inevitable, there's nothing a person can do, then of course there is no negligence. Padh liya? Everyone? Padh liya? Good. The loss itself must not be too remote, like the example I just quoted, right? It cannot be too remote. It has to be proximate, like directly related, right? Like in the wagon mount case. Wagon mount case is a very interesting case. Negligence ka mid authority hai. Oil leaked out of defendant's boat within Sydney Harbour and came in contact with some cotton waste that was there on the that had fallen in the water. अब ऑयल जो था वो पर्टिकुलर टाइप का ऑयल था, पता नहीं क्या था, कुछ देयर वाज अ लिटिल बिट ऑफ व्हाट शुड आई से, एक चिंगारी वगैरह कुछ आई, वो कॉटन वेस्ट में आग लग गई, पूरा का पूरा जो हार्बर था वो उसमें आग लग गई, राइट? द कॉटन इग्नाइटेड, द ऑयल अब्लेज कॉज डैमेज टू क्लेमेंट बाय डिस्ट्रॉइंग हिज हार्बर completely. So in wagon mount case, it was held that this is too remote of a consequence to be, to fall within someone's liability. ये forcible नहीं, this is not forcible. Okay, the oil leak is definitely something the person or the defendant would be liable for, but how could he foresee that there would be cotton floating on water and the cotton would somehow come in contact with the oil and then there would be heat being generated from the ship and all the machinery and the metal clanking and everything, and there would be a little bit of ignition and the cotton would catch fire and the entire harbor would lay to a waste. So obviously it was held that they're not liable because the consequence was too remote. तुम्हें तो पूरा कंसेप्ट ही समझा दिया मैंने नेग्लिजेंस का. दिस इज नॉट हैपनिंग इन द लेटर पैसेजेस बिकॉज ऑब्वियसली फिर हम पूरा नहीं कर पाएंगे. Let's solve the questions. An 80-year-old clock tower situated right in the middle of a market, which is a crowded area of Alphia, collapsed. Okay. So the 80-year-old clock tower has collapsed. Raven, along with many others, died. The clock tower was 80 years old, although the normal lifespan was only 40. Legal representatives of Raven sued the municipal corporation of Alphia for negligence because the tower was under their control. Now decide whether the municipal corporation of Alphia is liable for negligence. अब पहले ही decide कर लो liable है कि नहीं. अब यहाँ से देखो, मेरे हिसाब से liability है because the life of the tower is 40. You are allowing it to stand for another 40, which is anyway double its age. It is due to its collapse any day, and if it collapses right in the middle of the day or somewhere where sometime when people are around, it is bound to cause damage. This is something which is foreseeable, especially when you know that the building is in a in a dilapidated condition and it will fall down. Exactly, very good. A is the correct answer. Yes. So you eliminate the moment you realize what the options might be. A is the correct option. Good. Defendants had installed water mains with hydrants at various points. They took all the precautions against cold weather, but due to an unforceably cold winter, one of the hydrants across Stella's house developed a leak. The reason for this leak was exceedingly cold temperatures. The hydrants could not stand it. As a result, the water entered Stella's house, damaged her furniture worth rupees 4 lakh, and also caused hardship to her. She sued the defendants for negligence, whether the defendants would be liable. You want to do that? How will that be an analysis? It is not a practice session, no? It is an analysis. It is how we solve questions. So the students who find it difficult would have to learn. That's why I'm doing it. Right, so yes, and
Do you want to do it? Just read the questions and solve the read the passage and solve the questions. We can do it. I mean, if you don't want me to do it along with you. The question is the defendant liable? Can Stella sue? And the answer is no. Exactly. Very good. Absolutely correct. The defendants did not breach their duty of care. They definitely owed duty of care towards Stella. But then there was no breach. It was an act of God. More like it, right? Extreme cold weather. है ना? Good. D is absolutely correct. Question number 3. On her way home, Bloom heard the sound of collision. She got to know that an accident has occurred between a cab and a motorcycle due to the negligence of the motorcyclist, resulting in a death of the motorcyclist. She could not see anything because the ambulance had already taken the body, but she did see some blood that was left on the road. As a reaction to this, Bloom suffered a nervous shock, gave birth to a stillborn child of 7 months. She sued the representatives of the deceased motorcyclist for negligence. Wow. Decide whether the representatives would be liable. It's unforeseeable. Very good, Gauri. Yes, exactly. They won't be liable? Yes, since she gave birth to stillborn child. Okay, you're saying no, so let's eliminate this. The act was not forcible or proximate. No, since it was Bloom's fault that she chose to see blood. Of course, it is not. C. Very good. Very quick also. Good. Kuch bhi nahi hai. These are actual cases. These are actual cases. Question number 4. A and B went to C's restaurant to celebrate A's birthday. They ordered a bottle of wine. The bottle was opaque. It was impossible to see the contents inside. After consuming half the wine, A started feeling discomfort in his throat. He poured the entire wine. They realized that it had decomposed remains of a mouse. Ew. A filed a suit of negligence against C, and the manufacturer of the wine decide whether C is liable. The question is whether C is liable. ठीक है, ध्यान से. This is where, I come into picture. Now, you would have definitely thought about Donoghue versus Stevenson. And in Donoghue versus Stevenson, the manufacturer was held liable, right? But the question is not really asking you that. The question is asking you whether the owner of the restaurant is liable. So, you know what I did there? You need to really pay attention to what the question is actually asking, right? Otherwise, you would select an answer confident that you chose the correct one, and it is not correct. और तुम समझ के भी नहीं समझ पाओगे कि ये गलत कैसे हो गया. ये इसलिए गलत हो गया क्योंकि तुमने बस लाइबिलिटी देखी. तुमने कहा अरे हाँ वो तो होगा ही, डोनोग्यू वर्सेस स्टीवेंसन में लाइबल था. मैन्युफैक्चरर तो लाइबल है ही, बट द क्वेश्चन इज क्या रेस्टोरेंट ओनर भी लाइबल है ना? Yes, since A was negligent in selling an unhygienic product. Yes, since A's loss is due to C's mistake. No, since C is merely a seller and here the manufacturer is liable. No, since A should have been careful in consuming the wine. What is the most appropriate option? अब ये options confusing है. Eliminate करना शुरू करो. C was negligent in selling an unhygienic product. How do we know the product is unhygienic? It is a sealed wine. We do not know it. Yes, since A's loss is due to C's mistake. What mistake did he do? The bottle was opaque. It was opened for the first time. C could not have seen the contents like every other person in the restaurant. जब customers नहीं देख पाए तो दुकानदार भी तो एक customer ही है after all, right? No, since A should have been careful. Of course, this cannot be the only thing that remains is C. C is only a seller, right? The manufacturer is liable because he was the one who should have been careful. C भी sealed product C बेच रहा है. C is also a customer. Okay. C is correct. डोनोग्यू वर्सेस स्टीवेंसन में आप सेलर को, क्योंकि जो आइटम था वो सील था, राइट? आपने उसे घर ला के खोला. अब द शॉपकीपर वुड ऑब्वियसली से कि भाई हाउ वुड आई नो कि भाई बॉटल में क्या है. एनीथिंग दैट इज फाउंड इन द बॉटल
is not the sellers or the shopkeepers doing, because he also bought seal packed products. या तो adulteration का कोई मसला हो, या फिर खुला कुछ बिक रहा हो. Let's say that if the seller is selling loose rice or loose grain, and then you find some adulterated material in it, then definitely the shopkeeper is liable, क्योंकि item loose condition में sell किया जा रहा है. लेकिन अगर सील पैक्ड है तो फिर सेलर को भी नहीं पता कि उसके अंदर क्या है, तो लाइबिलिटी मैन्युफैक्चरर की होगी, सेलर की नहीं. और डोनाह्यू वर्सेस स्टीवेंसन में यही होल्ड किया गया था. C is the correct option. Question number 5. In order to prove negligence and claim damages, a claimant need not. इन चीजों पे ध्यान देखना. After ऑल इंडिया एनालिसिस तब होगा जब वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा. ऑल इंडिया मॉक इज स्टिल गोइंग ऑन, इट विल कंटिन्यू टिल टुमारो. टुमारो इज द लास्ट डे, एंड आफ्टर वी डू इट, आफ्टर एवरीवन हैज टेकन इट, देन वी विल एनालाइज इट. राइट, मेक श्योर दैट यू टेक इट. हाँ, तो इन ऑर्डर टू प्रूव नेग्लिजेंस क्या प्रूव करने की जरूरत नहीं है. नॉट, डू नॉट मिस दिस वर्ड. Even after so many years, I still make this mistake. You don't make the mistake. The defendant owed them a duty of care. This is an element, so this is not the answer. He breached the duty of care. This is also an element, right? So this is not an answer. Claimant suffered a loss as a direct consequence of the breach. This is third element, so this is definitely not the answer. Claimant was negligent, failed to exercise due diligence is not what you are required to prove. The defendant can use this as a defense. Right, D is the correct option. नहीं गौरी, this statement means something else entirely, something different. It means कि claimant की गलती थी और उसे diligent रहना चाहिए था, इसलिए उसे चोट लगी. ये negligence में थोड़ी prove करते हैं. हाँ, if claimant is negligent then and the defendant is negligent, then the liability would come down. It would be contributory negligence. We discussed it, remember? D is correct. Okay, so attempt, you have to attempt. See how I'm emphasizing on it. You guys have to take it. Okay, if you want to become part of the toppers batch, the esteemed toppers batch, you should remember that last year Belinda and the girl who qualified ALET with 18th rank, and the guy, then the students I just interviewed this time, this NHS, and the other one also, I cannot recall the name. They were all part of toppers batch. तो ये बैच अच्छा, बहुत important बैच है, और तुम eligible कैसे होते हो इसके लिए, ये ऑल इंडिया मॉक के बाद पता चलेगा. Now passage number 2, you read it, or I should read it. The Citizenship Act 1955 provides 5 ways to acquire citizenship of India. 5 ways. ये है 5 वे: birth, descent, registration, naturalization, incorporation of territory. Right? Pretty straightforward words. ये हैं 5 तरीके जिससे इंडियन सिटीजनशिप को गेन किया जा सकता है. Birth, if a person is born in India after passing of the bill, which bill? The this bill will be considered as an Indian citizen till the date of 1st July 1987, irrespective of the nationality of his parents. After this major amendment took place, a person will be considered as an Indian citizen only when either of the parents were citizen of India at the time of his birth. Then we have descent, a person born outside India after the commencement of the constitution, but before December 1992 would be considered as an Indian citizen if his father was an Indian citizen at the birth of time. They made it so complicated. Anyhow, complicated passages bhi aa sakte hain. So a person born on or after 10 December 92 will be considered as an Indian citizen if either of his parents are Indian at the time of his birth, even if he is not born in India. Simple. Yeah. Then we have registration. The central government may on an application register as a citizen of India any person not being an illegal migrant if he belongs to any of the following categories.
Sorry. Yeah, the central government may on an application register as a citizen of India any person not being an illegal migrant if he belongs to the following categories. What are the categories? A person of Indian origin who is ordinarily resident in India for 7 years before making an application for registration. Origin मतलब उसके ancestors Indians थे. Okay. A person who is married to a citizen of India and is ordinarily resident in India for 7 years before making an application for registration. Fair enough. Ancestors Indian है या फिर किसी भारतीय से शादी करी 7 साल तक इंडिया में हो तो registration के लिए अप्लाई कर सकते हो. Then we have naturalization. Central government may grant certification of naturalization to any person not being an illegal migrant if he possesses the following qualifications. He is a citizen of any country. He undertakes to renounce the citizenship of his country in the event of his application for Indian citizenship being accepted. So it is a deal that he kind of makes with the Indian government that I'll renounce my citizenship if you give me yours. He has an adequate knowledge of language specified in the 8th schedule of the Constitution. So 8th schedule lists down certain languages. Can anybody tell me the number of languages that are there in 8th schedule? 8th schedule में कितनी languages हैं कोई बता सकता है मुझे? $23. Are you 100%, 100% sure? Elora says 22. Confirm kar lo. Confirm kar lo. I'll give you time. Do we have a national language? 23 or 22? Do we have a national language? I just need a yes or no. 51? What? It is 23. We have 23 languages. We don't have a national language. Very good. That's what I wanted to hear. We don't have a national language. And this is a common mistake that people make. We have a national flag, we have a national song, we have a national animal, but we don't have a national language. We cannot. India is a diverse country. There cannot be a national language. We have official language. It is English. Okay. Yeah. Moving on. By incorporation of territory, so if any territory outside of India becomes part of India, then their citizens automatically become Indian citizens from the date of the accession. Right? 3 ways by which citizenship can be terminated are renunciation, termination, and deprivation. So renunciation means any person with majority and capacity can declare to renounce his citizenship. Termination, when a person with his knowledge acquired citizenship of any other country. So India does not provide, dual citizenship. If you have taken citizenship of another country, you have automatically renounced the citizenship to your country. That is termination. It is automatic. Renunciation is basically a conscious effort to renounce your citizenship, right? So I'm no longer the citizen of India, I renounce it. There are Vampire Diaries in this, okay, characters, okay. I'm excited too in that case. Deprivation, it is a compulsory termination of Indian citizenship by central government. According to the passage, a person married to a citizen of India can acquire citizenship through which? Birth, descent, naturalization, registration. बहुत आसान है, जल्दी से बता दो. जल्दी से. The answer is termination is end. That's it. It's an automatic end. For example, let's say that you enter into a contract with an architect, and as soon as he gave you the designs and everything, the contract is terminated automatically. Something that comes to an end automatically. Registration and naturalization, I am confused. मैं ही confused हो गई.
It is C or D? Let me see the passage. अरे हाँ registration, you're right. I made a mistake. Registration, this citizenship thing, no? It is registration. You're right, guys. You're right. It is registration. Of course. Yes. D is correct. Very good. Very good. I like when my students outsmart me. Oh, you're right, Pranjali. Yes, Vampire Diaries characters. Caroline is highly inspired by the culture and tradition of India. She takes a lot of interest in the Indian social, economic, and political environment. When she visited India, she was not allowed to vote in elections because under the constitution, some rights are granted only to Indian citizens and are denied to foreign nationals. Which of the following are exclusively granted to Indian citizens? Right against discrimination, right to equality of opportunity, public employment, right to life and personal liberty, equality before law. D. Why are you saying cannot be determined? सिंपल ये फंडामेंटल राइट्स है ना. क्वेश्चन तुमसे पूछ रहा है कि कौन से फंडामेंटल राइट्स सिर्फ सिटीजन्स के पास हैं. एक्चुअली इस सिनेरियो में why I want you to answer. Cannot be. She is not. Arey, this is not the question. The question is this. It is not related to Caroline. The question is in general. Which of the following are exclusively granted to Indian citizens? It's a general question. इसे knowledge based questions कहते हैं. ये भी आ जाते हैं. 1 2 3 4 ये सब सिर्फ Indian citizens को grant है. Are exclusively की बात हो रही है. Only. It means only. Which of the following fundamental right is only granted to Indian citizen? ऑप्शन में है ही नहीं आंसर. It's not D. It has to be D. It's D. Tanveer is right. Cannot be determined. You know why it cannot be determined? Because the correct answer is 2 only. Only 2. Cannot be determined भी नहीं कर सकते. You can obviously determine. Question गलत है. Option गलत है. D भी नहीं हो सकता यार. You can definitely determine कौन सा right provide किया जाएगा. Right against discrimination ऐसा लगता है Article 23 and 24. I don't know if students read it properly. It is available to all human beings. Right? It uses the word humans, not person, not citizen, not anything. Article right to life and personal liberty use every person. Equality before law uses every person. Right to equality of opportunity, which is Article 16, uses citizens of India. Right, this is the only article in this category which is available only to the citizens of India. Right against discrimination is available to all human beings, even illegal migrants. Right, so यही सही है बस. ऑप्शंस ही गलत हैं. क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन तो सही है बट आंसर्स नहीं दे रखे. Yep, 23 and 24 are right against exploitation. हाँ, D होगा. सही है. Cannot be determined. Very good. सेकेंड ऑप्शन cannot be. कोई भी ऑप्शन नहीं है इसमें. सिर्फ 2 ही सही ऑप्शन है. सी में से किसी में नहीं, तो cannot be determined ही हो सकता है इसका आंसर. ओके. Your first answer, but your first answer was based on an incorrect reasoning. Tanveer, द आंसर के पीछे रीजनिंग भी जरूरी है. तो तुक्के से सही लग गया तुम्हारा, क्योंकि तुम क्वेश्चन को नहीं समझ पा रहे थे. राइट, लेकिन अगर क्वेश्चन को समझ जाते तुम तो भी तो गलत हो जाता. Damon is a citizen of India. It is compelling me to watch Vampire Diaries, something that I have never
wish to watch. Damon is a citizen of India. He was always very inspired with the culture and tradition of country X. He always wanted to be a citizen of that country. My God, some passion. On attaining majority, he acquired citizenship of country X, as a consequence of which his Indian citizenship was terminated. In light of these facts, according to the Citizenship Act 1955, provide which of the following ways citizenship can be terminated? Renunciation, deprivation, termination. It's fun. D, all of the above. Are you sure? 100%. It is D. Yes. Deprivation, termination, and renunciation. We just discussed it. D is absolutely right. Question number 4. With the hardcore Vampire Diaries fan and cannot get the spelling right. What is wrong with you? It's Elena. It's not Elena. Anyhow, Elena is very inspired by Indian culture and tradition. बड़ा अच्छा culture है हमारा, लोग inspire हो सकते हैं. She even learned Indian classical dance, Bharatnatyam, and Bengali language. She always wanted to acquire Indian citizenship, for which she contacts you, in order to know the ways by which an individual can acquire an Indian citizenship. तो ये तुम्हारा फ्यूचर है. तुम वकील बन चुके हो, एक एलेना नाम की लड़की आती है और तुमसे पूछती है मैं भारतीय सिटीजन बनना चाहती हूँ, कैसे बन सकती हूँ. Do not do it for free. Charge for the legal counsel. Right? Under the Citizenship Act 1955, a total of 5 ways are provided through which an individual can acquire Indian citizenship. In the light of these facts and according to Citizenship Act 1955, suggest Elena which of the following is not one of the ways to acquire Indian citizenship. तो हमें तरीके तो बताइए. Birth, descent, naturalization, registration, and there was one more. What was it? Birth, descent, registration, naturalization, और 5वां क्या था? इतनी शॉर्ट टर्म मेमोरी क्यों हो रही है मेरी? बता दो जल्दी से, तुम्हें याद होगा. I am not returning to the passage. You tell me. She wouldn't be a vampire. I mean, in the real world, Elena, Damon, Stefan, they won't be vampires. Vampires don't exist. I know, I have tried finding them. Right, so which is not registration, descent, nationalization, birth. यही तो बोला मैंने. 5वां क्या था? Incorporation of territory. Thank you, Gauri. Yes. So birth, descent, nationalization, friendly relations with other countries. How cool. Suddenly you are, citizens of so many countries. India is pretty friendly. So yeah. D is absolutely correct. Descent, nationalization, registration, incorporation of territory. Birth bhi hai. Question number 5. An Australian citizen married be a citizen of India. She can get Indian citizenship via. तो बहुत आसान है. We just did it. The correct answer is yes. Go on. Registration. Remember, मेरा गलत हो गया था और तुम लोगों का सही हो गया था. तो कैसे हुआ था? ऐसे ही तो हुआ था, क्योंकि तुम्हें याद था. Naturalization थोड़ी, registration, guys, come on. Naturalization is something else. Right, now passage number 3. क्या बात है यार, you are at a very good speed. I think we would be able to finish all the passages. Section 2G Indian Contract Act. Agreement not enforceable by law is said to be void. I seriously hope that you have these concepts clear in your head. Like, what is a contract? What is an agreement? How does the journey of agreement to contract begin? And how does it end? What are all the milestones that an agreement has to achieve in order to become a contract? Right, so what is a void agreement? What is a void contract? And what is void ab initio? What are the ways in which contract can become void? What are the agreements that are void because of their nature? Right, so void agreements की भी category है, तुम्हें सब पता होना जरूरी है. कुछ agreements void ab initio होते हैं, लेकिन सारे agreements void ab initio नहीं होते. कुछ ही agreements void ab initio होते हैं और बाकी agreements void होते हैं और वो किसी वजह से void होते हैं. राइट, सो ये सारी
सब पढ़ा चुकी हूँ मैं, आई नो, सब पढ़ा चुकी हूँ मैं। तो अगर क्लियर नहीं है तो अभी भी क्लियर कर सकते हो, क्योंकि अभी भी मैं पढ़ा रही हूँ, आई एम स्टिल टीचिंग, राइट? So if at all there is a concept relating to this basic contract which is not clear to you, you need to ask it during the classes, right? A void agreement is void ab initio agreement, not at all, sorry, I have no agreement at all from its very inception. An agreement with a minor or an agreement without consideration. Void agreement never amounts to a contract. Fair enough. As per section 2G of the Act, a contract that ceases to be enforceable by law becomes void when it ceases to be enforceable. We understand this already. A void contract is valid when it is entered into, but subsequent to its formation, something happens and that makes it unenforceable. Some of the provisions pertaining to void agreements are provided under the Act. We have discussed them. Agreement in which part of consideration or object is unlawful. The basic essence of the statement is that if the consideration as a whole or in part is unlawful, or if the end product of the agreement is illegal, then the agreement is declared void. हम ये discuss कर चुके हैं. The contract would, however, be considered valid after deleting the unlawful clauses. ये भी depend करता है. This is also subjective. I mean, if the clauses are so, intricately woven against each other that they cannot be separated, फिर तो वो नहीं किया जा सकता delete, right? Illegal consideration, illegal motive, you mean object? Yeah. Agreement without consideration, section 25 of the Act mentions that all agreements devoid of consideration would be declared void unless they fall into following categories. The exceptions are: if the agreement is expressed in writing and registered under the law and is made on account of natural love and affection between parties standing in near relation to each other, right? Near relation को interpret किया जा चुका है. So near relation is even a, not just a blood relation. It's mental, affectionate. Then the person has already done something voluntarily for the promisor. Promise made in writing, signed by the person. पढ़ लिया सबने? Everyone done? जल्दी. I'm hoping you're done. Good. Restraint of marriage. This is a void agreement. Section 26 mentions. अब देखो इसमें और इसमें अंतर है. Agreement without consideration is kind of an agreement which is void ab initio, right? Agreement whose consideration or object is unlawful, again, is an agreement which is void ab initio. But agreement in restraint of marriage is not void ab initio. Okay, it has all the essentials of an agreement, but the object is not something that is, that should be allowed. That is something. Basically the object of the agreement is violative of a fundamental right or a civil right that the Constitution has provided to its citizen. तो ये void ab initio की category नहीं होती है, but ये agreements void होते हैं. These are also void. They are void only. Section 26 mentions that all agreements in restraint except in restraint either partial or full, both. Just say in UK, England, the contract law of England provides that a partial restraint of marriage can validate an agreement to make it a contract. But in India, whether the restraint is partial or full on a marriage, except with a minor, is completely void. Right? So we have discussed it in detail. I'm sure you understand what this restraint is, what is the scope, and what is the true meaning of section 26. Restraint of trade, again, it is violative. That was violative of article. Can anyone tell me कौन से article को violate करता है ये agreement? बता दो जल्दी से. Prenups. Prenuptial agreement are not recognized in India anyway. Very good, Gauri. That's what I was waiting for. Very good. Gauri is on fire today, completely. Right. So, which article does this violate? Fundamental right.
Prenups are not really banned in India. Very good, Nandita. Article 19. Like I said, these void agreements are, in the nature of violating a fundamental freedom. That is why they're not allowed. Yeah, so this is dealt with under section 27. The freedom to practice any form of trade and occupation is a fundamental right guaranteed by the Constitution. Hence, any agreement in restraint of trade and occupation would be deemed as void. The restraint can be both partial and complete. They are, however, two. Very good. It has two exceptions. Yes, the sale of goodwill and the partner's agreement. So the seller's goodwill of a business can be restrained from carrying on a similar business within specified local limits, so long as the buyer or any person deriving title to the goodwill carries on a like business therein, except the restraint is reasonable in point of time and space. Then we have partners agreement. An agreement in restraint of trade among the partners or between any partner and the buyer of the firm's goodwill is valid. ठीक है, पढ़ लिया हमने. You already have an idea. We have discussed it like really well. Chalo, questions pe I'm not jumping, right? You can do the questions. Can you? Can't you? I'm assuming you can. Which of the following statement is correct in relation to the term void contract? Correct की बात हो रही है. Void contract के relation में कौन सा statement सही है? Void contract is ab initio. That is no agreement from the very beginning. Void contract is valid when it is entered into. Subsequent to its formation, something happens which makes it. It is given. Agreement is restraint of marriages is an example of void contract. Yeah. So, D. Really? What? Why? I never said, I never taught this. मैंने तो पढ़ाया भी नहीं कभी. क्यों भाई, जो एग्रीमेंट फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है वो एनफोर्सेबल हो जाएगा. वो कॉन्ट्रैक्ट कैसे बन सकता है? हाउ डू यू इमेजिन, हाउ डिड यू इमेजिन दैट इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट? An agreement which is enforceable by law is a contract. An agreement, due to its very nature, is violative of a fundamental right, can never be enforceable. It is not a contract. It is a void agreement. It is B. This is not correct, and neither is this. And because of this, this is also incorrect. B is the correct answer. It's absolutely wrong. अरे तुम कितना कंफ्यूज हो गए भाई. Not right. काट लो अपना एक नंबर. This wasn't tricky. This was a basic clarification of concept. I think it's only Garema who understood the concept. Right? So do not confuse void agreements with void contracts. अगर कॉन्ट्रैक्ट लॉ को उनको वॉइड कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी में रखना होता तो तुम्हें अजूम करने की जरूरत नहीं पड़ती. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बहुत अच्छे से क्लैरिफाई कर देता है ये कि अरे ये तो एग्जाम्पल है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का. ये तो अपना तुम्हारा कुछ नया इंटरप्रिटेशन है. प्लीज कभी किताब लिखने बैठ जाओ तो इस इंटरप्रिटेशन को मत लिखना, ठीक है? दिस इज अ बेसिक what should I say? It's a blunder. It's actually not understanding the basic concept of agreement and contract. Now, Mr. A promises to superintend on behalf of Mr. B legal cultivation of indigo and illegal traffic in other articles. Mr. B promises to pay Mr. A salary of 10,000 per annum in this given situation. Which of the statement is true? आगे पढ़ लेते हैं. The agreement is void as the object of Mr. A's promise and the consideration of Mr. B's promise is in part unlawful. The agreement is valid as the object of Mr. A's promise and the consideration of Mr. B is in part lawful. The agreement is voidable as the object of Mr. A's promise and the consideration of Mr. B's promise is in part unlawful. बहुत confusing है ये, बताओ. बताइए. Just confusing, but I'm really excited to see your answer. Okay, A, you guess. IG is I guess, right? Am I correct? A? Are you completely sure?
A seems correct. A is correct. Yes. The agreement is void. As simple as that. There is nothing that can, rebut this argument. And nothing else matters. बस ये देखो तुम, the best way to answer these kinds of question is, that this agreement is void. It is not a contract. It is void. End of story. Just see what the options are. The agreement is valid. ये सही हो ही नहीं सकता. The agreement is voidable. Absolutely not. None of the above. No, it is not fitting. इसी reasoning पढ़ लो. Does it fit the passage? The object of Mr. A's promise, consideration for Mr. B's promise, is in part unlawful. Part absolute, everything is unlawful. Even if it is part unlawful, the agreement will be void. So A is the correct option. Which among the following statement is correct in reference to the term void agreement? An agreement not enforceable by law is said to be void. An agreement in restraint of marriage of a minor is a void agreement. An agreement of which the object is unlawful is void. C. Very good. This is correct. An agreement which is not enforceable by law is void. Definitely. An agreement of which the object unlawful is also void. ये तो void थोड़ी है. This is valid. Child marriage is an exception, no? 1 and 3. C, absolutely correct. Very good. ठीक है. Question number 4. Mr. Mr. Z, for natural love and affection and for no consideration, orally promises to give his son, Mr. S, rupees 10 lakhs. After 2 months, Mr. S asked for the promised amount. Z refused. In the given situation, which of the following statement is true? हाँ, अभी रॉन्ग है क्योंकि माइनर है. बिल्कुल सही. कौन सा स्टेटमेंट सही है? पढ़ लेते हैं भाई. कौन सा स्टेटमेंट सही होगा? Mr. C is not liable to pay the said amount. Mr. S has the agreement. The agreement is void for want of consideration. Mr. C is liable to pay Mr. S as the agreement is valid on account of natural love and affection. Mr. C is liable to pay the said amount as the parties stand in near relationship. Mr. C is not liable to pay as there was no legal intention to enter the contract. अच्छा मुझे बताओ पैसेज में कहीं इंटेंशन डिस्कस की है? You're not wrong. You're not wrong. You're really not wrong. But do you really think the passage has enough information to give you the idea or even the facts? Do you think the facts are, strong enough to substantiate Mr. Z's claim of intention? Facts में है ये information कि भाई intention नहीं थी Mr. Z की. देखो मेरी बात मान के चलो. I understand that you guys have pretty clear concepts. I'm really glad that you could arrive at an answer like this. ठीक है, intention तो मैं याद रहा और यहाँ पे वाकई intention समझ नहीं आ रही है. लेकिन you are after all a student of 11th and 12th. You are a child. And the consortium won't make the question overly complicated. You have been taught, you have been mentored, you are given this information, but not everybody has it, right? Besides, the passage is not really talking about intention. In any which way, there would have been a mention of intention somewhere as an element or anything. तो इस आंसर पर हम आ सकते थे. लेकिन पैसेज से, क्वेश्चन से इंटेंशन कहीं दूर दूर तक नहीं है. आप अजूम भी नहीं कर सकते. पैसेज के मैंने क्या बताया था? When there are two options that seem correct, you go with the option that is closest to the passage. Both these are correct, mind you. Okay. Both of these are correct. दोनों ही सही हैं. लेकिन दोनों में सबसे क्लोज कौन सा है पैसेज से? बी है कि नहीं? इसीलिए बी होगा. क्यों? बी ही है. व्हाट्स रॉन्ग विद बी ऑप्शन? बी इज द करेक्ट ऑप्शन. इसमें क्या ए दे रखा है? अरे नो, इट इज रॉन्ग.
इट्स बी। ओके, उसने ये तो क्लियर कर ही रखा है, नेचुरल लव एंड अफेक्शन। आंसर तो गलत भी हो सकता है ना बच्चे। आंसर गलत हो सकता है, ठीक है, चिंता मत करो। आई नो इनफ टू डिक्लेयर कौन सा आंसर सही है कौन सा नहीं है। यहाँ बी सही है। इफ यू हैव आंसर्ड बी इट इज करेक्ट। ओके, द क्वेश्चन क्रिएटर कंफ्यूज हो गया होगा। मिस्टर जी फॉर नेचुरल लव एंड अफेक्शन, इट इज मेंशन्ड वेरी क्लियरली। अगर ये मेंशन नहीं होता तब हम कहते कि हाँ चलो इट इज यू नो द अग्रीमेंट इज void for want of consideration, but the question has already incorporated the exception clause, so obviously the exception is going to apply, right? Did you understand what I told you? I told you when there is a confusion between two options, you choose the answer which is closest to the passage. In both these options, B is the closest, isn't it? D is not close to the passage, so even if it is a right option answer, it will not be a right option. Got it? No, it's B, don't worry, it's B. ठीक है, even the creators may get confused. देखो अब उसने exceptions भी दे दिए। हाँ वैसे, अरे हाँ ये भी तो है, ये भी तो बात है। दिस इज नॉट entirely right, ये तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो गया क्वेश्चन। नेचुरल लव एंड अफेक्शन में देर आर कंडीशंस, राइटिंग, रजिस्ट्रेशन एटसेट्रा, but then they're not mentioned in the contract. Now even I am confused. दे रखा है क्या इसमें? This passage is not giving enough information. The restraint of marriage agreement without consideration नहीं दे रखा। अच्छा नहीं दे रखा है, my bad. A है सही। The question is not ambiguous. I missed it. मैंने मिस कर दिया, कोई बात नहीं, अब मिस कर दिया, अब ध्यान दे लो। क्वेश्चन 3 का आंसर नहीं, 4 का आंसर A है, it's not B. A. I wasn't careful. There are certain students who answered correctly. It's just an oral promise. Orally promises. Natural love and affection में writing and registration compulsory होता है। मुझे लगा passage में नहीं है तो हम इस चीज को consider नहीं करेंगे, right? So obviously it is certain, नहीं कोई ambiguity नहीं है। There is no ambiguity. It is clearly given in the passage, and even in the question it is very clearly written कि oral promise है, there is no writing, there is no registration, so this agreement will not have a force of contract. A is right. The creator was correct. I was wrong. A सही है. They're not different statements. कोई बात नहीं. अभी there is a scope of making mistakes. I can make mistakes. You can make mistakes. The point is that we will be careful next time, ठीक है? Now, question number 5. Mr. X is a famous chef, runs his restaurant in the Z region of the state, D. अच्छा, Z region है और D state है. This is confusing. I hope they are not important later on. ये नहीं, डी नहीं हो सकता दृष्टि, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि डी क्यों नहीं हो सकता, और अगर आपको अभी भी क्लियर नहीं है तो वापस से देख लो डी क्यों नहीं हो सकता, ठीक है? मिस्टर एच, एन एंटरप्रेन्योर, वाज लुकिंग टू एस्टैब्लिश हिज फूड चेन, ऑफर टू बाय मिस्टर एक्स's business in its entirely with the condition that Mr. X cannot enter the business of food restaurant in the Z region either directly or indirectly. Mr. X agreed to the same but was forced to return to business due to pressing demand of his loyal customers. He starting operating from his house situated in the Z region, अच्छा Z region में है, region sorry, to build back the business given situation. Which of the following statement is true? कौन सा statement true है? हो गया clear? Everyone read it? आगे बढ़ जाएं? Good.
The options Mr. X has breached the contract of the agreement entered between X and Mr. H is valid. मुझे तो अग्रीमेंट ही अनरीजनेबल लग रहा है. पूरे रीजन में ही तुम खाने का किसी इंडस्ट्री में नहीं वो कर सकते. Mr. X cannot be sued as the agreement entered between Mr. X and H is voidable at the instance of Mr. ये तो हो ही नहीं सकता. Right, voidable तो है ही नहीं. Mr. X cannot be sued as the agreement entered between Mr. X and H is void as it is an agreement in restraint of trade. What do you think? Vicinity, region. C is the answer because you think that the restraint is unreasonable. उसने स्टेट में नहीं रोका है, उसने सिर्फ रीजन में रोका है. सही मैं भी सोच रही थी, सोचने वाली बात है. उसने स्टेट में नहीं रोका है. सेक्शन 27 क्लियरली कहता है कि भाई आप रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगा सकते हो गुडविल के मामले में. ठीक है, जैसे पर्टिकुलर रीजन या पर्टिकुलर विसिनिटी में आप ट्रेड नहीं करोगे. तो ये बहुत ही क्लियर है कि भाई जो रिस्ट्रेंट है वो सिर्फ और सिर्फ जी रीजन में है. राइट, अगर पूरे स्टेट में लगा देता कि स्टेट में ही नहीं कर सकते तुम काम, तो ये अनरीजनेबल होता. राइट, तो ये वैलिड है, इसलिए इट इज वैलिड. I was also a little reasonable time and space. Exactly. I was a little confused. मेरा क्वेश्चन गलत हो जाता है, आई एम श्योर. नहीं, सही हो जाता. मैं अपने इंस्टिंक्ट के साथ जाती तो यही मार्क करती. ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़े से कंफ्यूजिंग होते हैं. अब इनका कोई सोल्यूशन नहीं. इनका ये किसी को भी कंफ्यूज कर सकते हैं बिकॉज दे बिकम सब्जेक्टिव. राइट, किस तरह का रिस्ट्रेंट कौन सी सिचुएशन में रीजनेबल होगा. जैसे जी रीजन दे रखा है, डिस्ट्रिक्ट नहीं दे रखा, एरिया नहीं दे रखा, लोकेलिटी नहीं दे रखा. इट इज रीजन. रीजन कैन बी एनीथिंग. रीजन पूरी सिटी हो सकती है, पूरी डिस्ट्रिक्ट हो सकती है, कस्बा हो सकता है, टाउन हो सकता है. राइट, तो ये कंफ्यूजिंग है. इतना कंफ्यूजिंग क्वेश्चन कंसोर्शियम के थ्रू नहीं आना चाहिए, लेकिन अगर आता है तो सेफ बेट यही है कि हाँ ब्रीच हो गया है. राइट, रीजन मान के चलो कि छोटा ही एरिया है. ओके, इसमें भी यही दिया हुआ है, रीजन जेड ओनली. रीजन को थोड़ा डिफाइन ही कर देते. खैर कोई बात नहीं किया तो. पैसेज नंबर 4, सेक्शन 10. ओके, सेक्शन 10 ऑफ सीपीसी. ये 2020, आई थिंक इन 21 they had a passage on res judicata. 21 और 22, मतलब था 21 या 22, दोनों में से किसी में रेस जुडिकाटा पे था पैसेज. चलो पढ़ लेते हैं. Section 10 of the Civil Procedure Code, hereinafter mentioned as CPC, is based on the principle of res sub judice. It's a similar concept, a little different than res judicata. It is in section 11. This is in section 10. Chalo. I hope the passage is not too complicated. The object of the prohibition is contained in section 10 is to prevent a plaintiff from instituting two parallel suits to deter different judgments on the same matter in the issue. However, section 10 does not prevent the court from dealing with the subsequent suit for any other purpose. Basically, idea ये sub judice का मैं समझा देती हूँ. Two court similar jurisdiction, right? Similar jurisdiction, जैसे कोर्ट ए और बी बिल्कुल इक्विवेलेंट है, बस इनमें दो चीजों का फर्क हो सकता है. दूसरा एरिया हो सकता है, दूसरा जैसे in a particular district there are number of civil courts. Civil court number 1, civil court number 2. Right, so all have similar jurisdiction. They all have absolutely similar powers. Everywhere in India, civil courts have similar powers, except in metropolitan cities. And of course, state का size भी matter करता है. राइट, तो एक कोर्ट से उसे जजमेंट अच्छा नहीं लगा तो उसने बी कोर्ट में इंट्रोड्यूस कर दिया. अब बी कोर्ट ने भी जजमेंट दे दिया. प्रॉब्लम ये आ जाती है यहाँ पे कि भाई दो सिमिलर कोर्ट से दो अलग अलग जजमेंट आ गए, कौन सा इन्फोर्स किया जाएगा. बी की बात मान लोगे तो ए की जो अथॉरिटी है वो अंडरमाइन हो जाती है,
ए की मान लोगे तो बी की अंडरमाइन हो जाती है। ऐसी सिचुएशन में इस प्रैक्टिस को प्रोहिबिट कर देता है सीपीसी। आज से क्लैट की तैयारी शुरू कर दो। बिल्कुल बिल्कुल कर दीजिए। मैं थोड़ी मेहनत ज्यादा लगेगी लेकिन कर तो सकते हैं ऑफ कोर्स, है ना। is my video paused or something? No, okay, yeah. So this is what res sub judice is. The object is merely to avoid multiplicity of suits and to reduce the burden on courts. Section 10 reads as follows: no court shall proceed with the trial of any suit in which the matter in issue is also directly and substantially in issue in a previously instituted suit between the same parties or between the parties under whom they or any of them claim litigated under the same title, where such suit is pending in the same city or any court in India have jurisdiction to grant the relief claimed, or in any court beyond the limits of India established or continued by the central government or having like jurisdiction before the Supreme Court. Now, mind you, complicated passages such as this, these are complicated civil concepts. Normally something that I don't really dwell into because I don't think they should be taught. They create unnecessary complexity in a child's head. But a fair idea, is never a harm. What I'm trying to say is कि अगर इस तरह का कोई complicated concept या कुछ भी आ जाता है जो बहुत पढ़ने में समझ नहीं आ रहा है तो questions easy होंगे, तो उसे देखिए डर मत जाना, right? This is a way to scare you in the first go. And when you do the questions, you would find those questions to be easier than all the questions that are there in legal reasoning. Okay, that's what I'm hoping in this passage too, but let's see. Explanation to section 10 states that the pendency of a suit in a foreign court does not preclude the courts in India from trying suit founded on the same cause of action. Thus, the following conditions must be satisfied for res sub judice or section 10 to apply. What are the conditions? There must be two suits, one that is already instituted and the other which is subsequently instituted. जो subsequent suit होता है उस पे उसको रोक दिया जाता है. ओके हाँ, मैंने कहा ना प्रियंका, आप कर सकते हैं. क्लैट की तैयारी यूट्यूब से हो जाएगी? नहीं, यूट्यूब से नहीं हो पाएगी. The subject matter and the issue in the subsequent suit must be directly and substantially the same as the issue in the previous suit. The subject matter is the dispute, the cause of dispute. जैसे property हो सकती है, कोई relation हो सकता है. The reason of dispute basically, ठीक है, उसे subject matter कहते हैं. For example, two people fighting over a property, that property is the subject matter. Two suits must be filed on behalf of the same parties or their representatives. The parties need to be same in both the suits or their representatives. The earlier suit must be pending in the same court in which the subsequent suit is brought, or in any other court in India or any other court outside the limits of India established or continued by the central government or before the Supreme Court. Then we have the court in which the previous suit is instituted must be competent and have the jurisdiction to grant the relief sought in the subsequent suit. The parties sorry, the parties must be litigating under the same title in both suits. It is to be noted that where the conditions under section 10 are fulfilled, the court does not have any discretion but to stay the suit. जैसे ही 10 की conditions fulfill हो जाती हैं, subsequent जो court है उनको they have to stay the suit. They cannot continue it further, and it is not a discretion. They cannot continue it because they want to. It is mandatory for them to stay the proceedings. The provisions of section 10 do not become inapplicable if the court determines that the previously instituted suit is vexatious or was brought in breach of the contract terms. Okay, so the previously instituted suit was, that had the element of collision where the parties
with the lawyers basically, collusion not collision, collusion, जहाँ पे कुछ उल्टी सीधी हरकत हो गई है या कुछ भी, कोई भी ऐसा बायस एलिमेंट जिसकी वजह से जजमेंट फेवर में नहीं आएगा, अगर इस तरह का कुछ है या कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स ब्रीच कर दिए गए हैं, फॉलो नहीं किया, तो फिर ऑफ कोर्स सब्सीक्वेंट सूट कैरी ऑन कर सकता है। अब आते हैं क्वेश्चंस। मिसेस ए, द वाइफ ऑफ मिस्टर बी, फाइल्ड सूट फॉर सेपरेशन ऑफ कॉन्जुगल लाइफ एंड कस्टडी ऑफ अ माइनर चाइल्ड अगेंस्ट हर हस्बैंड मिस्टर बी। Subsequently, Mr. B claimed custody of the minor child by filing another suit against his wife, Mrs. A. बताइए, in the given situation, which of the following statement is true? Second suit is liable to stay under 10. Second suit is not liable to stay under section 10. It is not liable to stay under section 10 if it is approved by Mrs. A. None of the above. What is the answer? It's a very straightforward answer if you ask me. A. Like I said, पैसेज कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है लेकिन क्वेश्चंस बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे, सिंपल होंगे। इट इज ए, देयर इज नो डाउट। ठीक है, ए है। सेकंड सूट इज लायबल टू स्टे। पहले सूट का कोई जजमेंट नहीं है, सेकंड सूट कैसे कर दिया तुमने? पेंडेंसी के दौरान ही। ठीक है, गुड। Question number 2. Mr. B, residing in New Delhi, has an agent, Mr. A, in Mumbai, employed to sell his goods there. Mr. A filed a suit against Mr. B in Mumbai over a dispute over money. During the pendency of the suit in Mumbai court, Mr. B institutes a suit against Mr. A in New Delhi, claiming money from Mr. A. In the given situation, which of the following is true? इसे ठीक से पढ़ लो फिर से। रेस सब जूडिस का प्रिंसिपल है, रेस जूडिकाटा नहीं है। रेस जूडिकाटा में जो पहला वाला सूट है वो डिसाइड हो चुका होता है, ये डिफरेंस है। रेस सब जूडिस में द फर्स्ट सूट इज पेंडिंग, रेस जूडिकाटा द सूट हैज बीन सेटल्ड, द रेमेडी हैज बीन डिलीवर्ड। Done. The second suit is not liable to stay under section 10 as the matter in issue in B suit is not directly and substantially the same in A suit. क्या है matter issue? पहला है dispute over money, second में claiming money from Mr. A. The second suit is liable to stay under section 10 as the matter in issue in B is not directly and substantially the same in A suit. Huh? Not. The second suit is not liable to stay under section 10 as the parties to the suit are different. लेकिन B तो गलत है। Second suit is liable to stay under section 10 as the matter in issue is in B suit is not directly, तो फिर तो stay नहीं लगेगा ना, अभी तो not है। इसमें तो not liable to stay हो जाएगा क्योंकि directly नहीं है, इसमें तो गलत है, ये ऑप्शन ही गलत है, या तो ये गलती से डाल दिया, ये गलत है ये ऑप्शन। The statement is not making sense. Do you understand what I'm saying? Second suit is liable to stay. It is liable to stay because the matter is directly and substantially the same. और ये तो हो ही नहीं सकता। The suit is definitely liable to stay. The matters are this matter in issue the same. The subject matter is the same. The parties are the same. Courts are the same. मतलब not the same within the same jurisdiction, but they are, the same only. बी भी नहीं हो सकती, है ही नहीं, गलत है ये क्वेश्चन, इसको हटाते हैं। यहाँ पे नॉट नहीं होना चाहिए था, इस ऑप्शन में नॉट नहीं होना चाहिए था। The matter in issue in B suit is directly and substantially the same as in A suit. This should have been the option. Since it is not, the option is not correct. Right? तो ये इसको हम कैंसिल करेंगे।
Now comes question number 3, which among the following statement is not correct in relation to section 10 of the CPC? Where the conditions under section 10 are fulfilled, the court has discretion to stay the suit. The court has the discretion to stay. Not correct की बात हो रही है, तो ये correct नहीं है, right? तो ये आंसर हो सकता है, पिन लगा देते हैं. The object of the prohibition in section 10 is to prevent a plaintiff from instituting two parallel suits to deter different judgments on the same matter in issue. Plaintiff या parties. For the application of section 10, the two suits must be filed on behalf of the same parties or their representative. ये सही है. यहाँ पे शायद राइटर ने गलती कर दी, ए होना चाहिए. A should be the option. Are you confused or what? Why aren't you answering? Sorry. See, तो correct statement है, तो all of the above तो हो ही नहीं सकता. This is correct. This cannot be the answer and hence D cannot be the answer. ये ऑप्शन अपने वर्डिंग में गलत है. यहाँ पे पार्टीज होना चाहिए. ये ग्रामेटिकल एरर है शायद, या लैंग्वेज एरर. ए सही है. A is correct. Yeah, very simple. Court does not have a discretion to stay the suit. Mandatory है, बताया था ना मैंने कि court cannot proceed with the matter because it wants to. It has to, A is the correct option. इतना मुश्किल नहीं है जितना गलत तुम लोग कर रहे हो इस क्वेश्चन को. What do you understand by the term res sub judice as mentioned in the passage? Under judgment, the matter that has already been adjudicated by a competent court, statement by a person preventing him from making contrary statement, conclusiveness of under judgment. हाँ, in passage it is parties, that's what I'm saying. Or is it undermining a judgment? This इतना complicated था, ये creator ने भी mistakes कर दी. अच्छा, under judgment इसका little word है. Okay, under judgment. हाँ, ये तो गलत है सारे के सारे. 4 is not B. Matter that has been adjudicated by a competent court is res judicata. अभी तो बताया था, I just explained. यही तो difference है sub judice और res judicata में. This is res judicata and section 11. It's A. Mention the passage. Res sub judice का मतलब है under judgment. अब पता नहीं ये किसका क्या मतलब होता है under judgment का. Basically means pending judgment and you institute another case while the judgment is still pending. Question number 5. This is going to be our last question. We are not left with time to continue with the last passage. तो हम यहीं पे इसको रोकना पड़ेगा हमें. Right. So Mr. X and Mr. Y, both citizens of India, went to Singapore for a business trip. Mr. X filed a suit against Mr. Y in the court of Singapore over a dispute over money. After returning to India, Mr. X filed a suit on Mr. Y on the same cause of action. Given situation, which of the following is true? It's like under construction. Haan. Like you, Pranjali is absolutely correct. Under judgment means something like under construction. Wow, that's appropriate here. Now I'll be able to make sense of it. If only you could make sense of those Latin terms, you can. Thank you. Smart child. Question. Mr. X and Mr. Y, both citizens of India, went to Singapore for a business trip. Mr. X filed a suit against Mr. Y in the court of Singapore over a dispute over money. After returning to India, Mr. X filed a suit on Mr. Y on the same cause of action. कौन सा statement सही है? ये ध्यान देना, इस पे सिंगापुर कोर्ट में हुआ है first case. The Indian court does not have jurisdiction to try the suit as it is barred by section 10.
Indian court has jurisdiction to try the suit. Indian jurisdiction has the jurisdiction to try the suit only if the central government permits. The Indian court has the jurisdiction to try the suit only if a letter if request is received from the court of Singapore. It's very simple. Let's see if you can answer this very simple question. बताइए जल्दी से. Okay, Pranjali, Nandita and Pikachu have answered. What about the rest? Yes. It's B, foreign court. The fact that a foreign court has delivered a judgment is not something that can bar Indian courts to try the case. Yes, it's foreign. What? 5 minutes का break. मैं अब क्लास को बंद कर रही हूँ. हाँ मिलेगा. You will get 5 minutes break. KD sir is not well. Unfortunately, he has ding. So yeah. B is the correct answer. Guys, come on. Foreign court. Pendency in a foreign court does not preclude an Indian court to try a suit, of course. Even if it is on the same cause of action. ये तो passage में ही लिखा हुआ था. Right, so that's it. This is about our toppers batch. If you want to join our toppers batch, you need to take an all India mock test. I have told you that even if you're not a paid subscriber to one of our comprehensive courses and you have only opted for a test series, then also you're eligible for this batch, right? Provided you have subscribed to one course at least. तो अगर आप प्रॉपर कंप्रिहेंसिव कोर्स का पार्ट नहीं भी हैं लेकिन टेस्ट सीरीज का पार्ट हैं और ऑल इंडिया मॉक को क्वालिफाई कर जाते हैं तो यू विल बी एलिजिबल फॉर द टॉपर्स बैच. एंड माइंड यू द टेस्ट सीरीज इज प्रीटी चीप. बहुत 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 कम बजट की है वो. एवरीवन कैन टेक इट. सो इफ यू हैव क्वालिफाइड टॉपर्स बैच विदाउट बीइंग अ पेड स्टूडेंट यू हैव टू गो फॉर अ कोर्स. ये एक मैंडेटरी कंडीशन है. A toppers batch is actually not curated, it's curated for students who have an immense potential and that potential needs to be channelized. So that is what this toppers batch is going to do. And that is it for today, guys. Thank you so much. I'm sure you are tired, so you'll get a certain break. You can take it. And after this, I think, I don't know who's starting. Let me confirm who's starting. I think Savitri ma'am will start now and she'll start in a while. So you can take a break or you can ask her to give you a break. Don't worry about it. Take water something. ठीक है. और बहुत अच्छा परफॉर्म किया तुम लोगों ने. It was a marvelous performance. Right, towards the end everybody got tired and that's why they lost a little bit of interest, but that's how it's going to be, guys. It's going to be a 2-hour exam, right? हालांकि अभी तुम्हें पढ़ते पढ़ते 4-5 घंटे हो चुके हैं. Nevertheless, it is still for your benefit. Continue with this. थोड़ी सी हिम्मत जुटा लो और फिर आराम कर लेना. Okay, everyone, thank you so much. I shall see you again very soon. तब तक सब अपना ख्याल रखें. कल हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस है शाम को YouTube पे. Don't miss it. Take care. Hello everyone. I hope you can see and hear me clearly. Welcome to the CR session of the marathon. You must be tired after 2 sessions, 2 long and important sessions, GK and legal aptitude. But you know that the test has 5 sessions.
So my name is Savitri Krishnamurthy. I'm standing in for Krishnendu today, who is not well. I will be handling your reasoning or critical reasoning class. I teach reasoning and English. So today we will do the critical reasoning section. All right, are you ready to start? Okay, let me just ask. All right, let's start. Before we start, let us look at the critical reasoning section of CLAT 2023. All right, let me just put on the chat here. I forgot to add that. Give me a second. This is the first time I am doing the marathon. आप लोगों ने तो पहले किया हुआ है, but for me it is the first time, so I am a little late in all this. All right, okay. CLAT 2023 was easy to moderate where CR was concerned. It had, let me tell you, actually it was easy, but certain passages and certain questions were difficult. All right, so let me just put on your chat on my phone so that it's easier for me to see it. All right, yeah, let me just put that on. Those of you who have solved, how many of you solved CLAT 2023? It was not easy. Critical reasoning section was easy to moderate and students scored very well. The first passage was called doom and gloom. Well, it depends. The arrangement of passages may be different. The paper I took, it was the depreciation that was first. Gloom and doom was on the news media. Why are people attracted to bad news? The whole thing was an analysis of that, and it was of moderate level difficulty only because of 2 questions. So 2 out of 5 questions were a little difficult. The other 3 were very easy. Same thing, but a new energy conundrum was about how we were slowly moving towards a clean energy system, and because of the war in Ukraine and other reasons, most countries are falling back on fossil fuels. Okay, that was an easy passage. Okay, then you had good news, which was about social media, people not trusting sources of news, and how the print media stood to gain from that. But also the print media has certain challenges, right? So there also it was moderate, not because it was difficult to read, but because there were 2 questions which were slightly difficult. Do you agree with me, those of you who took the paper in 2023? How stereotypes affect middle-aged women's careers were very, very easy, and in my case it was the last passage, so I could, I think, breeze through it very easily. I'm sure you all did that too. All right, so today in the marathon I have chosen 3. I have actually chosen 4 passages. They're not difficult. I want to test how well you people can read passages and answer questions. Strengthening, weakening, assumption, inference, basics kaise hain. Because in the exam setter wants to know how your basics are, and once your basics are clear, you start taking mocks and you practice. So I hope all of you have taken the All India Open mock. If not, please take it. The All India Open mock, we've tried to make it exactly like the CLAT pattern so that students get used to the timing, the strategy, and obviously the passages. All right. Now, what is the importance of the CR section? I don't need to tell you. Every aspect. GK, you're reading. Let me get my pen. I don't like red. It makes me feel like I am, putting a red mark. Galat kiya hai. I don't want that. GK tests your static knowledge but does test your reading. English tests your reading and logic.
How fast can you read? And then based on what you're reading, you have to answer questions. CR, obviously, because it is passage based tests you're reading, but most importantly, we'll tell you how to read critically, which will help you in English and CR. Just now, Nivedita taught legal reasoning. There is less of legal and more of reasoning. So, for everything, the basis is critical reasoning. That is why you have to uh, master the art of critical reading, which is again sounds very difficult. बहुत easy है, बहुत easy है. What do you have to do? I will show you the passages. I will show you each slide for a minute. Clear? 1 minute I will show you the slides, maybe 40 seconds. We don't have too much time. Then I will summarize the slide for you. In summarizing, what will I do? I'll not tell you everything that's given in the passage. I'll only tell you what are the points you should remember. Now, when you read a passage, you should read it like that, so that you read the important parts of the passage. The other parts, agar us pe question aaya, so you can always go back and refer to it. You can quickly say, what were, you know, in the lunar landing, soft landing, what was the angle? If they ask you some technical question and that has been mentioned in the passage, you can go back and see it and then say, acha, 19.348. Okay, I'll write down 19.348. As a question generally nahi puchte. If they ask you, you can always refer back to the passage, go to the relevant section quickly and see the number, see the name, and then mark, right? But when you read, make sure you read first time, read it properly and thoroughly. You can see the gray hair on my head. I belong to a school of thought which says, if you read properly, simplify it in your own words, no question is difficult. Okay? All right, start. I'll give you a minute. The first person who's done reading, write done. All right, Manu finished first. All right, everyone's done. What is the passage about? The Chinese authoritarian system. What did it say? It said that there was the greatest criticism of the Chinese system in more than 10 years. How did it happen? A lot of essays were written by a Chinese academic. Then, because he wrote that, there was a reaction to it. And the Chinese Communist Party became very strict, not just with him, but also with the rest of the country. That's the first paragraph. Second paragraph, he says, for a decade until the late 2000s, so take it as 2008 to 2009, China became more and more free. It started giving its citizens a lot of freedom, freedom of expression. But it changed. When did it change? With the 2008 Olympics. That is when it changed. And what happened? Let's read the next paragraph. Okay, good, Gauri. Good summing up.
So what does the second slide say? One was when the Olympic Games happened. After that, Arab Springs. It fed into party neurosis. You know what neurosis is? It's a mental illness. So he calls it party neurosis. The Communist Party started suspecting several plots, uprising. Ho ki nahi ho? Neurosis is when you imagine an ailment, when you imagine that people are out to get you. वैसे ही Communist Party started imagining secret plots, uprisings, and so he said in the last decade there has been an end of meaningful public debate. Any public debate would be on an issue. Should this happen? Not happen? People will criticize, people will praise, everything will happen. But that stopped. Next, he writes about the person who's criticized the Communist Party. I hope I'm pronouncing the name right. A 56-year-old professor of Beijing University is a prominent critic of the government. वो government को criticize करता है. And on what grounds? It's increasing authoritarianism. It's increasing dominance, control. And since 2012, he wrote a lot of articles where he says that China's rise, China became, the last few decades, China rose from a communist country which was considered developing and poor to something which has been seen as a threat to America. America sees China as its greatest threat right now. So its rise was based on four main principles: an end to political campaigns, permitting private property and wealth accumulation, tolerance of personal freedoms, and political term limits to prevent dictators. In America, a president can't be elected for a third term. दो term ठीक है, but they don't want a third term. Similarly, in China, they had political term limits. These are the four pillars which helped China become what it is, grow and develop. All of these he implies. So in those articles which he wrote, he said these articles have been breached. Breach of contract, you read in legal. What does breach mean? There are two words. अभी मैं English पढ़ा रही हूँ. देखो, BREACH, BREECH. Confused words. What does this mean? Breach of contract, breach of trust. What does breach mean? Let me see. Somebody give me an answer. My phone keeps going into dark mode. Breach का मतलब क्या है? Somebody quickly. Even if you look up your dictionary, I don't mind. Give me the answer. Breach of contract. What does it mean? Breach of trust. What does it mean? The pehla wala breach. This is the word. This is the wrong. This is another word. Breach means break. So he has broken all these. Okay. This breach means the trousers that you wear in horse riding. The lower end of anything is called breech. Earlier shoes were called breeches. Riding breeches are generally trousers used for riding. But this is the breech that we want. Alright. So Z has broken all this so that he can serve beyond his 2 5-year terms. That is what this person has accused. Now, when you accuse a party chief, the chief of a country, what will happen? That's what happened. Let's read the next paragraph. Exactly, that's the other breach. Pranjali, correct. The other breach is break. Alright, read this. Okay, so what does he say? So Zhu wrote a lot of articles. He broke the 4 pillars. He wrote a lot of articles. His articles were censored. Censoring means edited, not cut off. All words, phrases, expressions which were anti-government, anti-communist party, anti-Zhu were all blacked out. And he was suspended. He was placed under investigation. Uska reaction kya hua? There were a lot of essays from other Chinese public thinkers who said, shouldn't happen, this is wrong.
and there was a petition signed in China to support zoo. So there were a lot of activities which supported zoo and went against the government action. But the government, he means the Chinese government, is adept. Adept means very good at something. You are adept at maths means आप maths में बहुत अच्छे हो. You are adept at needlework means you're very good at needlework. So the Chinese government is very good, very skilled at marginalizing such voices, suppressing them. Inside China, accessing these articles by all these people requires a VPN. It's a software that enables a user to bypass China's censored intranet and access the global internet. So, any voice of protest couldn't go because it was censored, right? And it to access global internet also you need to bypass the intranet, and the intranet is heavily censored. As a result of all this, Xu and his supporters are unknown to the vast majority of Chinese people. Almost the last paragraph, the last slide. Read it and then tell me. Yeah, there is a difference between censor and censure. Censor means to edit objectionable material. Movies are censored for violence, obscenity, and censure is to criticize. All right. Okay. So what does he say? But people of China know the truth. They are aware, they are conscious that China's wanted economic growth. Remember, this is not the other want. Wanted means you boast about something you want. People have been praising and China has been boasting its economic development, but China's wanted hyped economic development, which masked all sorts of popular discontent, is slowing. China is not in a very good state. Its economic development is slowing. When the economic development is there, any kind of popular discontentment, anger, dissatisfaction is covered. Array, economy is doing well, why are you bothered? But now the economy is slowing down and the government does not have any impetus for reform. It doesn't have any kind of a push for reform that will create new areas of growth. And on top of that, there is an opposition building against the government. This is the situation now. People are aware that economic growth is not happening. The opposition, there is building opposition against government, and the government itself doesn't have. Earlier it used to have these packages and tools and something to help growth, but now it's run out of all that. So what has happened? That is the situation in China. Then the author comes up with a very nice conclusion. Over the past century, humanism of Chinese culture has at critical moments reasserted itself. See, culture is humanity, is humane. The humanism has to do with the good qualities of being a human being. That has become stronger whenever, okay, at critical junctures. It reminds me of a saying in traditional Chinese thought, which says when the pendulum has gone to this end, it has to move back to that end. So when things are pushed to a very bad side, very soon things will start improving. That is the figurative expression that he has used with regard to a pendulum. Easy?
what would be the tone of this passage? You tell me. What would be the tone? ये English class नहीं है, CR class है. But CLAT in CR also asks tone questions. So what is the tone of this passage? Analytical. Well, my question to you is, if it's analytical, there will be no personal opinion. Do you get the analytical tone? Has to be analytical, is actually a style. For you to call the tone analytical, it has to be objective as well. Analytical is objective, but here the author can be called argumentative, because he is giving all kinds of logic and examples to build his argument. And what is his argument is one of the questions I will ask you. Expository is just description. You understand? Detailed description is expository. All right. This is more argumentative, because every time he's given a point, he has supported it. Right? All right. Question 1. Why does the author of the passage say that the government of China is adept at marginalizing voices of protest and dissent, even after giving many examples of articles of dissent? There have been so many articles of dissent. People have started signing a petition. Others have written essays supporting Zhu. But the author says the government is adept at marginalizing protest. So why does he say it? Specific question, direct question. All right. What do you think is the answer? I have to see my phone for your answers. All right. Because the Chinese government is known to embrace authoritarianism, because Zhu Zhangren was suspended from teaching and placed under investigation, because China's internet is strictly censored and few people have access to the global internet, because the author has a premonition. Premonition means a feeling beforehand. Okay, something that makes you predict. Mostly C, a few D's and B's. अच्छा, anywhere does the author say मुझे लग रहा है, कुछ तो लग रहा है, कुछ गलत होने वाला है? That's a premonition. Okay, so D is out. Author is given solid scientific logical facts and told you ये हो रहा है, ये हो रहा है. So where is the question of premonition? So D is definitely wrong. Some answers for B, he was placed, that is true. That is only one voice of protest, right? That's not incorrect, by the way. This answer is half correct. But he is asking, how is it good at march? This is an example of how it marginalized a voice of protest. But how is it good at it? To make sure that people do not know. You can do what he wants, they'll stop him. Other people shouldn't know what he is doing. Correct? So, why does he say he's good at it? Because they've always done this, that they have suppressed voices of protest and made sure that the voices of protest do not reach outside. So, B is not fully wrong, but B is not the correct answer in terms of C. That he has written something. For whom is he writing? He has written an anti-government essay, and it will be effective. It will become an effective voice of protest only if it reaches others. It has managed to see that it doesn't reach anybody. That is how it has marginalized voices of protest. This is one way of marginalizing, but that's only one voice. Get it? Why it is not B and it is C? All right. Now, keep noting down how many answers you got correct and how many you got wrong. Okay, these I've tried not to make the passages difficult. All right, here the passage was slightly difficult to read, but I've touched upon all types of questions asked in CR, so you know how to approach it. Which of the following is the author most likely to agree with? Look for an option which aligns with the author's main point, right? Because he has not given you a line and said, which do you think the author will agree with this? Which of the following is the author most likely to agree with means look at the option which aligns with the author's main point. And you know what's the main point. There's a question on that. After that, we'll sum it up. The people of China are ready for a revolution to overthrow the current regime. The people of China support the authoritarian government as it has brought in great economic progress.
The popular discontent against the Chinese government is growing and may eventually bring in change, or Zhu Zhangren can't fight for more freedom unless he has the support of intellectuals and scholars. Please write the question number. All right. There's a slight lag on my phone, so please give the question number and then mark your answers. Nahi to I'll get confused whether this is an answer for 1 or 2, right? Give the question number and mark your answer. Which of these is the author most likely to agree with? Remember, most likely to agree with is an inference question. And for an inference question, it has to be 100% correct based on what's given in the passage. Wherever you think, this is in line with his thought, but exactly can I say this? Thoda badha chadha ke this can go, that won't work. If you extend your logic and it'll work, that kind of answer doesn't really work. All right. Okay. So far, all answers for C. Any other answer? Now, the pendulum example could also mean that the people know the. I'm not saying this is correct. I'm just saying, why is A not correct? The people of China, whenever at critical moments, Chinese culture, the humanism of Chinese culture has always acted. But this is overthrowing the current regime is not mentioned by the author. He says they will bring in change. There is likely, once things go to one end, it will happen. But this part is rather extreme, right? This part, people are ready for a revolution, they're ready for change. They want things to improve. Doesn't mean revolution. Revolution is a very strong word. Okay. They were, as long as economic progress happened, they supported whatever government, or if they had any protest, it wasn't, people weren't giving too much importance to protests or discontentment. If they were discontented, it was balanced out by economic progress. But now it is not. This was the case in the past, not now. In the past, when economic progress was there, people's voices, if they were discontented, it was masked. The discontentment was masked by economic development. Everybody is progressing, paisa hai, development hai, so what is there to protest? It was masked, it was covered. But now that economic development is also not there. Correct? So right now you can't say it. Maybe in the past you can say. All right? Popular discontent, yes, this is summing up the main point of the program. And here people have supported him. It's not like he didn't have support. He had support. But they were marginalized by the government with its tricks. Correct? So answer is C. Most of you gave it right. Excellent. All right, let's look at the next question. Now, this is a weekend question. Okay, before you answer, let's just look back at what you're supposed to do. Opposition against the government is growing. Isko weaken karna hai. Sometimes this question would not be that easy. They'll say, how do you weaken the author's argument in the passage? If that is given, then again look for an option which is against the main point of the passage. If that answer option is not there, then you look at maybe one of the secondary arguments given by him. Okay, and when you weaken, you just say that another thing could also be possible, or an opposite conclusion can be drawn. Normally in an argument you have a premise and a conclusion, right? You weaken an argument by saying the conclusion that you have drawn from the premise is wrong. That is the way you weaken it. Here it has made life easy by asking, opposition against the government is strong. Look for an option which weakens this claim, that the opposition against the government is not strong or not growing. All right. They are discontented. Yeah. Okay. Lost motivation has not been mentioned. The Chinese and foreign scholars didn't get enough signatures. We don't know what happened to the petition, right? We don't know what happened to the petition.
So we can't say it weakens or strengthens, we just don't know. Moreover, this was a premise given by the author, or a fact. Any fact that is given to you saying people have signed petitions, you don't try to weaken that. कि उतना support तो नहीं है उसके लिए. You think that he is saying there is support, so you'll weaken it by saying उतना support नहीं है. That you can't do because that's a premise he has given. Like for example, I'll say no student stayed back to attend my class because Krishnendu sir is not here. Okay, now you don't weaken my claim that no student was there in class by saying no, you're wrong, 3 students were there. You weaken my claim by saying no, the students did not attend your class not because Krishnendu was not there, because my claim is Krishnendu nahi hai, who will see this old woman, grey hair and all, maybe you're saying. So you will say no, not that, they were not there because they were not told there will be a session, or some other reason you will give, right? So this is not given. They have seen worse hardships than those they face at present. He has not said they are facing the worst hardship ever. All right. But he is saying the people of China are discontented, rather that economic growth is not happening. So the people might revolt. People might go against it. China's economic development is not happening. So it is time for change. Therefore, the author's claim is most weakened by D. Excellent. Many of you, in fact, all of you gave D. All right. What is the author's main point in the passage above? Just which one sums up the main point? Xu Zhangren and his followers have written various articles against the Chinese authoritarian system. China is seeing a growing opposition to the authoritarian system despite the regime's strict measures. It is remarkable that he has been able to write so many articles critiquing the Chinese authoritarian system. One has to hope that the old Chinese saying will come true and save Chinese democracy. Read and tell me which is the right answer. Mostly B's. Anyone for D? Anyone for D? In the last paragraph, he does speak about hoping that the old Chinese saying will come true. So why not D? Most of you answered B, correct. But I am asking, last paragraph में ये बोला है ना? Why not this? Sums up all his feelings, right? So why not D? On what grounds did you eliminate D? Why is it not D? He did mention the old Chinese saying. He just says that I believe in that old Chinese saying that the pendulum has swung to one end and might go to the other end. This is to only substantiate the fact that there is an opposition, and that opposition, the author is hoping, would be successful. So, first paragraph, he talks about the Chinese system and how it is changing. Then he writes about Zhu and his essays. Last paragraph he says, but before the situation was different, now the situation is different. Therefore, the key is there is opposition. The opposition is growing. How is it growing? Not yet through people's protest, only through writings right now. But the people also are aware that things are not all great. Right? He sums it up by saying that one hopes that all these together will make the old Chinese saying come true. By itself, when you look at B, you have an idea about the passage. By itself, when you look at D, it looks like kaunsa Chinese saying, which one, what is it saying? Right? You don't have any idea about the main point when you look at D. He does say it, but B represents all the things he's been saying. Growing opposition, authoritarian system. This might have become easier if I had written through writings. People are voicing their protests through writings. Clear? All right. B is the answer. Thank you.
B is vague actually. D is vague. All right. Assumption question. How do you look at an assumption question? Premise hai, conclusion hai. The premise which has not been stated, the unstated premise that takes this to the conclusion, that joins the premise to the conclusion, that is your assumption. Fill in the blanks mein jaisa word hota hai, assumption is a statement that connects the premise to the conclusion. Correct? So the wordings of the conclusion, the claim that the author is making is very important, because the assumption is the basis of the conclusion. This cannot be true unless this is true. So the words that are used in the assumption and the conclusion will be similar. The assumption is leading you to the conclusion, though the author hasn't said it. Right? If I say something like, India-Pakistan match is there today, India will win the match. मेरा assumption क्या है? This ma'am is mad about cricket. नहीं, वो नहीं है. If I say India, there is an India-Pakistan match today, that's my premise. India will win it. So what is my assumption? B is not an inference. Inference is one step away from the claim. Okay, Gauri? B in 5, which is the answer? What is the assumption is the question is asking. What is the author taking for granted when he says that his supporters are unknown? So the line before that is what he is assuming with all the conditions. Why will he be unknown? On what basis has he made the claim that Zhu and his supporters will be unknown? Acha, I have seen some answers for A. Alright, and Saifi says B. Saifi, why did you change your answer? कोई तो reason होगा आपने answer change किया. Okay. Zhu and his supporters are unknown to the vast majority of the Chinese people. Why are they unknown? Author has said in the passage before, right? Why are they unknown? Oh, you remember only that. Why will Zhu be unknown? What has the author mentioned? The reason for which Zhu and his supporters are unknown. Passage mein likha hai na? As a result of what? That is the key. As a result of what? ये as a result जो बोला है, as a result of what? Let me go back to the passage. As a result of the internet restrictions. As a result is his conclusion. Zhu and his people are unknown. As a result of what? As a result of their internet restrictions. Author is assuming internet restrictions control who is known and who is not known. Correct? What is your answer? ये वाला चाइना के बारे में बोल रहा है. All those who marked A, where has it written China? Is China a democracy? He's written Communist Party. They've allowed more freedom in the Communist Party, but it hasn't become a democracy by any standards. A doesn't have any of the words which are there in the conclusion, so A cannot be an assumption. Okay, answer is B. All right. Okay. Thoda mushkil kar diya. How come you got it wrong? Assumption and conclusion will have. So this, when I ask you what is the assumption of this statement, you have to, behind the statement, you have to treat this statement as the conclusion. So isko bolne mein author ne kya assume kiya hai? What is he taken for granted? If I tell you, I will not answer any of your questions today. If I say that, what am I assuming? And the assumption is from my point of view. What am I assuming when I say I'll not answer your doubts? I am assuming you're going to ask me doubts. Correct? Yeah, don't change your answers, guys. Be confident of your answers. Agar galat hai to baad mein main samjha dungi na. All right, All India Open Mock 25th to 3rd September. Remember, please take it.
All right, second one is easier. I'm not going to recap. I'm not going to summarize the passage. You read it, we'll answer the questions. Gain knowledge, information, anything. People don't know him. Knowledge about what's going on, information about what he's saying. So slightly we change the words, Manu. All right. Pranjali, slightly words will be confused. इंटरनेट इंट्रानेट रहने से नॉलेज होगा कि ऐसे लोग भी हैं जो ये लिख रहे हैं. इंफॉर्मेशन होगा ऐसे लोग हैं जो ये लिख रहे हैं, और नॉलेज होगा वो लोग जो लिख रहे हैं कि दिस इज हैपनिंग. अंडरस्टूड? Alright, just change the word slightly. Alright, again, about 40 seconds to read. Ubiquitous means present everywhere. Okay. Mediocre means average. All right, so he's talking about the hierarchy. Hierarchy means gradation system that divides our that exists in our country. He says it exists in our school system also. There are 4 categories of schools. He has mentioned them. Next. Next. Echelons can be step, category, rung in a ladder. All right, so he says 4 categories: top 2, elite, rich, middle class; the lower 2, the marginalized section, those who are either in terms of finance or social standing, they are in the economic or social reasons, they are in the lower part of lower classes. And then he says that the better schools have better infrastructure, resources, management, teachers, everything, and the quality of education you get is a function of your environment. If you belong to the upper 2 classes of society, the quality of education you get is better. Okay, which shouldn't happen in a democracy. Then the last paragraph. No, not last, there's one more after this. Milieu is the social environment. Yes. अगर sentence बहुत लंबा है, break it up so that you understand what it means. Picked it up from the paper as it is, so there are certain sentences which are very long. All right, this part you can read very fast, that you need a common school system.
where regardless of the background, all students go to similar schools, they get a similar kind of education. And NEP has overlooked the idea of CCS. All right, last paragraph, read it in 40 seconds quickly and tell me you're done. All right. He says the NEP espousal means promotion. Okay. To espouse is to speak in favor of something, of vocational education, and the author is against it. Why? Because he says that it would renew the class and caste factor in society. All right. So it's a critical article against the NEP. Not many articles like this. So what is the main idea being conveyed by the author through the passage? Remember, he's not asking main point of the passage, so you get the gist of the passage. He's saying, what is he trying to convey in this passage? What is his main one point that he really wants all of you to understand from that long passage that you read? There are no good schools for poor children in the country. The NEP has failed to address the hierarchical order in the realm of education. The NEP manifests the echelon system of schools, which has both benefits and disadvantages, or people need to help in the formulation of a perfect NEP. What's he saying? B or C? I'm getting most answers for B. Question is it B or C? Anyone for C? All right, why not C? Okay, let me just. All right, let me just go back. Where were your answers? Let me just go back. Where were your answers, guys? I have to open my phone again. All right, because he hasn't mentioned any of the benefits, right? He hasn't mentioned any of the benefits. Where did he say it has benefits? All right, the NEP doesn't manifest the echelon system of school. The NEP doesn't. The echelon system, the hierarchical system exists. The NEP has not helped to get rid of it. That's what he's saying. That is why C is wrong. Okay? All right. NEP is not displaying it. NEP seems to be supporting it, according to the author. All right. Which of the following would challenge the author's claims about the hierarchical system in Indian schools? Very easy questions. इसको आप 2 मिनट में कर सकते हो. 2 मिनट में. That's okay, Alok. A mistake or two doesn't matter. Now you know what is the part where an answer can be wrong just because of one word, right? So you understood that now. Which one would challenge or weaken the author's claim about the hierarchical system in Indian schools? He says there is a hierarchical system in Indian schools. How will you challenge it? By saying that there is no hierarchical system. Correct? Egalitarian का मतलब क्या है बताओ? Egalitarian का मतलब क्या है? Many poor upper caste children, but poor is there? No. So that shows that their social economic standing. It is not just caste he is talking about. He is also talking about class. So how will this weaken? Which one are you talking? He says the school system has a hierarchical order. But if you egalitarian means equal, a system based on equality. Okay? A system based on equality is an egalitarian system. So Indian schools are run means the Indian school system.
इसमें आपको इतना इजी नहीं दे देंगे कि if I had written the Indian school system does not follow a hierarchical system, all of you would have marked it. Correct? लेकिन उतना आसानी से नहीं देंगे, थोड़ा चेंज करेंगे. Instead of saying Indian school system, you will say most schools belong to the system, run on democratic egalitarian principles. सब लोग एक हैं, we are not going to do it on the basis of this or that. Yeah, so here he is saying there's a hierarchical system. If you say no, most schools are egalitarian, the everything, the accessibility to the system is also part of the egalitarian system. Here he is saying that's not happening. Correct? All right, last question. Which of the following statements is similar to the author's claims about the difference in quality of education given to different classes? There is one more passage which you guys can do as homework. I'll tell Abhishek to add it in the Telegram group so that you can answer it. Okay, I'll just take a few questions for 2-3 minutes after this question is done. All right. The difference in the quality of education given to different classes. The author has said there is a difference in quality in education given to different classes. If you belong to higher social classes, higher caste, you get better education. If people on the lower rung, they are discriminated. They're not exactly discriminated against. They get access to schools which don't have infrastructure, don't have good quality teachers, right? So which one is similar to what the author is saying? Simple question, very simple, but very similar to a CLAT style question. All right, see that it depends on parameters, and these parameters are accessible to upper classes. Therefore, by default, upper class children get access to better quality education through no fault of theirs. This is the author's argument, need not be the case. What tone and style is this passage? What tone and style is this passage? This is also an argumentative tone. All right. It's in fact opinionated because he is expressing very strong opinions on this. All right. Okay. One more question. Last question. The author argues that it is critical tone, argumentative style. Okay. So critical tone, any one word will come for it in the exam. So critical and argumentative, perfect. The author argues that a common school system which enables all students to attend the same public school irrespective of their social and economic background can be a solution to the hierarchy in the education system. He has told, right? Have a CCS, common school system, so a student gets the best education regardless of his background. Whatever, if the education is mediocre, it is mediocre for everybody. So which one would go against this? सबको एक type education मिलना चाहिए. And if you have a common school system, सबको एक type education मिलेगा. Which one would weaken that, negate this solution? Solution is equal education. Which one would go against it? Yes, wherever, whether you have a common school system or anything, again, in that, the rich, the higher classes will send their children to private schools. So again, there will be, so private schools, again, the discrimination, the differences will again come. All right, you're setting it up so that everybody studies in the same school, but if they do not send their children to the same school, like in the US, the public schools are in your own locality. Whatever school is there within the this many meters or miles or whatever, they say you have to send your children to that school. People who don't want change their address, change the houses so the children can go to better schools. So that is also the theory is good but doesn't work in practice. All right, okay guys, last question. Which of the following is assumed? ये क्या हो रहा है मैम, एक के बाद एक क्वेश्चन दे रही है, टाइम है इसलिए. Assumed by the author.
Did I give vocational education? Is that paragraph on vocational education there? Yes. Okay, quickly. 10th question. What is assumed by the author about vocational education? What does he say? Is he in support of vocational education? Is he in support or against? And what is he assuming? No. Is the author for vocational education or against it? The author is against it. He's against the fact it is being brought in 6th grade. He says the NEP is introducing vocational education in the 6th grade. Iska matlab hai that the NEP is renewing old class and caste system. So the author feels that there is a connection, or he is assuming that there is a connection between caste and vocation. So that is why he is against it, and that's why he is claiming vocational education hai तो कास्ट एंड क्लास का बहुत प्रॉब्लम होगा. All right, guys. So I hope you learned something from this session. I have a passage. We will do it for homework. All right. Take the All India Open Mock, all of you. Ankur is waiting on standby to teach you. Oh no, Alpa or Ankur. No, Ankur and then Alpa. All right. Okay, I will see you again. I hope you learned something. I hope you enjoyed the session. I love taking it, and all the best for the next 2 sessions. Do take the open mock and looking forward to see you in the toppers batch. Bye-bye. Hello everyone, welcome to BYJU'S Exam Prep, the most comprehensive preparation app for all exams. How are you all doing? क्या हाल चाल, कैसे हैं सभी लोग? First of all, please confirm, am I clearly audible, visible, all good, all fine? Yes, जल्दी से सबसे पहले तो ये बता दो कि आप लोग मुझे देख पा रहे हो, सुन पा रहे हो, सब कुछ बढ़िया चल रहा है. गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन एंड वेलकम ऑल ऑफ यू. गुड आफ्टरनून एंड वेरी वेरी वार्म वेलकम. क्या हाल चाल, कैसे हैं सभी लोग? काफी देर से पढ़ाई कर रहे हैं, थोड़े से थक भी गए होंगे, पानी वानी पी लो थोड़ा सा, है ना? ऑल गुड, ऑल फाइन, ऑडिबल, विजिबल प्रॉपरली, बस यही सुनना था. ये हो गया है तो बस बाकी सारी चीजें हो जाएंगी. तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. क्या करेंगे आज के सेशन में? सबसे पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं. वी आर गोइंग टू सॉल्व केसलेट्स. जैसा कि क्योंकि एग्जाम में केसलेट्स आने के चांसेस सबसे ज्यादा है. ऐसा जरूरी नहीं है केसलेट ही आएगा, बट यस चांसेस आर वेरी हाई बिकॉज लास्ट 3-4 ईयर्स से जो है केसलेट्स ही आ रहा है. तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम केसलेट्स में थोड़े ज्यादा अच्छे हो जाएं. तो इसीलिए हमारी आज की क्लास का एजेंडा भी पूरा का पूरा क्या रहेगा? फोकस शुड बी ऑन केसलेट ओनली. ठीक है, तो हम लोग केसलेट पे थोड़ा ज्यादा फोकस करेंगे एंड वी विल सी कि क्या क्या चीजें हैं, कैसे कैसे करना है केसलेट को, क्या क्या चीजें नहीं करनी चाहिए, क्या क्या चीजें करनी चाहिए. ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है मोस्ट ऑफ द टाइम क्या क्या नहीं करना चाहिए. तो क्या करना है क्या नहीं करना है, उन सारी चीजों के ऊपर हमारा कॉन्सेंट्रेशन रहेगा एंड वी आर गोइंग टू सी कि कैसे करेंगे. ठीक है जी, रेडी है सभी लोग? बीच में थक गए थे, हाँ आई नो, थोड़ा बड़ा सेशन है तो बीच बीच में आप लोग थक जाएंगे, लेकिन ठीक है, थोड़ा बहुत पानी पीते रहिए और चलते रहिए. लेकिन उससे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि सेशन को लाइक करना है, सेशन को शेयर करना है, सो दैट वी कैन हैव मैक्सिमम ऑडियंस. और तभी मजा आता है जब बहुत ज्यादा ऑडियंस हो, आपको भी और हमको भी, है ना? तो दोनों के मजे के लिए इंपॉर्टेंट है कि आप लोग शेयर करें, आप लोग लाइक करें. फटाफट से क्वांट शुरू होने से पहले सबको बता दो अब क्वांट शुरू हो चुकी है. तो जो भी क्वांट लवर्स हैं प्लस क्वांट हेटर्स हैं वो दोनों ही आ जाए क्लास के अंदर में एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट द क्लास नाउ. शुरू करें आज की कार्रवाई. यस, लेट्स क्विकली बिगिन द सेशन. लेकिन उससे पहले लेट मी टेल यू व्हाट्स गोइंग ऑन इन BYJU'S एग्जाम प्रेप. ऑल इंडिया ओपन मॉक टेस्ट करवा रहे हैं हम लोग 25 अगस्त टू 3 सितंबर. तो प्लीज डू, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोग ये एग्जाम दें सो दैट आपको पता लगे किस टाइप के एग्जाम, किस टाइप के हमारे मॉक्स हैं. तो उससे आपको आइडिया लगेगा. यू कैन एनरोल फॉर द टेस्ट सीरीज, और अगर टेस्ट सीरीज में आप अच्छा करते हो यू कैन गो फॉर द टॉपर्स बैच ऑल्सो. सो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोग दे दिया. वेरी गुड, बहुत बढ़िया गरिमा. जिन लोगों ने दे दिया है बहुत बढ़िया, बहुत खुशी की बात है, वेरी नाइस. जिन्होंने नहीं दिया है प्लीज डू अटेम्प्ट ऑल इंडिया ओपन मॉक क्लैट. दिस इज फॉर एवरीवन, फ्री स्टूडेंट, पेड स्टूडेंट, सभी के लिए. ठीक है, तो क्वांट शुरू करते हैं. ये तो बातचीत हो गई कि भाई क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है मार्केट में मतलब BYJU'S एग्जाम प्रेप में, कि
क्या क्या चीजें हो रही हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं अटेम्प्टेड द ओपन मॉक, बहुत ही बढ़िया, शानदार। सर दिस ईयर दे रिमूव द टर्म ग्राफिकल बेस्ड क्वेश्चंस इन 2024 सिलेबस। कुछ अच्छा ही किया है इन्होंने अगर रिमूव कर दिया है तो। ग्राफ तो वैसे भी नहीं पूछते, पूछते वो केस लेटी है, ठीक है, तो अच्छी बात है। आई एम नीदर अ क्वांट लवर नॉर द हेटर, ये भी ठीक है, तो आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे लवर हो चाहे हेटर हो क्वांट का, लेकिन ये सेशन में तो मजा आने ही वाला है। शुरू करें। गरिमा इज ऑल्सो सेइंग द सेम, ठीक है, एवरेज है क्वांट में, वो भी सही है। चलिए जी लेट्स स्टार्ट, बट बिफोर दैट 92 डेज आर लेफ्ट फॉर क्लैट 2020-24। प्लीज सीरियस हो जाइए और अब मॉक्स पे फोकस रखिए, मॉक के अकॉर्डिंग डिसाइड कीजिए कि क्या चीजें करनी है, क्या चीज। रिवीजन और मॉक्स दो चीजों के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस रखना है। आगे की चीजें तो करनी है लेकिन साथ में पीछे का भूलना नहीं है, दैट्स रियली इंपॉर्टेंट फॉर अस, ठीक है। ये नहीं कि पीछे का भूलते चले जा रहे हैं, आगे का पढ़ते चले जा रहे हैं और कुछ भी फायदा नहीं हो रहा है, तो रियली इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। आई एंजॉयड क्वांट बट ओनली कांट एबल टू स्कोर इन क्वांट। सिजन बेटा अभी देखो यहाँ पे क्वेश्चंस करेंगे, साथ में मिल बांट के करेंगे, देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम हो रही है क्वांट में, क्या नहीं हो रही है। विल सी ईच एंड एवरीथिंग, डोंट वरी, ठीक है गौरी, विल डिस्कस दैट ऑल्सो, ठीक है, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। बट अभी के लिए यार क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं, केसलेट सॉल्व करना शुरू कर देते हैं फटाफट से, जिसके लिए हम लोग आए हैं, ठीक है, जिसके लिए आज इकट्ठा हुआ है। या टू मी टू आई एम स्लो इन क्वांट, कोई बात नहीं बेटा। देखो अब फटाफट से स्लो हो क्वांट में कैसे करना चाहिए, कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए केसलेट को। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि जब भी कोई केसलेट नजर आए, जैसे आप देख रहे हो यहां पर पैराग्राफ की फॉर्म में डेटा गिवन है, ठीक है। अब इस डेटा में क्या करना है, सबसे पहले तो ये डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट होती है जिसको आप इग्नोर कर देते हो। तो इस डायरेक्शन पे फोकस करके हमें यह पता लगता है कि क्वेश्चन किस बारे में बात कर रहा है। पूरा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है, पूरा सेट रीड करने की जरूरत नहीं है, जस्ट बाय लुकिंग एट दिस डायरेक्शन आई कैन से क्वेश्चन किस बारे में बात कर रहा है। तो क्वेश्चन भाई साहब किस बारे में बात कर रहे हैं, देयर आर 2 बिग बेकरी शॉप्स, तो 2 बेकरी शॉप्स है, एक का नाम है बॉन, ओके, और दूसरी शॉप का नाम है क्रिस्पी, विच मेक्स 4 डिफरेंट बेकरी आइटम्स। कौन कौन से आइटम बना रहे हैं, पेस्ट्री, बर्गर, सैंडविच एंड पेटीज। तो बेसिकली हमारे पास में अगर आप देखो तो एक तो बॉन शॉप है और एक हमारे पास में क्रिस्पी शॉप है, राइट। और ये कौन कौन से आइटम बना रहे हैं आपके, दे आर मेकिंग पेस्ट्रीज, दे आर मेकिंग सैंडविचेस, दे आर मेकिंग बर्गर, दे आर मेकिंग पेटीज, दे आर मेकिंग डिफरेंट आइटम बना रहे हैं यहां पर, ठीक है। तो एक एक करके हम इसमें आइटम्स को फिल कर सकते हैं, दैट मींस इस क्वेश्चन में हम टेबल बना सकते हैं। सबसे पहले तो आप ये समझा करो, क्या इस क्वेश्चन में टेबल बन सकती है, क्या इसका डेटा टेबुलर फॉर्म में आ सकता है, क्योंकि एक बार टेबल बन गई ना और टेबल आपके सामने है, फिर सारे क्वेश्चन करने आसान हो जाते हैं। तो यस, इस क्वेश्चन में वी कैन मेक द टेबल जस्ट बाय लुकिंग एट द डायरेक्शन, हम कर सकते हैं। जब हमें इतनी क्लैरिटी मिल गई, अब ये क्वेश्चन पढ़ो मत, साथ साथ ही टेबल बनाना शुरू कर दो। आर यू गेटिंग मी? टाइम वेस्ट नहीं करेंगे पूरा क्वेश्चन रीड करने में, अच्छा ये इतने आइटम बना रहा है, इतने आइटम क्रिस्पी बना रहा है, इतने आइटम बॉन बना रहा है, इतने सैंडविच बन रहे हैं, इतने पेटीज बन रहे हैं, नहीं, राइट। हम क्या करेंगे, साथ साथ सॉल्व भी करते चले जाएंगे। सर मैं तो इंफॉर्मेशन को एनालाइज करके टेबल नहीं बना पाई ओपन मॉक में, तो कोई बात नहीं बेटा, ओपन मॉक को भी डिस्कस कर लेंगे, पक्का डिस्कस करेंगे, पर उससे पहले अभी इस सेट को डिस्कस करते हैं। शुरू कर दे सॉल्व करना, और जिसको आता है वो साथ साथ पहले अपना सॉल्व करता रहे और मुझे आंसर बताता रहे, और जिसको नहीं आता है लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग दिस। सबसे पहले तो मैंने यहां पर टेबल बना के रख दिया ऑलरेडी, यू ऑल कैन सी द टेबल, कि भाई ये हमारी बेकरीज है, कौन कौन सी बेकरी है हमारी, दैट इज क्रिस्पी बेकरी, बॉन बेकरी, और टोटल आइटम यहां पे आ जाएंगे, ठीक है। कौन कौन से आइटम्स ये बना रहे हैं, सैंडविच, पेटीज, बर्गर, पेस्ट्रीज, और इसका भी टोटल यहां पे आ जाएगा। सो अगर सैंडविच क्रिस्पी वाला कितना बना रहा है वो यहां पे आ जाएगा, बॉन वाले कितना बना रहे हैं वो यहां आ जाएंगे, इन दोनों को ऐड कर दोगे तो टोटल सैंडविच कितने बन रहे हैं वो पता लग जाएगा। सिमिलरली पेटीज के लिए भी हो जाएगा और ऐड कर देंगे टोटल पेटीज, ऐसे करते चले जाएंगे एंड विल बी गेटिंग इट लाइक दिस, ठीक है। कोई बात नहीं, जो भी टेबल बनाई हो उल्टा कर दिया होगा और तो कुछ नहीं किया होगा गौरी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डेटा तो वही रहेगा, डेटा विल नॉट चेंज। तो बार बार मैं उठ करके इसमें पुट करता जाऊंगा डेटा। लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग फ्रॉम द वेरी फर्स्ट लाइन। तो अगर आप फर्स्ट लाइन को देखोगे, बॉन मेक्स अ टोटल ऑफ 360 आइटम, तो टोटल कितने आइटम बन रहे हैं हमारे पास में, दैट इज 360 टोटल आइटम्स बन रहे हैं, ठीक है, वेरी गुड। द रेशियो ऑफ द टोटल आइटम्स मेड बाय बॉन टू क्रिस्पी, तो टोटल किसका है ये, बॉन का। तो टोटल जो बॉन और क्रिस्पी बना रहे हैं उसका रेशियो है 3:5। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर बॉन जो बेकरी है वो 3 के आइटम्स बना रही है, तो क्रिस्पी बेकरी कितने आइटम्स बनाएगी, 5 के आइटम्स बनाएगी, करेक्ट। सो टोटल जो बॉन बेकरी है वो 360 है,
सो कैन आई से दिस इक्वल टू 360, तो k की वैल्यू आ गई हमारी 120, और k अगर 120 आ गया तो 5k कितना हो जाएगा, 5 इंटू 120, दैट इज 600। जल्दी से बताओ यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को, स्टेप बाय स्टेप मुझे बताते जाना कोई प्रॉब्लम है तो टोटल 360 है, बॉन 120, बॉन सॉरी माय मिस्टेक, दिस इज 360, कहां गया, बॉन इज 360, बॉन 360 और क्रिस्पी 360, बॉन 360 एंड क्रिस्पी 600 एंड क्रिस्पी 600, सो टोटल बिकम्स 960। यहां तक कोई परेशानी किसी को? टोटल पेटी पे जो भी आइटम्स बन रहे हैं, तो क्रिस्पी बेकरी के अंदर टोटल 600 आइटम बन रहे हैं, बॉन बेकरी के अंदर टोटल 360 बन रहे हैं। वेरी गुड, क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं, जब हमें ये पता लग गया तो नाउ द क्वेश्चन इज, अब हमें ऑलरेडी पता है कि बॉन बेकरी में कितने आइटम बन रहे हैं, 360, और क्रिस्पी बेकरी में कितने बन रहे हैं, 600 आइटम। नाउ क्वेश्चन इज सेइंग ऑफ द टोटल आइटम्स मेड बाय क्रिस्पी, तो क्रिस्पी जो टोटल आइटम बना रही है, ठीक है, ऑफ द टोटल आइटम मेड बाय क्रिस्पी, एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, आई थिंक देयर इज सम मिस्टेक, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, just a second, let me check, or there is some misprint, just give me a second. रेशियो शायद पेटीज का है, नहीं, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, हाँ 3/5 ऑफ द टोटल आइटम, ठीक है, यहां पर आएगा 3/5, ठीक है, 3/20, सॉरी मैं बताया तो यहां पे थोड़ा सा एरर है, दिस इज 3/28, ओके, 3/28 ऑफ द टोटल आइटम्स मेड बाय क्रिस्पी आर सैंडविचेस, ओके। क्रिस्पी टोटल आइटम्स कितने बना रही थी, 600, और बॉन टोटल आइटम्स कितने बना रही है, दैट इज 360, ठीक है। अब टू क्वेश्चन ये कह रहा है, आराम से देखो सब लोग, 3/28 ऑफ द टोटल आइटम्स मेड बाय क्रिस्पी आर सैंडविचेस, तो क्रिस्पी सैंडविचेस कितने हैं वो हम यहां पर लिख लेते हैं, दैट इज 3/20 ऑफ द टोटल, सो दिस विल गेट कैंसल आउट, तो 90 आइटम्स हो गए जो क्रिस्पी सैंडविच है। आई होप इट इज क्लियर। एंड 45% ऑफ देम आर पेटीज, तो पेटीज कितनी है, पेटीज कितनी है क्रिस्पी में, ये हमको पता लगाना है, क्रिस्पी, तो क्रिस्पी में पेटीज है 45%, सो 45% ऑफ 600 which becomes 9/20 of 600, this will get cancel out, this turns out to be 270. Can I put it in the table? एक बार टेबल में रख दें, क्रिस्पी सैंडविच 90, क्रिस्पी पेटीज 270, क्रिस्पी सैंडविच 90 एंड क्रिस्पी पेटीज 270, क्लियर है जी? कोई परेशानी किसी को यहां पर? यहां तक क्लियर हो गया? नो प्रॉब्लम एट ऑल, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स टॉक अबाउट समथिंग एल्स, इस लाइन से थोड़ा बाहर निकल जाते हैं। तो बॉन 360, क्रिस्पी 600, दैट इज समथिंग वी आर टॉकिंग अबाउट द टोटल। नाउ दिस वाज 3/28, ठीक है। 2/5 ऑफ द टोटल रिमेनिंग आइटम्स बाय द क्रिस्पी आर बर्गर्स, ठीक है। अभी तक हम कितने आइटम्स कर चुके हैं क्रिस्पी की, अगर हम बात करें तो 90 + 270, सो ऑलरेडी कितने आइटम्स हो चुके हैं हमारे पास में, यस 360 आइटम्स हो चुके हैं आउट ऑफ 600, और उसका जो 2/5 है बचे हुए का, दैट इज गोइंग टू बी बर्गर्स, या फिर आप यहां पर भी बोल सकते हो कि हम ऑलरेडी 90 और 270 आइटम्स हो चुके हैं टोटल 600 में से, तो 600 में से 90 और 270 का सम यानी 360 माइनस कर दो, तो रिमेनिंग आइटम्स कितने बचेंगे, 240, राइट। तो रिमेनिंग आइटम्स हमारे बचे हुए हैं 600 माइनस 360, दैट इज गोइंग टू बी 240 आइटम्स। अब इस रिमेनिंग आइटम्स का 2/5 आइटम्स आर बर्गर्स, राइट। तो क्रिस्पी शॉप पे बर्गर्स कितने बनाए जा रहे हैं, दैट इज 2/5 ऑफ दिस, तो दिस बिकम 5 4 20, 5 8 तो 96 बर्गर्स बनाए जा रहे हैं क्रिस्पी शॉप पे, तो 96 सर बर्गर्स बनाए जा रहे हैं क्रिस्पी शॉप पे, लेट्स पुट इट ओवर देयर। अब आप ध्यान से देखो, क्रिस्पी शॉप में टोटल आइटम्स बन रहे हैं 600, जिसमें से कि आप सैंडविच, पेटीज और बर्गर माइनस कर दो, तो 90 + 270 + 96, अगर आप इसमें से माइनस कर दोगे तो यू विल गेट द नंबर ऑफ पेटीज, दैट इज 144। जल्दी से बताओ यहां तक कोई परेशानी किसी को? टोटल 600 आइटम बन रहे हैं क्रिस्पी में, जिसमें से कि मैंने
सैंडविच, पेटीज, बर्गर माइनस कर दिए, तो सैंडविच, पेटीज, बर्गर कितने हो गए? यस, सैंडविच, पेटीज, बर्गर हो गए 90 प्लस 270 प्लस 96, और उस 600 में से माइनस करेंगे तो वी विल गेट 144, दैट इज द नंबर ऑफ पेस्ट्रीज। 184 आ रहा है, 144 आएगा बेटा, एक बार चेक करो दोबारा। शुड आई कैलकुलेट इट? कैसे किया? इजी है वैसे कैलकुलेशन, 270 प्लस 90 कर लो, 360 हो जाएगा, 360 प्लस 100 कर लो, ठीक है, 460 हो जाएगा, माइनस 4 करोगे 456, तो 600 में से अगर 456 गया तो 144 बचेगा बेटा। हाँ, 600 माइनस 456 बिल्कुल करेक्ट है गरिमा, राइट। चलो जी, वेरी गुड। क्रिस्पी शॉप की बातचीत हो चुकी है, खत्म। अब हम आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स मूव ऑन टू बॉनबॉन। और बॉनबॉन का टोटल हमको पता है ऑलरेडी, दैट इज 360 टोटल आइटम्स बन रहे हैं बॉनबॉन के अंदर, राइट। चलिए जी, द टोटल नंबर ऑफ पेस्ट्रीज मेड बाय बोथ द शॉप्स टुगेदर इज 180। तो टोटल पेस्ट्री जो बना रही है दोनों शॉप मिलके, दैट इज 180। तो पेस्ट्रीज का जो टोटल है वो 180 है, तो यहां पर कितनी पेस्ट्री बन रही होंगी? दैट इज 180 माइनस 144 विच इज इक्वल टू 36 पेस्ट्री बन रही होंगी यहाँ पे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। प्लीज कंफर्म एवरीवन। बहुत ही सही, करेक्ट जवाब दिया है सभी लोगों ने, 36 पेस्ट्रीज इन बॉनबॉन। वेरी गुड बेटा, राइट। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। 20% ऑफ द टोटल आइटम्स मेड बाय बॉनबॉन आर पेटीज। तो बॉनबॉन जो हमारी बेकरी है वो कितनी पेटीज बना रही है? दैट इज समथिंग वी नीड टू गेट इट, दैट इज 20% ऑफ द टोटल आइटम्स। तो 20% ऑफ 360 इज 72, राइट। तो पेटीज मेड बाय बॉनबॉन इज गोइंग टू बी 20% ऑफ 360। बेटा 20% ऑफ 360 बिकम 72। तो कहना है इसे बॉनबॉन जो है वो 72 पेटीज बना रही है। तो पेटीज का टोटल भी निकाल सकते हैं, यहां पे ऐड कर देते हैं भाई, 0 7 7 14 एंड 3। सो कहना है इसे 342, 0 नहीं, 0 प्लस 2 इज 342, दैट बिकम्स टोटल ऑफ पेटीज। करेक्ट है, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। बॉनबॉन मेक्स एन इक्वल नंबर ऑफ सैंडविचेस एंड बर्गर्स। इसका मतलब क्या हुआ? बॉनबॉन जो है सैंडविच और बर्गर बराबर बराबर बना रही है। अच्छा एक बात बताओ, सैंडविच और बर्गर का टोटल कितना होगा? सैंडविच एंड बर्गर का टोटल कैसे निकालेंगे सर? 360 में से इफ आई सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ पेटीज एंड पेस्ट्रीज आई विल गेट द टोटल ऑफ सैंडविच एंड बर्गर। भाई टोटल में से इन दोनों का सम माइनस कर दो, इन दोनों का सम निकल आएगा। सो 360 में से आपको कितना सब्ट्रैक्ट करना है? बेसिकली 70 प्लस 30 इज 100, तो 108 सब्ट्रैक्ट करना है बेसिकली। तो 100 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 260, तो कहना है इसे 252 सम आ गया। और जो इन दोनों का सम है ये दोनों बराबर बराबर है, तो अगर ये x है तो ये भी x होगा, तो x प्लस x 2x हो गया। तो यहां से x की वैल्यू कितनी हो गई? 252 अपॉन 2 सर। तो 2 1 2, 2 2 एंड 2 6। तो कहना है इसे ये दोनों 126 के इक्वल है, ये भी 126 है, ये भी 126 है सर। एंड 126 प्लस 90 इज गोइंग टू बी 216 एंड 96 प्लस 126 इज गोइंग टू बी 222। यहां से हमारी टेबल कंप्लीट हो गई। एनी प्रॉब्लम एनीवन इन दिस टेबल? जल्दी से बताओ, बिकॉज वंस दिस टेबल इज डन दिस क्वेश्चन बिकम्स अ केक वॉक फॉर यू। फिर सारे क्वेश्चंस इससे कनेक्टेड है, बहुत इजीली हो जाएंगे। नो डाउट सर, क्लियर क्लियर क्लियर। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल। कैसे हमने टेबल बना दी। अब हर क्वेश्चन में आपको ये टेबल मिलेगी बनी बनाई, ठीक है, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, यू विल गेट द टेबल। तो फर्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से आंसर बताओ, ए बी सी डी ऑप्शन कौन सा होगा? इजी क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा, टेबल आपके सामने है, ठीक है। राशि नो सर मींस क्लियर, हाँ नो सर क्लियर, ठीक है, क्लियर क्लियर क्लियर। बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस आप लोगों की। ऐसी ही परफॉर्मेंस बस ऑल इंडिया मॉक टेस्ट में दे दो जिन्होंने अभी तक नहीं दिया है, ठीक है। ऑल इंडिया मॉक टेस्ट इज लाइव, सो प्लीज जाकर के उसको दे दो ऑल इंडिया मॉक टेस्ट को, और वहां पर भी ऐसी ही परफॉर्मेंस दो। ऑन द बेसिस ऑफ दैट परफॉर्मेंस एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट टेस्ट यू कैन डिसाइड वेदर टू टेक टेस्ट सीरीज और नॉट। और अगर आप टेस्ट सीरीज लेते हो और उसमें आप बहुत अच्छा परफॉर्म करते हो एंड यू कैन बी सिलेक्टेड इनटू द टॉपर्स बैच, और फिर उसके लिए कुछ भी पे नहीं करना, एंड यू विल बी इन आवर टॉपर्स बैच, और वहां पे फ्री क्लासेस यू कैन अटेंड, ठीक है। तो यार प्लीज डू पार्टिसिपेट एंड जस्ट बी विद अस टिल द एग्जाम, ठीक है। तो ऑल इंडिया मॉक टेस्ट आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्री मॉक है, जाकर के दो सभी लोगों के लिए है, वेदर पेड अनपेड, जाकर के मॉक दे सकते हो एंड यू कैन सी व्हाट इज देयर, एनालाइज कर सकते हो अपनी रैंक वगैरह बिटवीन एवरीवन,
तो इजी हो जाएगा आपके लिए। ठीक है भाई, क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द सम ऑफ द नंबर ऑफ सैंडविचेस मेड बाय मिस्टर बॉन बेकरी शॉप एंड द नंबर ऑफ पेस्ट्रीज मेड बाय क्रिस्पी। तो पेस्ट्रीज मेड बाय क्रिस्पी इज 144, sandwiches is 126. So just add it. Can I say 270 is the correct answer? A option. Easy है, A option is the correct answer. चलिए जी, बहुत बढ़िया, A option is the correct answer. Question number 2 आंसर प्लीज फटाफट से सभी लोग बताएंगे आंसर्स। और जो लोग लेट आए हैं वो लोग यार सब्सक्राइब करके रखो, सो दैट यू विल नो कि कब आना है, कब कोई क्लास चल रही है। बेल आइकन दबाओ, यू विल गेट द नोटिफिकेशन, ईच एंड एवरीथिंग विल बी देयर, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। यस, परफेक्ट आंसर्स, बहुत ही बढ़िया, शानदार परफॉर्मेंस सभी लोगों की आंसर्स आते हुए। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बर्गर्स मेड बाय बोथ द शॉप्स टुगेदर। सिंपल है सर, ऑलरेडी टेबल के अंदर आंसर है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। थर्ड क्वेश्चन आंसर प्लीज, इस बार कुछ कैलकुलेट करना है थोड़ा बहुत। देखो एक बार टेबल में टाइम हुआ, ठीक है, लेट से कि टेबल बनाने में हमको 2 मिनट या 3 मिनट लग भी सकते हैं, तो आप 3 मिनट अगर लग भी गए टेबल बनाने में, उसके बाद में आपको 1 मिनट नहीं लगेगा 5 क्वेश्चन सॉल्व करने में। और अगर मैं कह रहा हूं 2 मिनट भी लग गए, मान लो 1-2 क्वेश्चन डिफिकल्ट भी आ गया जिनमें कुछ कैलकुलेशन करनी पड़ रही है, तो भी आप देखो यार 4-5 मिनट्स में अगर एक सेट कर रहे हो जो आपको गारंटी दे रहा है 5 मार्क्स की, उससे अच्छा क्या होगा। तो क्वांट इज द मोस्ट स्कोरिंग सेक्शन, ट्रस्ट मी ऑन दिस, कि पक्का से मैं बता रहा हूं आपको, क्वांट इज द मोस्ट स्कोरिंग सेक्शन। उसको ये नहीं कि मेरा वीक है मैं नहीं पढ़ूंगा, वीक हो स्ट्रांग हो, पढ़ना ही पढ़ना है, उसमें तो अच्छा करना ही करना है अगर अच्छी जगह जाना है तो, है ना। वेरी गुड, गौरी ने आंसर दिया है अभी तक। लेट्स सी गौरी का आंसर सही होता है या नहीं होता। व्हाट अबाउट अदर्स भाई, आंसर दो फटाफट। फाइंड द एवरेज ऑफ द नंबर ऑफ पेस्ट्रीज, सैंडविचेस एंड पेटीज मेड बाय क्रिस्पी। तो पेस्ट्रीज, सैंडविचेस एंड पेटीज का एवरेज निकालना है। सो एवरेज क्या होता है, आई होप एवरीबडी नोज, दैट इज सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन, right, divide by the number of observation. So we are talking about 3 observation only. 270 plus 90 is how much? 360, right? And 360 plus 100 is 460. 460 plus 40 is 500. Can I say it is 504? Please correct me if I am wrong. हाँ भाई, तो 3 1s are 3, 2 0, 3 6s are 18 and 3 8s are 24. So 168 has to be the correct answer. आई होप इट इज क्लियर टू ऑल। अच्छा, एक और तरीका बताओ इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ये तो सभी को आता होगा। एक और क्या कुछ और भी कर सकते थे क्या सर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए? एक बार सब लोग, ये सबने कर लिया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया। एक और तरीका जो सिज्जन ने बताया है, कैन वी डू इट लाइक दिस? ऑफ कोर्स सर, हम इन तीनों का सम निकालने की बजाय ये भी तो कर सकते थे कि 600 में से 96 माइनस कर दो, वही इन तीनों का सम होगा, है ना, और ये ओरल कैलकुलेशन हो जाती। इन दैट सिनेरियो it would have become a oral calculation for you. तो 600 में से आप 100 माइनस कर दो, कितना हुआ? 500। 4 माइनस कम करना था तो 4 ऐड कर दो, 504 डिवाइड बाय 3, सीधे आप आंसर बोलते हैं 168। करेक्ट है। अच्छा, एक और तरीका इवन मोर इजी, है ना मनु, देखो एक और चीज भी कर सकते थे। हमें एवरेज निकालनी थी इसकी 90, 270, 144 और 3 से डिवाइड करना है, तो सबको इंडिविजुअली 3 से डिवाइड करके ऐड कर दू। 90 को 3 से डिवाइड किया तो 30 आ गया, 270 को 3 से डिवाइड किया तो 90 आ गया, ठीक है, 144 को 3 से डिवाइड किया तो 44 आ गया, राइट। 90 प्लस 30 120 सॉरी प्लस 44 इज 168 विच इज योर करेक्ट आंसर। समझ लो मैंने क्या किया भाई, तीनों को सम करके डिवाइड करो या तीनों को अलग अलग डिवाइड करके सम कर लो, मींस द सेम। तो 90 बाय 3 मैंने अलग कर लिया, दैट इज 30, 270 बाय 3 अलग कर लिया, दैट इज 90, 144 बाय 3 अलग कर लिया 44, और तीनों को ऐड कर दिया, वी गॉट द एवरेज। तो कैसे भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है, जैसे भी करना चाहो। फास्ट करना है, एट द एंड ऑफ द डे समय का बचाव करना है, और कुछ भी नहीं है। ठीक है जी, अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर, ओ सॉरी 48 था क्या, हैव आई डन सम मिस्टेक क्या? 48 आएगा ना, ठीक है ठीक है, आप समझ गए ना, तो अभी 168 होगा, समझना इज मोर इंपॉर्टेंट। फोर्थ का आंसर बताइए जी फटाफट सभी लोग, व्हाट शुड बी द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर फोर्थ? 30 प्लस 90 प्लस 48, यस करेक्ट, यू गॉट द लॉजिक। तीनों चीजें समझ में आ गई सबको, तीनों 3 तरीके से हो सकता था। आंसर्स प्लीज। क्वेश्चन नंबर फोर्थ,
जल्दी से बताओ, इजी है यार, डोंट बी लाइक लेके बैठे हो इजी से क्वेश्चन को। सिज्जन ने बता दिया, गरिमा ने बता दिया। नहीं आलोक, अभी आप ही के आगे बनाई है मैंने टेबल, या तो आप लेट आए हो, मुझे लग रहा है पहला कमेंट आ रहा है, वरना आप अगर होते क्लास में तो कमेंट जरूर करते। लेट आए होंगे इसलिए टेबल बनाना डिफिकल्ट लग रहा होगा। जब क्लास खत्म हो जाए तो वीडियो में देखना, टेबल बहुत इजीली बन गई थी यार। या फिर इन बच्चों से पूछ लो, बताओ भाई बच्चों, टेबल बनाना कोई मुश्किल था क्या? इजीली नहीं बन गई थी टेबल? आप ही लोगों ने बनाया था, आप लोगों ने सारे आंसर बताए थे, मैंने नहीं बनाई थी, इन्हीं लोगों ने सॉल्व करी थी। ठीक है, चलो एनीवेज, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ पेटीज मेड बाय द क्रिस्पी एंड द नंबर ऑफ पेटीज मेड बाय क्रिस्पी, दैट इज 270, एंड द नंबर ऑफ पेस्ट्रीज मेड बाय बॉनबॉन, दैट इज 36। तो 270 में से 36 सब्ट्रैक्ट करना है बेसिकली। देखो सब लोग इजी बता रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा आलोक, ठीक है, तुम्हारे भाई बंधु ही बोल रहे हैं सारे। सो डी ऑप्शन बिकम्स योर आंसर, इजी पीजी। देगा सभी लोग कह रहे हैं इजी था भाई, बहुत इजी था, है ना। चलो जी, लास्ट क्वेश्चन कनेक्टेड विद दिस डेटा सेट। और इसी के साथ जो लोग लेट ज्वाइन करे हैं वो लोग भी अब अगला सेट शुरू होने वाला है, बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ज्वाइन करते वक्त प्लीज कृपा करके लाइक का बटन दबा दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा जितने लोगों को भी जानते हो, जितने ग्रुप में भी एडेड हो, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मन्नू, गरिमा, थैंक यू सो मच है जी। यस, आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 5 प्लीज, फास्ट। The total number of burgers made by Bonbon is what percentage of the total number of items made by Crispy? जो मेरे स्टूडेंट है वो अच्छे से जानते हैं, परसेंटेज में हमें बस एक ही फॉर्मूला याद रखना होता है कि जिससे कंपेयर कर रहे हैं, द क्वांटिटी बाय विच वी आर कंपेयरिंग हैज टू बी इन द डिनोमिनेटर, द क्वांटिटी विच इज टू बी कंपेयर्ड हैज टू बी इन द न्यूमरेटर, और परसेंटेज के लिए इनटू 100 कर देंगे, एज सिंपल एज दैट। तो यहां पर आप देखो, नंबर ऑफ बर्गर्स मेड बाय बॉनबॉन, तो मिस्टर बॉनबॉन कितने बर्गर बना रहा है? 126। तो 126 को कंपेयर किया जा रहा है, और किससे कंपेयर किया जा रहा है? व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ आइटम्स मेड बाय क्रिस्पी। तो मिस्टर क्रिस्पी बना रहे हैं 600 आइटम, तो इस 600 के कंपैरिजन में ये कितना परसेंट है, और परसेंटेज के लिए इनटू 100 कर लेंगे। तो 6 2 जा 6 1 जा, क्या कोई कैलकुलेशन है यहां पर? आप बताओ, इजी पीजी है ना, नो कैलकुलेशन। सो दिस सेट, अगर आप, अब हम थोड़ा सा एनालाइज करते हैं इस सेट को, है ना। आप देखो इस वाले क्वेश्चन में, आप मुझे सब लोग सच से बताओ, ओरली हो जाएगा बिल्कुल जी। आप लोग मुझे एक चीज बताओ, ये टेबल बनाने में, इस क्वेश्चन के टेबल को बनाने में बताना कि मैं कुछ गलत तो नहीं बोल रहा हूं, 2 से 3 मिनट लगने चाहिए आइडियली, मैक्सिमम टाइम बता रहा हूं, या आप थोड़े से वीक भी हो, कैलकुलेशन और टाइम ज्यादा लगता है, तो मैक्स टू मैक्स 3 to 4 मिनट, इससे ज्यादा तो नहीं लगने चाहिए। मानते हो 4 मिनट से ऊपर तो नहीं लगेंगे फॉर श्योर। एनीवन टू मेक दिस टेबल, इजी सी टेबल है, इजी सी कैलकुलेशन है, आप लोगों के आगे करिए मैंने। 4 मिनट वॉज सफिशिएंट टू मेक दिस टेबल। अच्छा जी, अब इस टेबल को बनाने के बाद में इस क्वेश्चन को आंसर करने में एडिशन करनी है, नॉट मोर देन 20 सेकेंड इट वुड टेक, ठीक है। 4 मिनट मैंने दे दिए, इसीलिए मैंने 4 मिनट दे दिए, ठीक है। इस क्वेश्चन को आंसर करने में 20 सेकंड से ऊपर नहीं लगेंगे। 2 नंबर ऐड करने हैं, 144 126, अब 20 सेकंड से ऊपर नहीं लगने चाहिए, ठीक है जी। इस क्वेश्चन को आंसर करने में तो मेरे ख्याल से 5 सेकंड लगने चाहिए, बिकॉज टेबल बन गई है, तो टेबल में सामने आंसर है, ठीक है। टेबल में सामने आंसर है, कुछ नहीं करना है, बस मार्क करना है। गोले भरने में जो टाइम लगेगा वही लगेगा, और कुछ टाइम नहीं लगने वाला है, राइट। एग्जैक्टली, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, कि आप लोग कहते हो ना हमारे को बहुत टाइम लग जाता है, उन्हीं लोगों से मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। इस क्वेश्चन में हो सकता है कि आप लेट से 30 सेकंड्स लगा दो एडिशन वगैरह करने में, या कुछ लोग इसमें 40 सेकंड्स भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। 30 to 40 सेकंड मैक्स टू मैक्स, करेक्ट। चलो जी, इस वाले क्वेश्चन में डिफरेंस करना है, उसमें ऐड करना था, इसमें डिफरेंस करना है, 20 सेकंड से ऊपर नहीं लगेंगे, ठीक है। और इस वाले क्वेश्चन में वंस अगेन लास्ट में अगर आप देखोगे परसेंटेज निकालना है, मान लेता हूं कि मैं 30-40 सेकंड ले लोगे, ऑल तो लगेंगे नहीं, ठीक है। कहना इससे टोटल 6 मिनट के अंदर ये क्वेश्चन हो जाना चाहिए था, मैक्स टू मैक्स, दैट इज द मैक्सिमम टाइम फॉर दिस सेट। और 6 मिनट में अगर आपके 5 नंबर आ रहे हैं, ये मैं तब बता रहा हूं जब आपकी कैलकुलेशन थोड़ी शुरू है, कोई बच्चा इसको 4 में भी कर सकता है, बट 4 to 6 मिनट्स मैं बोलूंगा, मैक्सिमम टाइम इज 6 मिनट्स। तो यार इससे अच्छी बात क्या होगी, इससे इजीएस्ट सेक्शन कहां होगा, गलती का कोई स्कोप नहीं, नेगेटिव आने के चांस नहीं, तुक्का कोई मारना नहीं, सीधे सीधे आंसर मैच हो रहा है, लॉजिकली सब कुछ वो हो रहा है। इसीलिए मैं कहता हूं क्वांट से डरो मत। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, गुरु मंत्र बता रहा हूं अब मैं आपको, ठीक है। वो गुरु मंत्र क्या है कि भाई, और ऐसे गुरु मंत्र वैसे हम टॉपर्स बैच में बहुत सारे डिस्कस करते हैं, बट एक मैं यहां पर ही फ्री में यूट्यूब पे ही रिवील कर देता हूं। चलो आप लोगों को एक चीज हमेशा याद रखना है यार,
कि ना क्वांट के क्वेश्चन से घबराना नहीं है। हम लोग क्या करते हैं कि यार क्वांट के क्वेश्चन से थोड़ा सा घबरा जाते हैं, थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं, हमें लगता है कि क्वांट में हम अच्छा नहीं कर पाएंगे। या फिर एक बात हमेशा याद रखना, इजी क्वेश्चन किसी भी सेक्शन के आपके लिए आसान है, चाहे वो आपको आता है या नहीं आता। मीडियम क्वेश्चन हर एक सेक्शन के आपके लिए मीडियम लेवल ही है, और डिफिकल्ट किसी का भी नहीं करना है। चाहे आप प्यार करते हो, आप दीवाने हो उस सेक्शन के, डिफिकल्ट नहीं करना है। इजी किसी का छोड़ना नहीं है, मीडियम करना नहीं है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैं क्वांट के लिए बताने जा रहा हूं, क्वांट के किसी भी टॉपिक के बहुत ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करने हैं। लेट से आपने परसेंटेज टॉपिक पढ़ा तो उसके बहुत ज्यादा क्वेश्चन मत करो वन लाइनर्स, क्योंकि आपके एग्जाम में वन लाइनर आने ही नहीं वाले। आपके एग्जाम में इस टाइप का डेटाबेस क्वेश्चन आएगा, तो आपको बस ये लॉजिक पता होना चाहिए, परसेंटेज होता क्या है, परसेंटेज चेंज क्या होता है, परसेंटेज मोर लेस क्या होता है, फ्रैक्शन क्या होती है, दैट्स इट। ये नहीं कि कैट लेवल की बुक्स उठा लो, उसे सॉल्व करना शुरू कर दो। सेम गोज विद रेशियोज, तो इसका मतलब क्लासेस आर मोर देन सफिशिएंट। जो भी हम क्लासेस में पढ़ते हैं उतना ही कर लोगे, उसके बाद सीधे केसलेट सॉल्व करोगे, ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन करोगे, आपके लिए सफिशिएंट है। क्वांट नहीं आ रही है, वन लाइनर क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, तो बहुत ज्यादा टाइप ऑफ क्वेश्चन में नहीं घुसना है, ठीक है, पक्का। चलो जी, बहुत बढ़िया। और वांट टू ज्वाइन टॉपर्स बैच हम लोग यार करने वाले हैं। टेस्ट सीरीज में आपको एटलीस्ट एनरोल करना पड़ेगा टू बी पार्ट ऑफ दिस टॉपर्स बैच। ऑल इंडिया मॉक क्लैट तो अभी चल ही रहा है, उसको तो आप लोग दे ही रहे होंगे, प्लीज दे दो, ठीक है। स्टैंड अ चांस टू गेट इट टू द क्लैट 2000 टॉपर्स बैच, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज दो, उसमें आप अच्छे मार्क्स लेकर के आते हो टेस्ट में, मॉक्स में, तो फिर यू विल बी पार्ट ऑफ टॉपर्स बैच, जहां पे वी आर गोइंग टू टेक सेशंस, और उन सेशंस में एक्सक्लूसिवली फॉर टॉपर्स होंगे, जहां पे हम ऐसी बहुत सारी स्ट्रैटेजीज डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। क्वांट अगर सही कर लिया तो फिल नंबर उसमें पक्के, एग्जैक्टली बेटा, दैट्स इट। सिर्फ कैलकुलेट ही प्रैक्टिस करो, ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन भी थोड़े से कर लो, क्योंकि इस साल आ सकते हैं ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन। बिल्कुल सही बात है प्रांजलि। चलिए जी, आई होप फर्स्ट सेट इज क्लियर। जो लोग नए ज्वाइन कर रहे हैं, सेट नंबर 2 पे आ गए बेटा हम, आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। ग्रे स्मोक बेटा, अभी होगा अल्पा मैम का सेशन मेरे बाद 4 बजे से, ठीक है, राइट। अब आप लोग बताओ इस सेट को देख करके, वंस अगेन डायरेक्शंस आर इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन किस बारे में बात कर रहा है, दैट इज इंपॉर्टेंट। एक बार हमको बस ये देखना है किस बारे में बात करना है, बार बार इस डायरेक्शन को नहीं पढ़ना, जस्ट वंस हमें रीड करना है, फिर भूल जाना है, फिर बस टेबल के ऊपर फोकस करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन टेबल बेस्ड है, केसलेट बेस्ड नहीं है, पैराग्राफ बेस्ड नहीं है। तो एक बार ढंग से रीड करके समझ लेते हैं क्या बोल रहे हैं, ठीक है। जैसे देखो, स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली टू आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। एन इंस्टीट्यूट कंडक्ट्स 5 डिफरेंट एग्जाम। कोई एक इंस्टीट्यूट है, ठीक है, वो 5 डिफरेंट एग्जाम्स कंडक्ट कर रहा है, ठीक है। कौन कौन से एग्जाम, एग्जाम ए, एग्जाम बी, सी, डी एंड ई। सो देयर आर 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जाम विच दिस इंस्टीट्यूट इज कंडक्टिंग, राइट। द इंस्टीट्यूट इनकर्स सम कॉस्ट फॉर कंडक्टिंग द एग्जाम्स, ठीक है। कुछ कुछ उसके पैसे लग रहे हैं एग्जाम कंडक्ट करवाने में। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल क्लैट जो है वो आपसे क्लैट का एग्जाम कंडक्ट करवा रही है, ठीक है, तो उस क्लैट के एग्जाम को कंडक्ट कराने में उनका कुछ खर्चा हो रहा होगा ना, राइट, तभी तो वो आपसे फीस लेते हैं, राइट। जैसे कि मान लो सेंटर वालों को पैसे देने पड़ेंगे, जहां पर सेंटर, मान लो किसी स्कूल में एग्जाम हो रहा है तो उन स्कूल वालों को पैसे देने पड़ेंगे, क्योंकि वो इन्विजिलेटर को पैसे देंगे, राइट। और सारे इतने सारे हेल्पिंग स्टाफ होगा, उनको पैसा दिया जाएगा, या फिर लाइट की कॉस्ट होगी, पेपर की कॉस्ट होगी। सो देयर आर एन नंबर ऑफ कॉस्ट, जिससे पेपर बनवाएंगे उसकी कॉस्ट होगी, जिस मशीन में पेपर चेक होगा उसकी कॉस्ट होगी। तो आप जो सारे एक्सपेंसेस उस इंस्टीट्यूट के हो रहे हैं, ध्यान से देखना, वो सारे एक्सपेंसेस यहां पर लिखे हुए हैं कि जो ए एग्जाम को कराने में उस इंस्टीट्यूट का इतने रुपए का खर्चा आता है। कितने का खर्चा आ रहा है, 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, 20 लाख रुपए का खर्चा हो रहा है ए एग्जाम को कंडक्ट करवाने में। और ए एग्जाम के लिए कितने बच्चों ने रजिस्टर कराए, 12,000 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है, और हर एक बच्चे से 180 रुपए फीस ली गई है। तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि इंस्टीट्यूट को फायदा हुआ या नुकसान हुआ ए एग्जाम कराने से? क्वेश्चन समझ गए मेरा भाई? हर एक बच्चे से कुछ फीस, जैसे आपसे क्लैट वाले भी कुछ फीस ले रहे होंगे, 3-4 हजार रुपए, 5,000 जो भी ले रहे हैं, तो वो आपसे कुछ फीस ले रहे होंगे। जितने बच्चे रजिस्ट्रेशन करेंगे उससे मल्टीप्लाई कर दो, वो उनका रिवेन्यू हो गया, लेकिन उनका कुछ खर्चा भी तो हो रहा होगा, और रिवेन्यू में से खर्चा माइनस करोगे तो लॉस और प्रॉफिट पता लग जाएगा। तो बताओ ए एग्जाम में उन्हें लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है, और कितना हो रहा है? ठीक है, जल्दी से, फायदा हुआ है ए एग्जाम करवा के। चलो ए एग्जाम में देखो टोटल इनका रिवेन्यू कितना आया है, टोटल पैसा कितना आया है, ये बताओ पहले तो सर टोटल पैसा आया इनका, इनके 180 रुपए का एक फॉर्म है, फीस है,
और 12,000 बच्चों ने अपेयर किया है, राइट। तो 12 इंटू 18 कर लेते हैं सर, 8 2 16, 10 11 2। सो कैन आई से सर 2 1 6 1 2 3 4, राइट। तो सर इनको तो 21 लाख रुपए के आसपास आए, 21,60,000 रुपए आए हैं, राइट। और इनका खर्चा कितने का हुआ है, 20 लाख रुपए का हुआ है, तो 1,16,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ ना। आर यू ऑल गेटिंग इट? टोटल एक्सपेंसेस कितने हुए थे इनके, 20 लाख रुपए के, करेक्ट। कुछ तो बोलो भाई, हाँ ना यस नो, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है। हाँ सर समझ आ रहा है, नहीं आ रहा, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, ठीक है भाई। टोटल खर्चा हुआ 20 लाख रुपए का, और टोटल जो रिवेन्यू आया फीस से वो आया 21,60,000, ठीक है। तो कहना है इससे प्रॉफिट कितने का हुआ, 1,60,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया, 1,60,000 रुपीज का प्रॉफिट हुआ ए एग्जाम कराने से। तो ऐसे ही हमें डिफरेंट चीजें होंगी, वो हमें निकालनी है। अच्छा, कुछ और इंफॉर्मेशन भी दी हुई है। सो इट चार्जेस डिफरेंट रजिस्ट्रेशन फीस, ये करके दिया हुआ है, पर कैंडिडेट इंस्टीट्यूट इज गिवन। एक इंपॉर्टेंट चीज दी हुई है, अज्यूम दैट अदर फीस इंस्टीट्यूट एंड अदर एक्सपेंसेस। अब मतलब ये कहना चाह रहा है यहां पर कि कोई और फीस नहीं है, बस यही है जो फीस है, ठीक है, और कुछ खर्चा नहीं हो रहा है, जो खर्चा लिखा हुआ है वही है, क्लियर। तो यार इट्स इंपॉर्टेंट ना कि एक बार हम ये सारी इंफॉर्मेशन यहां पे निकाल लें। जैसे ये तो इंफॉर्मेशन जो गिवन है, आप टेबल को ध्यान से देखो। अगर मैं ए एग्जाम की बात करूं तो ए एग्जाम में नंबर ऑफ कैंडिडेट पता है, फीस पर कैंडिडेट पता है, और टोटल जो खर्चा आ रहा है इंस्टीट्यूट का वो पता है। तो टोटल फीस हम निकाल सकते हैं ना यहां पर। कैसे निकालेंगे सर, जितने भी कैंडिडेट्स हैं इनटू फीस पर कैंडिडेट मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टोटल फीस निकल करके आ जाएगी, दैट इज 216 1 2 3 4। ये हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। ऐसे करके हम सबकी फीस निकाल लेते हैं। तो जल्दी से बताओ बी एग्जाम कंडक्ट करवाने में कितनी फीस लगेगी, बी एग्जाम कंडक्ट करवाने में टोटल पैसा कितना मिलेगा, ठीक है। खर्चा तो हो रहा है 25 लाख का बी एग्जाम में, लेकिन पैसा कितना मिला वहां से, दैट इज 15,400 कैंडिडेट बैठे हैं और 200 पर कैंडिडेट फीस है। तो 154 इंटू 2 इज 308 एंड 103 zeros, ठीक है जी, परफेक्ट है, नो इश्यूज। ऐसे ही सी एग्जाम कंडक्ट कराने में टोटल रिवेन्यू या टोटल फीस कितनी आई है, जल्दी से बताओ भाई। यस, दैट इज 13, इतना तो उनका एक्सपेंसेस हुआ, फॉरगेट अबाउट इट। 13,000 इंटू 400, 13 4 इज गोइंग टू बी वेरी गुड, 52, 1 2 3 4 5 0, परफेक्ट है जी, परफेक्ट। डी एग्जाम में कितना होगा जी, 85 इंटू 5 करना है, तो 5 5 25, 5 8 40, 425। So 425 and how many zeros are there? 1 2 3 4 0, ठीक है। लास्ट ई एग्जाम का और बता दो कितना खर्चा होगा। 2500 कैंडिडेटों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है और एक आदमी से 1200 रुपए फीस ली गई है, तो 25 इंटू 12 करना पड़ेगा। तो कर लेते हैं, 5 2 10, 2 2 4, 10 and 2 1 2 4 3, सॉरी, सो 300, ठीक है, एंड 1 2 3 4, 1 2 3 4, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें यहां तक किसी को। भाई ए एग्जाम कंडक्ट कराने में कितना खर्चा आया आपको पता है, बी एग्जाम कंडक्ट कराने में कितना खर्चा आया ये पता है, सबसे कितना पैसा, कितना रिवेन्यू आया या टोटल फीस कितनी ली गई ये भी आपको पता है। अच्छा एक बात बताओ अब मुझे फटाफट से कि इंस्टीट्यूट ने टोटल फीस कितनी ली है या टोटल रिवेन्यू कितना है इंस्टीट्यूट का, जल्दी से। जल्दी बताओ भाई, टोटल रिवेन्यू कितना है इंस्टीट्यूट का, इन सबको ऐड करना पड़ेगा, फटाफट बताओ। इजी तरीका बताओ कैसे ऐड करो, उल्टा एडिशन कर लो। देखो ये 30 लाख है, ये 42 लाख है, 42 लाख प्लस 30 लाख कितना होगा जल्दी बताओ। 40 प्लस 30 70, 72 हो गया, 72 प्लस 50, 70 प्लस 50 120, तो 124 हो गया। 124 प्लस 30 is going to be how much, 154, 154 plus 20 is 174, 175, ठीक है। तो 175 lakhs तो हो गया, 175 lakhs तो हो ही गया, करेक्ट है। उसके अलावा अब देखो 60,000 plus 80,000 is going to be how much, 140,000, 140,000 plus 50,000, 190,000,
तो 1,90,000 और इसमें ऐड कर देंगे, सो दैट बिकम्स 17 लाख 1769 1 2 3 4। क्लियर है? ऐड कर लो एक बार ढंग से सब लोग, फटाफट बता दो मुझे सही आ रहा है नहीं आ रहा। तो 1,769,000 इज गोइंग टू बी द टोटल फीस फॉर कंडक्टिंग द एग्जाम्स जो उन्होंने बच्चों से चार्ज करी है। एक बार टोटल एक्सपेंसेस भी देख लो सो दैट पता लग जाए इंस्टीट्यूट को ओवरऑल फायदा हुआ या नुकसान। ठीक है भाई, एक बार टोटल चेक कर लो इंस्टीट्यूट को फायदा हुआ या नुकसान। तो 20 लाख प्लस 25 लाख इज गोइंग टू बी हाउ मच? 45 लाख, 45 प्लस 60 105 110 110 प्लस 70 इज 180, सो 180 lakhs। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़। ठीक है, 1,80,00,000 रुपए आए हैं जी, और यहां पर 1,76,90,000 चले गए हैं, मतलब इतने पैसे आए हैं इतने लगे हैं। तो यानी ओवरऑल प्रॉफिट हुआ या लॉस? जल्दी से बता दो भाई, ओवरऑल प्रॉफिट हुआ या लॉस? इंस्टीट्यूट को ओवरऑल प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ इस एग्जाम को कंडक्ट कराने में? हाँ बिल्कुल करेक्ट है, 180 लाख ये आ गया, और 180 लाख मतलब 1,80,00,000 रुपीस, और उधर 1,76,90,000 का खर्चा हो गया। तो ओवरऑल इंस्टीट्यूट को हो रहा है लॉस। ठीक है, लेकिन फिर भी वो बच्चों के भविष्य के लिए एग्जाम कंडक्ट करवा रहे हैं लॉस करवा करके भी। ठीक है, कितने अच्छे इंस्टीट्यूट वाले देख रहे हो। चलो फटाफट से एक और चीज बताओ, टोटल फीस पर कैंडिडेट का भी सम कर लो, एक बार ऐड कर लो इन्हें भी। ठीक है भाई, 1200 400 हो गया 1600 1600 1800 1900 और ये 2065 हो जाएगा। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, परफेक्ट। जल्दी से नंबर ऑफ कैंडिडेट बता दो, टोटल कितने कैंडिडेट्स हैं? टोटल सारे एग्जाम देने वाले कैंडिडेट का सम कितना है? फटाफट फास्ट, सेम तरीके से ऐड करना। अच्छा कैलकुलेट भी कर लिया, क्या बात है, जबरदस्त। 92,900 सर। और एक बार ये सारी इंफॉर्मेशन आपके पास है, अब सारे क्वेश्चन आपके लिए केक वॉक बन जाएंगे, एज आई टोल्ड यू। ठीक है भाई, इजी पीजी। वंस ऑल ऑफ दिस इंफॉर्मेशन इज विद यू, अब आप देखना सारे क्वेश्चन आपके लिए इजी हो जाएंगे। ठीक, कुछ भी नया नहीं किया। नंबर ऑफ कैंडिडेट गिवन थे, फीस पर कैंडिडेट गिवन थी, नंबर ऑफ कैंडिडेट इनटू फीस पर कैंडिडेट करेंगे, दैट इज योर टोटल फीस। टोटल एक्सपेंसेस हमको निकालने नहीं थे, वो भी गिवन थे क्वेश्चन के अंदर में। नाउ वी कैन गो फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चन वन बाय वन। शुरू कर दे, लेट्स गो फॉर द क्वेश्चन। इजी है ना? आलोक कंगे, आलोक प्रताप सिंह यहां पर है ही नहीं। आलोक प्रताप सिंह कह रहे थे डिफिकल्ट होता है टेबल बनाना, कहां डिफिकल्ट है, इजी है। सभी कह रहे हैं इजी, मैं नहीं कह रहा हूं, आपके भाई बंधु कह रहे हैं। चलो जी, फर्स्ट क्वेश्चन, ऐसी कुछ टेबल लगेगी। जो ये येलो वाला है ये सब हमने कैलकुलेट किया है, ये जो व्हाइट वाला है ये ऑलरेडी गिवन था क्वेश्चन के अंदर में। ठीक है, ये वाली चीजें हमने कैलकुलेट करके निकाल ली है, सो दैट अवर कैलकुलेशन बिकम इजी फॉर ऑल द क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, वेटिंग फॉर योर आंसर, मतलब ओवरऑल क्वेश्चन नंबर 6, बट फर्स्ट क्वेश्चन फॉर दिस सेट। आलोक भी कह रहा है यस सर, है ना आलोक बेटा, इजी होता है यार, डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है, बस घुस जाओ क्वेश्चन के अंदर में, इजी हो जाता है। अब बताओ क्या ये ओरल क्वेश्चन है या नहीं? जल्दी से बता दो फटाफट फास्ट तरीके से। टोटल रजिस्ट्रेशन फीस कलेक्टेड बाय द इंस्टीट्यूट इज हाईएस्ट फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम? सामने लिखी हुई है, कौन से एग्जाम के लिए हाईएस्ट फीस आ रही है भाई? सी एग्जाम के लिए हाईएस्ट आ रही है, दैट बिकम्स योर आंसर। ऑलरेडी सारी कैलकुलेशन आप कर चुके हो, कुछ भी नई कैलकुलेशन करनी नहीं है, ऑब्जर्वेशन स्किल्स आर सफिशिएंट, बस देखना है आंसर उठाना है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 2, कनेक्टेड विद दिस डेटा सेट, जल्दी से बता दो क्या सवाल जवाब है, क्या आंसर है इसका, फास्ट एवरीवन। यस बताइए भाई, अरे बोलो बोलो, इजी है, जहां परसेंटेज आता है वहां अलग से घबरा जाते हैं कुछ लोग, हैं परसेंटेज देख के क्यों घबराते हो भाई? फाइंड द अप्रोक्सीमेट लॉस परसेंटेज इनकर्ड बाय द इंस्टीट्यूट इन कंडक्टिंग सी एग्जाम। सी एग्जाम को कंडक्ट कराने में कितना लॉस हुआ? पहले तो ये बताओ, सी को कराने में लॉस हुआ फायदा हुआ? हाँ जी भाई, सी को करवाने में लॉस हो रहा है अपना कि फायदा हो रहा है? सी एग्जाम को कंडक्ट कराने में ऑब्वियसली लॉस हो रहा है, टोटल फीस कम आ रही है
और जो है टोटल एक्सपेंसेस हमारे ज्यादा हो जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली लॉस हो रहा है। ठीक है, तो अब हमें निकालना है कितना लॉस हो रहा है। तो लॉस परसेंटेज कैसे निकालते थे भाई? लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू लॉस डिवाइडेड बाय दी एक्सपेंसेस, टोटल खर्चा जो हो रहा है। तो टोटल खर्चा तो उस बेचारे का हो रहा है 65 lakhs का। ओ सॉरी, और जीरोस ऐड करने पड़ेंगे, माय मिस्टेक, कॉमास हटा देता हूं। ठीक है, 1 10 100 सही था सही तो किया था मैंने। ठीक है, चलो हाँ, और इन दोनों का डिफरेंस ऊपर आ जाएगा। कितना डिफरेंस है? 65 लाख में से अगर 52 lakhs गए तो 13 lakhs बचे। वैसे चाहो तो 0 0 हटा करके लैक्स में भी कर सकते हो, और परसेंटेज के लिए इंटू 100, वो तो वैसे भी कट जाने हैं ऊपर नीचे। 13 5 20%। डिफिकल्ट कैलकुलेशन है, इजी। अप्रोक्सीमेटली क्या बात कर रहे हो मन्नू बेटा, ध्यान से देखो, एग्जैक्ट आंसर आएगा 13 5 65 होता है ना। लॉस कितने का हो रहा है? टोटल एक्सपेंस में से टोटल फीस माइनस कर दो, लॉस हो रहा है 13 लाख रुपीस का। ठीक है, और कितना खर्चा हो रहा था? 65 lakhs का खर्चा हो रहा है, तो 13 लाख का लॉस हो रहा है इतना खर्चा करने पे, यानी 20% का लॉस हो गया। ठीक है बेटा मनु, 20 है डायरेक्ट। अप्रोक्सीमेशन तो मैंने जानबूझ के कंफ्यूज करने के लिए लिखा था, एग्जैक्ट आंसर आएगा 20% का लॉस हो रहा है। ए ऑप्शन इज द करेक्ट। हाँ, लैक्स लिखने की जरूरत ही नहीं है, आप चाहो ना, ये तो मैंने इससे लिखा है कि आप लोग कंफ्यूज आते हो, अदरवाइज आप ऐसे भी कर सकते थे और इजी होता। देखो परसेंटेज में मैंने हमेशा बोला है, आप 65 lakhs में से 52 lakhs गया तो यहां पर लिख दो 13 lakhs। ठीक है, डिवाइड बाय 65 lakhs, परसेंटेज के लिए इंटू 100 lakhs, अपने आप चलेगा। देखने में भी मजेदार लग रहा है, सुंदर सा है ना, और इजी पीजी सा भी लग रहा है, तो थोड़ा डरते कम है हम ऐसे लिखेंगे तो आपकी मर्जी है। इंस्टेड ऑफ जीरो जस्ट राइट लैक्स, हाँ बिल्कुल लिखो, आपकी मर्जी है। मैं तो खुद यही प्रमोट करता हूं, लेकिन काफी सारे बच्चे फिर कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसलिए फिर मुझे वापस यहाँ पे आना पड़ता है। राइट, जल्दी से बताओ अब। एग्जैक्टली मन्नू, आंसर वंस अगेन अ ओरल क्वेश्चन, सभी को कर लेना चाहिए भाई। Okay. For how many of the given exams did the institute incur a loss on conducting that exam? टू मत बताओ कौन से इंस्टीट्यूट है। जैसे मान लो ए और बी है तो कॉमा करके बताओ सर ए कॉमा बी, या आपको लग रहा है ए और सी है तो ए और सी बता दो, ऐसे करके बताओ कौन से इंस्टीट्यूट है जल्दी से। काफी सारे लोग 2 बोल रहे हैं, काफी सारे लोग 3 बोल रहे हैं, कौन से इंस्टीट्यूट है वो पूछ रहा हूं मैं। ठीक है, गरिमा ने बता दिया है, बाकी लोग भी फटाफट से बता दो भैया कौन से इंस्टीट्यूट है। फॉर हाउ मेनी ऑफ द गिवन एग्जाम डिड द इंस्टीट्यूट इनकर्स अ लॉस ऑन दैट एग्जाम। तो आप देखो टोटल फीस यहां पर ज्यादा है, तो ऑब्वियसली यहां पे लॉस नहीं हो रहा, फायदा हो रहा होगा। ठीक है, यहां पर भी टोटल फीस जा रहा है तो यहां भी फायदा हो रहा है इंस्टीट्यूट को। यहां पर हो गया इंस्टीट्यूट को लॉस, ठीक है, यहां पर भी हो गया इंस्टीट्यूट को लॉस, और यहां पर हो गया इंस्टीट्यूट को फायदा। तो सी और डी 2 इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जहां पर इंस्टीट्यूट को, सी और डी एग्जाम ऐसे हैं जहां पर इंस्टीट्यूट को लॉस हो रहा है, बाकी एग्जाम्स कंडक्ट कराने में इंस्टीट्यूट को फायदा हो रहा है। ठीक है भाई, परफेक्ट है, इजी क्वेश्चन वंस अगेन। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 फॉर द क्लास एंड सेकंड क्वेश्चन फॉर यू गाइस। जल्दी से बता दो क्या आंसर होना चाहिए। वंस अगेन अ वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। अब इजी है क्योंकि हमारे पास सारा डेटा है। देखो यही खूबसूरती है केसलेट काइंड ऑफ क्वेश्चन की, एक बार टेबल बन गई, एक बार डेटा सामने आ गया, अब कितना ही डिफिकल्ट पूछ लो भाई, कितना ही डिफिकल्ट, सारी कैलकुलेशन ऑलरेडी हुई है। नहीं तो आप क्या करोगे, हर क्वेश्चन में अलग अलग कैलकुलेशन करोगे, हर क्वेश्चन में अलग अलग कैलकुलेशन करोगे, और जब आप हर क्वेश्चन में अलग अलग बार बार सेम कैलकुलेशन करते रहोगे फिर आपका टाइम वेस्ट होगा। इसीलिए शुरू में ही करके रख लो। या फिर आप एक काम और कर सकते हो, आप सेट रीड करते हो, क्वेश्चन पेपर आपके सामने होगा तो उसमें एक बार देख लो कि यार क्वेश्चन में क्या पूरा सॉल्व करना पड़ेगा क्या, एक बार नजर मार लो क्वेश्चन में, 30-40 सेकंड लग जाएंगे, और अगर लग रहा है कि पूरा सॉल्व करना पड़ेगा तो पहले सॉल्व ही करके टेबल बना लो जैसे मैं कर रहा हूं यहां पे, तो आपकी लाइफ बड़ी आसान हो जाएगी। हाँ भाई, डी बता रहे हैं, मेजॉरिटी लोग डी कह रहे हैं। फाइंड द टोटल प्रॉफिट और लॉस इनकर्ड बाय द इंस्टीट्यूट ऑन कंडक्टिंग ऑल द एग्जाम्स, तो हमें सब निकालना ही पड़ेगा। तो टोटल एक्सपेंसेस इतने हो रहे हैं और टोटल फीस इतनी कलेक्ट हो रही है, यानी लॉस हो रहा है
क्योंकि एक्सपेंसेस ज्यादा है, फीस कम कलेक्ट हो रही है। और लॉस कितना हो रहा है इस 18 लाख रुपीस में से, ठीक है भाई, जितने भी जीरोज हैं 1 2 3 4 5 6, कितना माइनस करना पड़ेगा 1769, 1 2 3 4, तो ये 4 4 4 तो आ ही जाएंगे, ठीक है। 10 माइनस 9 इज 1, 9 माइनस 6 इज 3, ठीक है, एंड दिस इज 0 0। सो कैन आई से 31,000 रुपीज का लॉस हो रहा है, डी ऑप्शन। सो 31,000 रुपीज का लॉस। आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर टू एवरीवन। क्वेश्चन नंबर 9। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 10 और द लास्ट क्वेश्चन ऑफ सेट नंबर 2। जल्दी से सवाल का जवाब दे दीजिए फटाफट से, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। जल्दी जल्दी जल्दी। वंस अगेन नॉट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, इस बार एवरेज निकालनी है। आप देख रहे हो 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, एवरेज, रेशो, परसेंटेज, ठीक है। हमेशा क्वेश्चन घुमा फिरा करके एवरेज, रेशो, परसेंटेज ही पूछेगा। अगर टेबल बेस्ड क्वेश्चन आ जाए, चाहे केसलेट बेस्ड आ जाए, तो ये चीजें तो हमारे लिए बैकबोन है, ठीक है। और कैलकुलेशन स्टफ। आंसर बताइए भाई फटाफट से। वेरी गुड, मनु ने जवाब दिया है कुछ, आई डोंट नो सही है गलत है, बट जवाब तो दिया है मनु ने। और किस किस ने आंसर, सबने आंसर दे दिया। अब तो ग्रेस, मोग, वामी, गरिमा, सृजन, सौम्या, मन्नू, गोपाल, आलोक, क्या बात है, जबरदस्त। अब मतलब आप लोगों को मजा आ रहा है, नहीं तो आप लोग बिल्कुल रिप्लाई नहीं करते अगर मजा नहीं आता तो, है ना। तो यानी कि मजा आ रहा है और समझ में भी आ रहा है। वेरी गुड, आई एम सो हैप्पी। फाइंड द एवरेज ऑफ द टोटल रजिस्ट्रेशन फीस कलेक्टेड बाय द इंस्टीट्यूट फॉर द 5 एग्जाम। तो बेटा अगर एवरेज निकालना है तो टोटल फीस कितनी है, ऑलरेडी निकाल चुके हो, कोई समस्या ही नहीं है, ठीक है। 1769, 1 2 3 4 डिवाइडेड बाय कितने इंस्टीट्यूट है, 5 से डिवाइड कर दो, इजी है ना, हो जाएगा। तो जरा डिवाइड कर देते हैं, कितना होगा 5 3 ज़ा 15, ठीक है जी, 2 6, 5 5 ज़ा 25, 19, 5 3 ज़ा 15, 5 4 0, 5 8 ज़ा 1 2 3, सो 353800 इज योर करेक्ट आंसर। सर सिली मिस्टेक्स बहुत होते हैं, तो एक बार बेटा बैक ट्रैक कर लिया करो, 5-10 सेकंड और लगेंगे, एक बार कैलकुलेशन को बैक ट्रैक कर लिया करो कि भैया कैलकुलेशन ठीक करी है नहीं करी है, कोई परेशानी थोड़ी ना है। सिली मिस्टेक इनिशियली करो, 2-4 मॉक के अंदर में बैक ट्रैक करो कैलकुलेशन को कि भाई मैंने ऐसे ऐसे पहले ऐसे आए, कैलकुलेशन खत्म कर दी, क्वेश्चन खत्म, फिर एक बार बैक ट्रैक कर लो, चेक कर लो, 15-20 सेकंड लगेंगे। 2-3 मॉक में ऐसा करोगे, सिली मिस्टेक्स अपने आप पकड़ने लगोगे, फिर हैबिट बन जाएगी, फिर जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब एग्जाम तक नहीं करना है, ये 2-4 मॉक के लिए करना है, ठीक है। गौरी एंड सिज्जन के लिए मैं ये जवाब दे रहा हूं कि बेटा अगर सिली मिस्टेक्स हो रही हैं कैलकुलेशंस को लेकर के, किसी भी चीज को लेकर, कोई भी चीज करो, जैसे हमने ये वाली कैलकुलेशन करी, बैक ट्रैक कर लो एक बार, ठीक है। सो उससे आपको पता लग जाएगा। बैक ट्रैक का मतलब क्या होता है वो भी बता देता हूं कि इसको इससे डिवाइड करने पे ये आया है ना, तो 353800 को 5 से मल्टीप्लाई करने पे भी ये आना चाहिए, ठीक है। दैट इज कॉल्ड एज बैक ट्रैक। सर कौन से डर लगता था, थैंक यू सर, आपने इजी कर दिया, थैंक यू सो मच। ये कमेंट्स पढ़ के ही दिल गार्डन गार्डन हो गया। लाइक बढ़ा दो यार 10-12 इसी बात पे। चलो ठीक है जी, आई होप दिस इज क्लियर, समझ में आया होगा। फटाफट से इस सेट को भी समराइज कर लेते, जैसे पिछले सेट को समराइज किया था। आप लोगों से पूछूंगा, मैं नहीं बोलूंगा, जल्दी से बताओ इस सेट की टेबल बनाने में कितना टाइम लगना चाहिए आइडियली। मैं नहीं बोलूंगा, आप लोगों को बोलना है। इतनी टेबल ऑलरेडी बनी हुई है, आपको दोबारा नहीं लिखना है, आपको केवल और केवल ये काम करना था, ये वाला, ये कैलकुलेशन करनी थी, यानी ये मल्टीप्लाई करने थे, 5 मल्टीप्लीकेशन करने हैं ये इजी से, ठीक है, ये आ जाएगा। और ये फिर 1 एडिशन, 2 एडिशन और 3 एडिशन करने हैं इजी से। क्या मैं बोल सकता हूं कि इस सेट में, इस वाली कैलकुलेशन में 4 मिनट से ज्यादा तो नहीं लगने चाहिए फिर से, यस और नो। तो लास्ट में क्यों करते हो, क्वांट को एक आध बार थोड़ा जल्दी कर लो। कोई दुश्मनी है क्या मुझसे या मेरे सब्जेक्ट से, है भाई कि लास्ट में ही रखना है, थोड़ा जल्दी कर लो। एक आधी बार मॉक्स में एक्सपेरिमेंट करो, फिर अपनी स्ट्रैटेजी डिसाइड करो। 2-4 मॉक्स तक एक ही स्ट्रैटेजी रखो, फिर 2-4 मॉक बाद चेंज करो, फिर 2-4 मॉक, कम से कम 10-15 मॉक दे दोगे, तब तक तुम्हारी स्ट्रैटेजी फाइनलाइज हो जाएगी। तो बेचारे क्वांट को कभी बीच में रख लो, शुरू में रख लो, है लास्ट में ही करना जरूरी है, ठीक है। चलिए जी, 4 मिनट इज सफिशिएंट, दैट इज व्हाट मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट इज सेइंग, ठीक है। चलिए जी, अच्छा अब अगर 4 मिनट में वो क्वेश्चन हो गया, अब आप मुझे बताओ ये वाला क्वेश्चन करने में 5 सेकंड बस देख के आंसर बताना है। चलो 10 सेकंड मान लेते हैं मैक्स टू मैक्स, है ना भाई, ठीक है। अब इस वाले क्वेश्चन में बताओ परसेंटेज कैलकुलेशन 13 का टेबल आना चाहिए,
ये 13 लाख है और ये 65 लाख है, फिर भी मैं 30 सेकंड दे देता हूं, उससे ऊपर की तो रिक्वायरमेंट नहीं है। 2 सेकंड तो चलो कम हो गया थोड़ा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें बताओ, बस देखना है कि कौन कौन से एग्जाम में लॉस हो रहा है, देख के बताना है कौन सा ज्यादा है कौन सा बड़ा है। वंस अगेन 20 सेकंड इज मोर देन सफिशिएंट, राइट। इस वाले एग्जाम में बताओ, इस वाले एग्जाम में करो, इस वाले क्वेश्चन में बताओ। टोटल प्रॉफिट और लॉस निकालना है, इन दोनों का डिफरेंस, एक डिफरेंस करना है। वंस अगेन 20 सेकंड, 30 सेकंड मैक्स टू मैक्स, ठीक है। ऐसे ही लास्ट, इसमें क्या करना है, इसमें एडिशन ऑलरेडी हुआ है, ये डिवीजन करना है बस एक, फिर से 20 सेकंड। कहना है से ओवरऑल मैक्सिमम 6 मिनट्स, मैक्सिमम 6 मिनट्स, ठीक है। और कोई बच्चा बहुत होशियार है कैलकुलेशन में तो 4 to 6 मिनट, दिमाग तो कहीं कुछ लगाना ही नहीं था, है ना। ये आप लोग बता रहे हो, मैं नहीं बता रहा हूं। मैं ये मत बोलना सर आपने बोल दिया आप तो कर लेते हो, ये आप लोग अपना टाइम बता रहे हो, ठीक है। मेरा टाइम तो इससे बहुत कम होगा, मैं तो शायद 3 मिनट में कर लूंगा। मैं आप लोगों का टाइम बता रहा हूं कि आप लोगों को 6 से ज्यादा नहीं लगने चाहिए। जो लोग कहते हैं ना टाइम नहीं मिलता सर, टाइम खत्म हो जाता है सर, क्वांट में इतना टाइम लग जाता है, ये हो जाता है वो हो जाता है, उनसे बात कर रहा हूं मैं, ठीक है भाई। चलिए अब आप लोगों के लिए कुछ सरप्राइज भी है। क्या सरप्राइज है सर? होमवर्क सरप्राइज है, ठीक है जी। दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू ऑल। अगर आप लोग बिल्कुल समझे हो चीजों को, जैसे मैंने बताया है बिल्कुल वैसे ही ये वाले क्वेश्चन को समझने लगे हो, तो बेटा इस वाले क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे वंस द क्लास इज ओवर, ठीक है। इसके लिए पहले फिर से टेबल बनाएंगे, जो भी करना हो पूरा डेटा एक बार लिखेंगे, और फिर उसके बाद में इससे कनेक्टेड सारे क्वेश्चन के आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए, ठीक है। इन एग्जाम सर यू सिट विद मी, हाँ बिल्कुल बेटा, बिल्कुल आपके साथ ही बैठूंगा मैं, हाँ भाई, ठीक है। ओके, गेटिंग इट। चलिए परफेक्ट। सर ग्राफ और चार्ट वाले क्वेश्चंस के लिए वीडियो डालोगे अलग से? बिल्कुल डाली हुई है ऑलरेडी, और भी डालेंगे, चल रही है क्लासेस गरिमा बेटा, इसीलिए मैं कहता हूं सब्सक्राइब करके रखो, सो दैट जो भी क्लास हो आपको पता लगता रहे, ठीक है। दिस इज ऑल्सो अ होमवर्क क्वेश्चन, याद रखिएगा, मतलब उस सेट से कनेक्टेड फर्स्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। मैं वेट करूंगा आप लोगों के आंसर्स का, और रिप्लाई भी करूंगा। जब ये मैराथन खत्म हो जाएगी फिर आराम से, चाहे कल कर देना, आज थक गए हो तो कल बता देना, ठीक है। सारे के सारे क्वेश्चन का आप लोगों को मुझे जवाब देना पड़ेगा, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। वीडियो को पॉज कर करके आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो बाद में, और फिर इन सारे क्वेश्चन का, यानी पूरे सेट के कनेक्टेड जो 5 क्वेश्चंस है, इसका आंसर आई विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर्स। वंस अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ऑल इंडिया ओपन मॉक क्लैट कंडक्ट करवा रहे हैं भाई 25 अगस्त टू 3 सितंबर तक। ये इसकी विंडो ओपन है, वेयर वी आर प्रोवाइडिंग यू वीडियो अटेम्प्ट्स बाय एनएलयू एक्सपर्ट्स, दैट इज समथिंग यू विल बी गेटिंग, आइडेंटिफाइंग योर डी-डे स्ट्रैटेजी, ठीक है। और जो है ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं आपके एग्जाम के लिए। वीडियो सॉल्यूशन मिलेंगे आपके, सारे के सारे क्वेश्चंस के वीडियो सॉल्यूशन सॉल्व बाय द फैकल्टी, जैसे क्वांट का मैं सॉल्व करूंगा, इंग्लिश का अल्पा मैम, जीके का अभिमन्यु से, मतलब आपके जितने भी फैकल्टी आपको पढ़ाते हैं वो सारे फैकल्टी आपके लिए सॉल्व करके देंगे, ठीक है। बेंचमार्क योरसेल्फ अदर स्टूडेंट्स के साथ में कि भाई बाकी क्या चल रहा है, ठीक है। ऑल इंडिया लेवल पे, नॉट एट बायजूस लेवल, जहां पर भी जो बच्चे हैं सब लोग इस मॉक को दे रहे हैं, फ्री मॉक है, तो प्लीज डू गिव इट। एंड नाउ अल्पा मैम इज गोइंग टू टेक ओवर फ्रॉम हियर 4 to 5 PM अल्पा मैम का सेशन है। टॉपर्स बैच भी उससे कनेक्टेड रहेगा, है ना। टॉपर्स बैच के लिए जरूरी है कि आप लोग मॉक में अच्छा करें, एनरोल करें, जितना टेस्ट सीरीज में, मिनिमम टेस्ट सीरीज में एनरोल करना पड़ेगा, देन ओनली यू कैन गो फॉर द टॉपर्स बैच, राइट। इज दिस क्लियर टू ऑल? एंड प्लीज मेक श्योर कि आप लोगों को जो है रेडी रहना है एग्जाम के लिए, रेडी रहना है सब लोगों को, और क्वेश्चन का आंसर देना है। जितने भी 5 क्वेश्चन है 11 to 15 सबके आंसर मुझे चाहिए इस क्लास के खत्म होने के बाद कमेंट सेक्शन के अंदर, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर अगली क्लास में। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट एवरीवन। एंड जाएगा कोई नहीं, अल्पा मैम इज हियर, बोल भी रही हैं, वो डांट रही हैं कि किसी को निकलना नहीं है, सबको यही रहना है। अल्पा मैम बिल्कुल वेट कर रही है। अल्पा मैम हैंडिंग ओवर टू यू एंड थैंक यू सो। Hi guys, I hope you can hear and see me clearly everyone. Thank you so much for sticking with me till the end. Okay, कॉमन को बिल्कुल एग्जॉस्ट हो गया है, मुझे ये बताओ जल्दी से।
It's been a long day. I'm sure you've worked really hard. I'm sure बहुत exhausted हो. खाना खा लिया होगा. I'm assuming, but thank you for waiting for me. And I will make sure that this wait is worth it. Okay? We are going to be learning a lot of things. ठीक है? Pumped up? Yes. That's how my students are. So I assure you that the next 1 hour is going to be really, really fruitful. Ask somebody to get you a cup of tea or coffee to rejuvenate you. Can't. You know, I'm actually really happy कि अंकुर सर ने मेरे साथ swap कर लिया session. बीच में थोड़ा न्यूमेरिक आ गया ना, तो इट्स लाइक अ रिफ्रेशमेंट. नहीं तो सीआर के बाद बैक टू बैक इंग्लिश होता तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता. तो अभी देखो मैं आपको बताती हूँ क्या करेंगे. मेरा सेशन लास्ट है. स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊंगी व्हाट इज दैट आई हैव इन माय एजेंडा टुडे, बट आई एम श्योर एवरीवन हैज told you that you need to take this open mock. I'm going to reiterate that if you haven't given this mock yet, you have one more day to go. Tomorrow the window closes. It's for free. और ये आपको बहुत सारे बच्चों के साथ compete करने का मौका देगा. ले लेना, especially if you come to our batches and if I find you that you haven't taken the mock, you know what I'm going to do. So you better take this mock sincerely. ठीक है? और उसके बाद नेक्स्ट सैटरडे को इसकी डिटेल एनालिसिस करेंगे. क्वेश्चन सॉल्विंग नहीं करेंगे, एनालिसिस पर से इसमें अपना स्कोर कैसे बढ़ाना चाहिए था. तो नेक्स्ट सैटरडे को अगेन अ डेट विद BYJU'S एग्जाम प्रेप. एवरी सैटरडे अ डेट विद BYJU'S एग्जाम प्रेप. मेक श्योर यू वॉच अस लाइव देयर. ठीक है. अब 4 to 5 सेशन में आज क्या करेंगे? आई हैव टिपिकली टू ओके आई हैव अ फ्यू क्वेश्चंस. Yeah, of course, go use the restroom, go come back quickly. All right. So what I have in my slides today, I have two full-fledged RC, like 5 questions each, 400, 450 words each, जैसा standardized CLAT में आता है. Apart from that, I have छोटे-छोटे paragraph based कुछ questions हैं, main theme, inference, figure of speech based questions हैं. मैंने specifically आज की क्लास में I've put 2 figures of speech question because a lot of you have been taking these questions very lightly. और ऐसे क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत ज्यादा है. तो आज मैं स्पेसिफिकली आज मैंने सुबह बैठ के एडिशनली 2 क्वेश्चंस और डाले बिकॉज आई वांट यू टू बी वर्किंग हार्ड ऑन फिगर्स ऑफ स्पीच. वो है एंड आई एम गोइंग टू स्टार्ट ऑफ विद अ वेरी कैजुअल रीडिंग एंड देन वी गोइंग टू ग्रेजुअली प्रोसीड. तो ग्राफ को ऐसे मूव करेंगे. ठीक है. एक कैजुअल रीडिंग इजी आरसी से स्टार्ट करेंगे, फिर थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ाएंगे, इंटरेस्टिंग और करेंगे. जैसे कि आरसी है बहुत इंटरेस्टिंग है, यू गोइंग टू लव मी फॉर ब्रिंगिंग दैट आरसी फॉर यू. और फिर वन लाइनर क्वेश्चंस करेंगे एंड भी बिल्कुल एक पोलाइट नोट पे करेंगे. सो दैट्स द एजेंडा. दैट्स व्हाट आई हैव फॉर यू टुडे इन द क्लास. आई हैव नो आइडिया. आई थिंक 12 a.m. ओके. ऑल राइट. यस man, even I am. So you have only 92 days left for CLAT. Countdown has begun. तो जल्दी से प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं. You know exactly क्या आया था 2023 के पेपर में. You had 30 questions, लेकिन 2024 में roughly 24 से 25 questions आने चाहिए. RC में mostly RC होने चाहिए. So and because last year 30 questions थे, तो you had 6 RCs. इस साल क्योंकि 24 से 25 questions होंगे, probably we have 5 RCs coming our way. All right. And sample paper 2 hopefully कल release हो जाना चाहिए. The moment sample paper is out, we'll be having a sample paper analysis as well. तब तक एक बार sample paper 1 का analysis देख लो. The detail, the link is there under my video in the description box. Ready everyone with the first passage? Let's talk about rascals. Excited much? Here's your very first slide. Read this. बहुत interesting है दोनों passages. Send me hearts if you like those passages. Here's your first page. Read the page and send me a done.
you can actually imagine this entire story like a movie scene. Done, everyone? I hope you've marked the keywords. I hope you've thought of the main idea. What's your answer? Pay attention. I have 5 options. Deliberately, to make your life more difficult. Sahajleen, can I answer this question by the end? I have an answer for you, but by the end of the session, okay? Just remind me. Sijan, you too. A, B, okay. B, ठीक है. A, B, okay. So what I'm going to do is I'll give you 5 questions. You'll send me answers.
Okay, and after that I'll discuss, because if I discuss right now, you know the main idea, and then eventually you get the remaining questions correct as well. That's not the idea. Okay, so most of you marking a B and then sometimes A as well, and D as well. Importance of dietary addicts. Okay, the correct answer here is an A. No, B. It's not an A, it's a B. Okay, next question. 2. To B, unanimous one. Yeah, this is an easy passage. It is very, very clear. The correct answer is a B here. Most of you sent me B. In fact, all of you unanimously. Question number 3. I wouldn't take you back. Okay. If you're confused, try linking the options to the main theme. Some of you marking a B, some of you marking a D. It's a D. Question number 4. I'll move a little so that I am visible. I think now the options are. I'll explain everything. एक बार जल्दी से आंसर बता दो बस. बहुत easy है. Unanimously, it's going to be a C. 5th and the last question for this passage. Destitute. अब देखो क्योंकि ये contextual vocabulary, I'll take you back to where destitute is written, okay? Here it is. Take you back to the question. Answer नहीं दिखाना है. Here. Answer. A. Yes, the correct answer is an A. A lot of you got all 5 correct. Now let me talk about the passage. Some of you had trouble understanding the passage. Some of you got some of the questions correct, but you were confused in some of the options as well. Now, let us understand while we read any passage. This was, of course, an easy one. We'll gradually climb the graph, as I had told you, right? This was, of course, an easy one. But किसी भी passage को जब आप पढ़ते हो ना, मैंने आपको बहुत बार सिखाया है कि अगर आपका कंसंट्रेशन इधर उधर हो जाता है, आपको याद नहीं रहता कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ, पढ़ते पढ़ते भूल जाते हो, वापस पढ़ने का मन करता है, ये सब चीजें या मेन आइडिया ढूंढने में प्रॉब्लम होती है. कीवर्ड्स हाईलाइट करने का एक टेक्निक बहुत कम आता है. आई एम श्योर आपने वो स्कूल में भी किया था, राइट? आप जब भी किसी बुक का नोट्स बनाते हैं तो आप कीवर्ड्स को हाईलाइट करते हैं. वही चीज यहाँ क्यों नहीं करते हो? हाईलाइट करोगे जब कीवर्ड्स तो आपके लिए सारे क्वेश्चंस को आंसर करना, स्पेसिफिकली मेन थीम टाइटल बेस्ड क्वेश्चंस को आंसर करना बहुत इजी हो जाता है. ओके, yes, the questions were very easy. So the passage is about Lascars, okay, and it's an irony कि उनका नाम sounds similar to rascals क्योंकि उनकी सिचुएशन कुछ कुछ वैसी ही है. Who are the Lascars? They are seafarers
फ्रॉम इंडियन सबकॉन्टिनेंट, बेसिकली साउथ ईस्ट एशिया से जितने भी सीफरस होते थे उन्हें लास्कर्स बोला जाता था। अब यहाँ स्पेसिफिकली इंडियन सबकॉन्टिनेंट वाले लास्कर्स की बात हो रही है, और यहां से स्टार्ट करके टिल द एंड ऑफ द पैसेज उनकी सफरिंग को बताया है। Okay, he says they were suffering, misery, they were considered inexpensive, they were mistreated, dehumanized, they were left to the ravages of diseases. It shows the height of maltreatment, mistreatment they were subjected to. Page number 2 says, again, they were not given enough space to live in. Medical assistance was based on race. If you're brown or if you're white, if you're brown, if you belong to the Southeast Asian countries, Indian subcontinent, you wouldn't be given any kind of, or the treatment would be altogether unsympathetic. ये दवाई खा लो ठीक हो जाओगे, right? और दवाई भी तब दी जाती थी जब आप completely destitute हो जाते थे, completely penniless, bankrupt. उसके पहले जब तक पैसा है तुम्हारे पास, तुम खुद पे करोगे अपने इलाज का. That's what the passage suggested. Food now. The author said कि अभी तक differentiation start हुआ. Then he talks about differentiation on the terms of food. Before this, he talked about how there was a difference in terms of their place of living, in terms of their treatment, in terms of how they were treated while they were sick. And in this page, he talks about food. Although, पता है यहाँ ना मैंने ये लाइन इसलिए हाईलाइट करी है, तो पैसेज says लास्कस को ये पसंद था और उनको ये दिया जाता था, लेकिन अमेरिकन और यूरोपियन सेलर्स को क्या पसंद है? ड्राइड पीस और सोल्टेड पोर्क और सॉफ्ट ब्रेड और हार्ड ट्रैक. एंड देन द ऑथर सेज यूरोपियंस खुश थे उनको ये खाना देके. भाई ये खाना मुझे रोज दे दो, आई विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड. आई एम श्योर जितने भी वेजिटेरियंस है बस इस चीज को ना एक वेज करी से रिप्लेस करना है. लाइक दाल, राइस, घी एंड करी इज आवर quintessential lunch and dinner in India. Who would be unhappy eating this, right? Would you agree to me? Nonetheless, Europeans were very happy. तुमको दाल राइस खाना है, तुम दाल राइस खाओ, तुमको दाल राइस दे देंगे. हमको ड्राइड पीस चाहिए, ब्रेड चाहिए, सॉल्टेड पोर्क चाहिए, हमको नहीं चाहिए, इंडियंस को नहीं चाहिए ये. Then the author talks about how diet was used as a medium of punishment, right? So how diet was used as a, they were given only rice and water for days. But icing on the cake is whether this held much terror for Lascars is open to debate. यार चावल और पानी में मिलेगा ना, हम चावल खा के Indians are going to be happy. So Europeans को लगता था कि सिर्फ चावल और राइस देके I'm going to punish the seafarers. It's open to debate if seafarers were actually bothered by eating rice and water. You give them rice, you give us Indians rice, we're going to be really happy with it. That's what it says. And in the end, it talks about cheap curry houses. जिस पे question है, इसको समझते हैं. Inhuman treatment इतना ज़्यादा था that they were forced to jump from the sea, from the ship. They would swim and reach one of the ports, maybe Southampton and New York and Rangoon and Singapore. I mean, the Rangoon that used to be. वो वहां स्विम करके जाते और वहां से उनकी स्टोरी, उनकी कहानी स्टार्ट हुई. कुछ तो अपने इंटरेस्ट का करेंगे ना. इंडियंस एंड करी, ये क्विंटेसेंशियल कनेक्शन है. तो इंडियन सबकॉन्टिनेंट से कोई पहुंचेगा कहीं तो करी तो बनाएगा. अब सीफरर है, भाग गया है शिप से, व्हाट वुड दे डू? दे फाउंड देयर कॉलिंग. देयर कॉलिंग वाज मेकिंग करी. But they did not have a lot of money, so they would make cheap curry. And eventually, these cheap curry stores where curry was sold for lesser amount of money, it became a quintessential Britain emblem of cosmopolitan Britishness. आज वो Britishness है, cheap curry houses. आया कहाँ से? Indian subcontinent, right? So, people say, is it narrative? No, it's mostly descriptive. Not argumentative. Author का personal opinion कुछ भी नहीं है. उसने आपको बात बताई है, describe किया है, but कहानी नहीं सुनाई. All right? So it's going to be descriptive. Now let's come to the first question. Is it only about European sailors who were Lascars? They were from Indian subcontinent, Indian seafarers.
as per the passage, right? So it's the misery, but not of the European sailors. So dried piece of bread kha rahe the, bhai. They were given 9 feet, I think, for sleeping. Half of it was given to Indian seafarers. It's the plight of Indian seafarers. Remember, when I have a title of the passage type question, it's nothing but the main idea only. Main idea is not the misery of European sailors. European sailors were very happy. Origin of cheap curry houses. cheap curry houses बताने के लिए पूरी कहानी लिखी है या Indian seafarers की situation बताने के लिए पूरी कहानी लिखी है? It's this. Does B. Colonial food practices and European sailors. It's not predominantly about European sailors. It's about Indian seafarers. The importance of dietary edicts. Too generic. अगर मेरे पैसेज में इंडियन सीफरर्स एक कीवर्ड है, वो मेरे मेन थीम में, मेरे टाइटल ऑफ द पैसेज में जरूर रिफ्लेक्ट होना चाहिए. एंड दस द करेक्ट आंसर इज बी. अंडरस्टूड? नेक्स्ट क्वेश्चन. What can be inferred from the passage regarding the dietary condition of European sailors? उनको क्या मिल रहा था? Dried peas, salted pork, and soft bread. And Indians को क्या मिल रहा था? दाल, rice, ghee. I mean, we are happy eating that, but ठीक है, वो Europeans के लिए तो काफी inferior था. So European sailors often enjoyed a more variety and expensive diet, of course, because dried peas and bread on a ship was expensive. Lascars को क्या मिलता था? कुछ नहीं तो water and rice. Correct answer is a B. European sailors were more likely to suffer from malnutrition. It's the other way around. Indian seafarers are likely to suffer from malnutrition because of eating only rice predominantly. European sailors consumed a similar diet that of Lascars? Absolutely not. European sailors and Lascars both had equal access to medical assistance? Certainly not. Lascars were treated by taking money and pretty not sympathetically. All right, so B. Third says, what does the author mean by cheap curry houses? Read your answer again and tell me if you're convinced now, everyone. A lot of you marked B. B says, low quality eateries with unhealthy. These are probably cheap, means cheap cost. Does not mean cheap as it ganda hai to. No, not that cheap. We don't know if they're unhealthy. Because wo gradually एक cosmopolitan Britishness के साथ लिंक किया जाने लगा. अगर वो इतने लंबे टाइम तक चला था, it can't be unhealthy and low quality. These are casual, affordable restaurants that serve traditional curry dishes prepared by Lascars who ran away from their ship. All right. Yes. So, question number 4. Based on the information in the passage, which of the following conclusions can be drawn about the treatment of Lascars on the European ship? Across the passage, from the first page to the last, it talks about how they were treated in a bad way. Maltreatment was there. Not honored. Honored to bahut dur ki baat hai. Treatment hi bahut kharab tha. So, Lascars were subjected to harsh living conditions and mistreatment on European ships is the correct answer. Lascars were often given better living conditions than European sailors. It's contrary to what the passage says. Lascars were highly regarded by European ship owners. अच्छा, highly regarded था तो फिर water and rice serve नहीं होता. Incorrect. Lascars were provided with medical assistance. They were not. They were indifferent. Okay. So destitute is almost bankrupt. Poverty, penury, where you're in a state of almost losing all your money. They were abused, yes. So, a traditional ही होगा because curry is supposed to be something traditional. Okay, Diya? So, we're left with only one answer and that's A. Now, we're going to move to passage number 2. I'm going to increase the difficulty level a little bit more. I have a CR-based question here as well. So, you better be very attentive with what the argument is across the passage. Okay, you can highlight the keywords. Highlight करते रहो. Argument देखो author क्या बोलना चाह रहा है. वो ढूंढोगे तो passage answer करना बहुत easy हो जाएगा आप लोगों के लिए. ठीक है. अच्छा इसके पहले did you hit the like button? जल्दी से करो पहले एक बार. 122 है, एक बार 128 पहुंचा दो. Yes, your first page. अच्छा. I'm sure you know about Topper's batch. If you are a student of our batches or a student of our test series, and if you still haven't taken ample number of mocks,
you can still perform really good in our open mock CLAT and then get a chance to be in our toppers batch. अभी भी अगर आपको लग रहा है आपको toppers batch में आना है and you're doing fairly well anywhere else, you can take the test series and which comes for a very nominal cost. Sit for this open mock, perform well, and we shall call you in our toppers batch. So don't miss out on this opportunity. बहुत कम लोग select होंगे, लेकिन once you're selected, we'll ensure that you get into the best of the colleges. So rush up. Page number 1 for passage 2. Here you go. Intriguing, isn't it?
Question number 1. Yes, Pranjali. Okay. Acha, what language do you think in? I'm also thinking, what language do I think in? I certainly don't think in English. But while I'm teaching, I think in English. Yeah, it's mixed for me as well. I think in Hindi and English both. All right. The correct answer is a D here. Question number 2. That's the CR based question. And there are 5 options, by the way. Yes. Everyone says E, D, E. The correct answer is an E. Question number 3. A, E, D, B. शाबाश. एक tricky question आया, सब इधर उधर हो गया. All the options are there in the chat right now. थोड़ा सा insight. Let me put some thought in your mind. इस word पे highlight करो. Redo the question. अब आंसर क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री प्रिंसिपल, गरिमा, ऑथर का पॉइंट ऑफ व्यू है क्या? Is complementary principle the author's point of view? What is the author's take? What does the author believe in? It's D. Now you've come to the point. Now you've understood. It's D. You know, technically, as per the passage, factually, this is right. This is also right. But then that's not the author's perspective. We need to find out his perspective, his opinion, his argument, his belief. That's there in D. The entire example of the centipede was given to show the author's plight, the author's own condition, because he was struggling to identify, लोग किस language में सोचते हैं, नहीं आ रहा समझ में, right? इसलिए आंसर D है. Question number 4.
Okay. यार इतने सही कैसे कर सकता है कोई? थोड़े गलत करो ना. What will I explain? See, here you go. Question number 5. And this passage has 6 questions. That's a tricky one. You better do not Google. No answers. Does that mean you're Googling? That doesn't help. That's a tricky one. Okay. So basically, I'll explain the question to you. The question says, all these words have been used in the passage. Which one of them means the same as this idiom, see eye to eye? No, Garima, how many words will you find out in the passage? This phrase is not there in the passage. These words are there in the passage. Which one of these words from the passage means the same as an idiom taken from outside, see eye to eye? That's the question, okay? The correct answer is A. That's a tricky one. Tricky question. It's actually twisted. Question number 6. Metaphor, simile, personification, hyperbole. सब कुछ इधर उधर हो गया. Chalo, you've given me a chance to teach you something. The correct answer is A, simile. Not personification, not metaphor. I'll explain it to you. Since we're done with 6 questions, let's go back to the passage. See what the passage is about. Starts with a confusion in the author's mind about which language do people think in. You know, the moment I read this extract, while I was trying to find an extract for making 𝗟𝗃 for your marathon, the moment I read this, मुझे लगा अच्छा, which language do I think in? And I'm sure almost everyone who was reading this passage with me thought of the same. हाँ यार, हम कौन सी language में सोचते हैं? And probably most of you could not find an answer at one go. It's a mixture. So the confusion grows. Some people give him this Tenali Rama story, which proves that you think in your own mother tongue. But then when he thinks in English. That's not his mother tongue. His children as well, they speak in English. That's not their mother tongue. Then the confusion grows even worse. He researches about the complementary principle. It talks about learned behavior, that while with special tasks, you use a specific language. For different purpose, you use different language. It gets even worse. And he realizes the more research he does, the more confused it becomes. और फिर author ने एक centipede का example दिया. That is, जब आप किसी चीज पे ध्यान देने लगते हो ना, when you start paying attention to something, that's when you realize, oh, I'm in a soup. अभी तक मुझे realize नहीं वाला कि मैं बहुत खराब condition में हूँ. यार मेरे पास 100 legs है यार, मैंने कभी सोचा नहीं अब मेरे को walk करने में problem होगी. मैंने सोचा ही नहीं कि 100 legs में problem हो सकती है. मैंने सोचा ही नहीं कि thinking language के बारे में इतना सोच के problem हो सकती है. Now when you start realizing it, then आपको लगता है कि अरे यार ये तो बड़ी प्रॉब्लम है, हम इसका तो सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा. That's when things go haywire. Okay, so basically it's about the author's confusion. So the author's confusion about thinking in different languages is similar to the centipede struggle. Overthinking करते दोनों एक, they are in a soup, they are in a rut, they are in a difficult situation. Both of them unable to find an answer to why and how. The author's family and friends unanimously agreed no. Not everyone. Some said you think in your mother tongue. Some said no, you think in English. Some said you think in different languages. They did not unanimously agree. I'm sure KD sir ने आपको पढ़ा के रटा दिया होगा. ये extreme words eliminate हो जाते हैं. The author's research and thought processes had provided a clear answer. Clear answer होता तो centipede का example ही नहीं आता.
Eliminated. The author believes that thinking in English is the most common way. Again, an extreme option. Incorrect. Okay. All right. Question number 2 says analogy क्या है? Centipede का example ये बताने के लिए दिया है that the author thinks that different languages can be used for different purposes, but the moment he thinks deeper, he gets more confused. So the common link between the legs and the different languages being used is that they have different purposes. So that's E. Then we have third, which of the following the author most likely to agree with? The complementary principle suggests that अच्छा ये मैंने explain किया था, that's factually correct from the passage. So is this, but ये author का belief नहीं है. Author का belief है कि centipede की situation मेरे से बिल्कुल align करती है, बिल्कुल similar है, analogy बना सकते हैं हम दोनों की situations में. And that's why D is the correct answer. Question number 4. What can be inferred from the passage about the author's experience? The confusion is just getting increased step by step. By the end, also, he's extremely confused, and with overthinking, he hasn't been able to find any correct answer. So confusion has increased. Now, question number 5. Concord means to agree. This question says, ये सारे words आपके passage में used हैं. Which word from the passage means the same as see eye to eye? When I see eye to eye, I agree with you. We're on the same level, same mindset, same thought process. You have my agreement. That's what concord is, to agree. Give your agreement to something. All right. The correct answer thus is concord. And then we have question number 6, figure of speech. What does this word mean? Who's going to answer that in the chat box? What does this word mean? Akin. What does this mean? Like. और simile में हम क्या use करते हैं? Like या as. तो like का synonym use करेंगे तो भी simile ही तो होगा. आपकी situation को centipede से compare किया गया है. Comparison में या तो simile होता है या metaphor होता है. And when you compare, if you use like or so or as or any synonym to it, it becomes a simile. If the sentence would have been, my situation is like the centipede, means the same thing, simile, right? Personification is a figure of speech that's used when a non-human thing is given a human characteristic, which is not happening here. Neither is it exaggeration, बढ़ा चढ़ा के नहीं बोल रहा. It's not hyperbole. On that note, कितना टाइम हो गया figure of speech पढ़े? Next week, figure of speech part 1 on our YouTube channel. उसके next week, figure of speech part 2 on our YouTube channel. नहीं किया अभी भी तो कर लेना मेरे साथ. Next 2 weeks simultaneously, we'll be doing figures of speech with many examples. Don't miss out on that class. Happy? ठीक है? All right. See, simile and metaphor, the difference is very, very easy. He is like God and he is God. He is like God, simile. He is God, metaphor. The only difference between these two is there's a comparison, but this doesn't have like, so, or as used. But this has like, so, or as used. So he is like God, simile, he is God, metaphor. He is being compared to God. All right, I have another question for you. Now I have small paragraph based questions, okay? Because I'm sure by this time you'll be exhausted. But यार reward wait कर रहा, तुम्हारा मैच चालू हो गया क्या? बारिश रुक गई? बताना जल्दी से एक बार. आज सुबह से पढ़ाई कर रहे हो, ये मैराथन खत्म करके मैच देखना आराम से. पॉपकॉर्न बनाना, मैच देखना. Yeah, exactly, Pranjali. On that note, we have a 3-day free trial going on our app. If you still haven't taken the benefit of these free trials, go ahead and do it. You can access anything and everything from our app that is available to anyone who is registered for our batches. You can take mocks, you can view classes, download PDFs, notes, tests, everything.
कुछ नहीं है, फ्री है, रजिस्टर कर लो नीचे लिंक में जाके एंड यू कैन एक्सेस दैट फॉर फ्री। ठीक है, हाँ आज इंडिया पाकिस्तान का मैच है भाई, डिलेट दिखा रहा है मैच। चलो ठीक है, तब तक हम कंप्लीट कर लेंगे अपना मैराथन, इसी का वेट हो रहा है शायद, फिर बैठ के सब अपने अपने घर में चिल एंड वॉच द मैच। Also, we've launched a new batch for CLAT 2024 aspirants. You still have time. You have 92 days to go. Rush up. Don't be late. I'm sure if you rush, you still have very high chances of getting into your dream NLU. Register yourself. Link is there under my video in the description box. Acha, I have this small paragraph and there's a figure of speech based question on this. जल्दी से पढ़ो. Send me a done. Options figure of speech के हैं. सिर्फ इतना सा paragraph है. पढ़ के send me a done. So easy. But इसके बाद वाला figure of speech is tricky because things are going to get tougher. This is supremely easy. It's personification. ये देखो, मैंने deliberately last question के बाद ये लिख रखा because I knew some of you would mark personification in the previous one. जहां एक human और एक non human लिख देते हैं ना, लोग automatically personification mark करते हैं, जैसे centipede और my situation. तो me लिख दिया और centipede लिखते तो personification होगा. Not necessarily. You need to give a non-human thing a human characteristic. तो यहाँ oak tree को पूरे paragraph में एक human की तरह देखा है. He has thousands of human characteristics given to him here, right? Standing tall, resolute, sentinel guarding the house. It's dancing. So many things. ये सब human characteristics है. It's personification. ठीक है, गलत आंसर ए नहीं है, पर्सोनिफिकेशन है। ठीक है, नेक्स्ट पैसेज में चलते हैं। सेम छोटा सा पैराग्राफ है बट ट्रिकी है, फिगर ऑफ स्पीच बेस्ड क्वेश्चन है। करो इतना सा पैराग्राफ, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच। Done. Options. The correct answer is A, metonymy. How? Which word represents metonymy here? Metonymy is when one word is used to represent something closely associated with it. White House here represents the government. The crown here represents monarchy, the rule.
Wall Street here represents the financial rule, financial controlling of that country. So these are certain words that represent something closely associated with them. That's metonymy. On that note, a quick reminder, we're going to be doing 2 classes on figures of speech the next 2 weeks, this coming week and the next week as well. Make sure you attend that class. We'll be doing many figures of speech and examples through that as well. So again, we've launched a new batch for CLAT 2024 aspirants. If you still wish to register with us, you can 1, take a free trial for 3 days. 2, you can directly register with us by calling the counselors on this specific number. The link is there under my video in the description box as well. Yeah, Hollywood as well. Yes, for actors. और अभी भी नहीं लिया तो ये ले लो यार, किसका वेट कर रहे हो, कल लास्ट डे है. Specifically, if I find out that you are in one of our batches and you haven't taken the mock, ये बहुत गड़बड़ हो जाएगा बेटा. I'm sure you don't want to check my patience here. Please, ये mock लेना है तुम लोगों को. It will give you an insight of a lot of things जो हम batches में discuss करेंगे. ले लो इस mock को, अभी delay मत करो, कल Sunday है, आराम से mock ले लो, कल midnight तक close हो जाएगा इसका window. Okay? So our session comes to a closure here today. I hope you learned a lot of things from today's marathon. Did you? I'm sure you're coming out of this marathon wiser, smarter, knowing a lot of more things. And till the time we sit for CLAT, we'll be having many marathons. Every Saturday, fix your date with us. Marathon, mock analysis. We'll have rapid fires, quizzes, many things coming your way. We have a lot of things planned. So, yes. And make sure you subscribe to our channel if you still haven't done that. All our social media handles, Instagram, Facebook, Telegram, our app on Google Play. Sabka link video ke description box mein hai. You can access that. That's going to be all for today's marathon, everyone. I'm sure you're tired. Go have a cup of coffee, tea, whatever you're comfortable with, and then enjoy India-Pakistan match. I'm going to be doing that too. This mock, yes, Soumya, this mock will decide if you're going to be there in the toppers batch or not. Am I hardly got tone question wrong last year, but this year, दो अभी tone की class ली मैंने last 2 weeks दिया. एक बार जल्दी से revise कर लो. I don't think आपका कोई issue है. It's only revision that you need. एक बार revise कर लेना दोनों, ठीक है? So bye everyone. Have a very good day. God bless all of you. Work very hard. I shall see you in the next class very, very soon. Make sure to comment under the video after the class ends and tell us that you loved our session. Have a very good day, everyone. God bless you.